Assalamu alaikum ji. I welcome you all to 22nd Shaukat Khanum Cancer Symposium, this pre-workshop. Today's workshop is on live surgery. My name is Dr. Mohammad Fahad Shah. I'm here as a surgical oncologist in SKM Peshawar. So today we have got two cases, both are rectum. So before starting the surgery, we'll like to give you a brief introduction into neoadjuvant, the surgical steps, and then a brief introduction about the two cases that we are going to have today. So I would like to invite Dr. Fawadul Qamar, who is consultant radiation oncologist here in Shaukat Khanum, Peshawar. Over to Dr. Fawad. Presentation. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and thanks very much for inviting me to speak on this symposium as the first presenter. So I'm going to give you a flavor of how things panned out over the last few decades, really, in the world of rectal cancer. It's kind of an oncologist perspective, but it's quite relevant for the surgeons as well, as how things have changed, because we all work in a multidisciplinary settings, and we are part of a very good team, and we need to kind of see what other parties doing so that we have a kind of a feel of how things are in the real world. So the learning objectives are to understand the principles of management of rectal cancer and also the latest trends in the non-surgical management of rectal cancer. So just starting with a brief case presentation, he was one of my patients, 24-year-old male presenting with bleeding per rectum and weight loss, no significant comorbidities or family history, unmarried, and he had a colonoscopy showing a mid to low rectal tumor starting 8 centimeter from the anal verge and extending to about 4 centimeter from the anal verge. Biopsy confirmed poorly differentiated mucinous adenocarcinoma. So that was his colonoscopy showing a stricture, a malignant stricture in the rectum. That was his T2 weighted MRI scan. As you can appreciate, that there is quite a marked rectal thickening with involvement of the CRM anteriorly towards the bladder and some mesorectal nodes. So it was considered as T3 and not, but in the MDT they said there was some borderline involved nodes. The staging CT scan showed no distant metastases. He was mildly anemic, microcytic. CA was mildly elevated, and rest of the bloods were unremarkable. So he was discussed in the GI-MDT and was proceeded to neoadjuvant chemoradiotherapy. So he was seen in the clinic. He was offered semen cryopreservation, but that was declined. He was started on induction chemotherapy with oxaliplatin and capecitabine, but he did not tolerate that well, and he was admitted with grade 3 diarrhea. Decision was taken to proceed to concurrent chemoradiotherapy after cycle 2. That's another thing that we do not routinely screen our patients for DPD deficiency, which can cause severe complications in patients who have fluoropyrimidine therapy. It is a standard of care in most of the Western countries to screen patients for DPD deficiency before starting them on capecitabine, but unfortunately here we haven't got the capacity to do that. So he received rapid arc therapy, radiotherapy with 50.4 grain, 28 fractions. And then we repeated the MRI scan a bit earlier than expected at 7 weeks. So that was MRI scan showing, more or less stable rectal thickening, with CRM looking a bit more clearer now, but the tumor was still more or less stable. So basically, a couple of weeks later after that scan, he underwent APER and colostomy, which showed a complete pathological response. He had 2 more cycles of adjuvant chemotherapy, which he tolerated well. And so far, he has completed about 4 years of follow-up, and he remains well. His recent CT scan did not show any evidence of local recurrence. So on that background, that was just his radiotherapy planning scan showing what we treat. So in rectal cancer, we not only treat the rectum, but we treat all the at-risk nodal groups. So these lines actually indicate the volume that we draw
to treat the rectal cancer. So you can see the rectum posteriorly, but we treat the mesorectal nodes, the obturator nodes, and internal iliac nodes. In this case, we decided to treat the external iliacs as well because the tumor was kind of involving the anal sphincter, external anal sphincter. So we treated the external iliac nodes as well. We, of course, treat the presacral node. So all the involved nodal groups where the cancer can spread to, we treat that. This is a rapid arc plan, which shows 2 arcs, which give a very conformal dose. So this blue kind of dose bar indicates that the dose is being delivered quite nicely and conformally to where we intend to deliver the treatment. So basically, Mercury study has been one of the more pioneering study in terms of determining the role of MRI scan in rectal cancer. And it divided rectal cancer into favorable, unfavorable, and advanced tumors based on the degree of extension of the tumor into the mesorectal fat. So basically, T1 to T3A showed we class that at T1 to T3A. If there's minimal extension to the mesorectum, they are classed as favorable. Whereas unfavorable are when the tumor kind of advances and tries to grab the circumferential dissection margin. So the more it goes towards the CRM, it becomes more unfavorable. And advances when it's actually involves the CRM or when there is sphincter muscle involvement. And we all know that treatment is multimodality, including surgery, chemotherapy, and radiotherapy. So the life was much simpler a few years ago when I was training and when we were all training, most of us were training, and the guidelines actually stratified rectum into low, intermediate, and high risk. And that life was much simpler. So low risk would proceed to surgery. High risk you would consider chemoradiotherapy and then an interval scan to allow for shrinkage and then surgery. And intermediate risk, no one knew what to do, but some would offer short course radiotherapy, some would just proceed to surgery. That was that, basically, fairly straightforward. Unfortunately, we don't like to be straightforward. We want to make life more complicated for ourselves. I'll come to that in a minute. And essentially, the role of pre-op radiotherapy was determined by a number of trials, including the Swedish rectal trial, which was quite an old trial back in the 97, which essentially determined the role of radiotherapy and showed that radiotherapy improves the rate of local recurrence. So it reduces the rate of local recurrence if we offer them pre-op radiotherapy. And patients were randomized to pre-op radiotherapy with short course versus upfront surgery. And both the rate of local recurrence and 5-year overall survival were improved if we offered them short course radiotherapy pre-op. That was quite an old trial, but one of the first of its kind to establish the role of pre-op treatment. Then we have Dutch trial showing similar results. This did not show any survival benefit, but it showed improvement in local regional control with short course radiotherapy. And they were all resectable patients. Then this was this landmark German trial, which compared pre-op chemoradiotherapy with post-op chemoradiotherapy, and it showed that pre-op treatment is better than post-op treatment in terms of reduction in the risk of local relapses and side effects. So now we are slowly encroaching on the territory of pre-op treatment with pre-op long course chemoradiotherapy. They use 28 fractions of treatment. So it remained the case for many, many years later, up till recently. And currently, the standard of care is total neoadjuvant treatment. And that makes some sense because most of the rectal cancers, if they're advanced, they have micrometastases. And the role of neoadjuvant treatment is not only to treat the tumor locally, but also to target the micrometastases and to reduce the risk of distant mets. So the aim of total neoadjuvant treatment is to kill off any remaining cancer cells, any micrometastases, and to reduce the risk of relapses locally, as well as to improve the rates of distant metastases. And it also improves pathological complete response rates, and it offers better local control. So this was the landmark trial, Rapido trial, which essentially made this as a standard of care across most of the cancer centers. And essentially, Rapido trial, it
included patients with locally advanced rectal cancers who met all the inclusion criteria. So those who had CRM and threatened disease, bulky nodes, T3 or T4 disease, they were randomized either to short course of radiotherapy, followed by induction chemotherapy, followed by chemotherapy with Capox or Folfox, based on the physician's choice, and then total mesorectal excision. So giving radiotherapy first, followed by chemotherapy, and then surgery. So delivering all the treatment upfront. They compared that with the standard of care, which was established based on the German trial, which is the capecitabine-based chemoradiotherapy, followed by surgery, followed by adjuvant chemotherapy with Capox and Folfox. So we all getting this point that they compared this experimental treatment with total neoadjuvant treatment, where they gave all the chemotherapy and radiotherapy before surgery, versus this sandwich style approach where they give chemoradiotherapy before surgery, and then they had adjuvant chemotherapy. And the primary endpoints were disease-related treatment failure. And then we all know the secondary endpoints are usually PATSIA, or overall survival, R0 resection rates, and rates of surgical complications. This was just a brief overview of what they use. So long course was the standard treatment with 50.4 grain, 28 fractions with concurrent capecitabine, and short course was 25 and 5 fractions, administered over a maximum of 8 days. So the results were quite striking, really. In the experimental group, the rates of local regional control were much better. There was reduction in the risk of local recurrence. If we give all the treatment before surgery, so giving them chemotherapy and radiotherapy before surgery, improves the local regional control rate. So that was statistically significant. And the trial data is mature at 5 years, and we can see that the curves are separating, and the results are significantly better with hazard ratio of 0.75. So there's 25% reduction in the risk of local regional failure if we offer total neoadjuvant treatment. The overall survival, we did expect that it wouldn't be different, and it wasn't. It wasn't statistically significant. And also there was significant reduction in the rate of distant metastases. So you can see that the hazard ratio was 0.69. So there's nearly 31% reduction in the rates of distant metastases. And that biologically makes sense, that we are giving all the treatment before surgery. The problem is that if we delay the chemotherapy after surgery, you are giving at least 6 to 8 weeks after surgery. The surgeons have kind of dissected the tumor, and they have helped to spread the micrometastases as well, excuse me. And then we are delaying it by another 6 to 8 weeks by the time the wounds have healed. And sometimes they may not even receive adjuvant chemo because they're not fit enough, and wound healing problems. And these are the sort of patients who are at risk. And, some of these patients have EMVI, they have these horrible advanced tumors, and it makes sense to offer them total neoadjuvant treatment. And the pathological complete response rates were double. So from the standard of care of 14%, they kind of doubled to 28%, and that was statistically significant. We had another parallel trial called PRODIGE 23 trial. I'm not going to go into the details, but essentially it was a French study which compared treatment escalation to 3 chemotherapy regimens with 5-FU, oxaliplatin, and irinotecan, followed by chemoradiotherapy and surgery, and then some more chemotherapy. And they compared that with standard treatment with chemoradiotherapy, concurrent chemoradiotherapy with capecitabine, followed by surgery, and adjuvant chemo. So essentially, it was slightly different in the sense that it escalated the treatment to 3 chemotherapy regimens, and it didn't give the total neoadjuvant treatment. So it was different to what we had in the Rapido trial. So it basically gave the same sandwich-style treatment of some chemotherapy before, then chemoradiotherapy followed by surgery, and then more chemo. That actually showed that with the experimental treatment, where they escalate the treatment to FOLFIRINOX or 3 chemotherapy regimens, the disease-free survival was statistically significant. There was no benefit in overall survival. The mets-free survival was also statistically significant. That trial did not change the practice too much because of the toxicities. So if we increase the chemotherapy from 2 to 3, the drugs from 2 to 3,
that will increase the toxicity. So the toxicity rates were significantly higher with treatment escalated groups, which is why this trial wasn't really, it wasn't practice changing. So one of the other things that trial that attempted to put us out of the job was this study called Prospect Trial, which essentially questioned the role of radiotherapy in favorable rectal cancers. So those patients who are eligible for sphincter sparing, so sort of upper to mid rectal cancers, non-CRM threatening, T1 to T3, node negative to node positive, they were randomized 1-to-1 between long course chemoradiotherapy followed by surgery and some adjuvant chemotherapy. So that was the same sandwich style approach that was the standard of care. And they had compared that with just chemotherapy, so FOLFOX, and then they assessed the response after 6 cycles of chemotherapy. And if there was significant response, so more than 20% shrinkage, then they were offered surgery. Bear in mind that these were the patients who did not have CRM-threatened disease, so they were ruled out. So if they had good response, they were offered surgery and some more chemotherapy. If they didn't have a good response, then they were offered neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgery. After surgery, if they had a positive resection margin, they were given long course concurrent chemoradiotherapy. Now, the main criticism about this trial was that those patients who did not respond, by default, they were offered long course chemoradiotherapy and then surgery. So essentially, radiation oncologists questioned this study that if the patients are not responding, you're offering them CRT anyway. So essentially, you're not ruling out the role of radiotherapy. You're just saying that if you don't respond, you will have radiotherapy. But if you do respond, then you can just continue with chemotherapy and proceed to surgery. Prospect trial did show the non-inferiority of chemotherapy with chemoradiotherapy. So it did show that chemotherapy is as good as chemoradiotherapy in those patients who have upper to mid-rectal cancers, who are candidates for sphincter sparing surgery, and who have non-CRM threatening disease. So you would kind of treat them similar to the patients with sigmoid colon, essentially by giving them induction chemotherapy with 6 to 8 cycles of treatment, FOLFOX, or 4 to 6 cycles of CAPOX, followed by surgery, followed by more chemo. So you can see that there's an attempt at de-escalating the treatment in those favorable patients. So this was another practice-changing trial, which was published in New England Journal of Medicine quite recently. And it showed that those patients who have MSI high disease, even if they're locally advanced rectal cancers, if you give them immunotherapy upfront for 6 months, the cancer will go away. So they do not need radiotherapy, they do not need chemotherapy, and they do not need surgery. So it was a early phase trial, which only kind of had 10 to 12 patients, so quite a small number of patients. And they were not expecting the immunotherapy to completely, kill off all the cancer cells and make them cancer-free. But the results were quite astounding. They actually enriched the study to include only those patients who had MSI high disease. And we all know that those patients who have MSI high disease have more immunogenic tumors, so they're more responsive to immunotherapy. So they were given 3-weekly pembrolizumab for a total of 6 months. And at 6 months interval, they had imaging which showed a complete radiological response. And they were kept on surveillance for 2 years, and the disease remained at bay. So essentially, the trial concluded that although further studies need to be done, but in those patients with MSI high disease with locally advanced rectal cancers, you can just treat them with immunotherapy on its own. MSI high cancers only account for about 5% of patients with rectal cancers. So this is still not the standard of care for your common rectal cancers which have MSI low disease or who have MSI stable disease. So just coming to towards the end and the journey that we all had to witness in terms of rectal cancer, you can see that from very early studies which established the role of short course radiotherapy. Then we had long course chemoradiotherapy coming into play, especially for those patients who had CRM threatening disease. Then we had this Polish trial which established that there was no difference between long course and short course radiotherapy.
we had this Rapido trial, which was a multicentric trial, which was practice changing, which showed that if you give all the treatment upfront, including chemotherapy and chemoradiotherapy, then you reduce the risk of distant metastases and local regional control. And that was, quite recent, about 2 to 3 years ago. Then we have immunotherapy coming through for patients with MSI high disease, which actually proved that those patients with MSI high rectal cancers, even if they're locally advanced, you can just give them immunotherapy on its own. So essentially, it made surgery and radiotherapy and chemotherapy redundant for those patients. Then we had this prospect trial, which showed that you can actually omit radiotherapy in those patients who have favorable upper to mid rectal cancers who are candidates for sphincter sparing surgery, and those who have non-CRM threatening disease. So from gradual escalation, we are now coming down towards de-escalation. And that makes sense because we have got better local control rates. We have, thanks to, our excellent surgeons and, their surgical modalities, that we are able to have a very good total mesorectal excision, which reduces the rates of local recurrence anyway. And we know that if you have a good dissection with total removal of the mesorectal fascia, then that improves local control rates and reduces the risk of local relapses. And now we have established that our local relapse rates are low. We are now coming towards the de-escalation, and slowly we have the role of immunotherapy coming in. But we need to enrich our patients to include only those patients who will be responsive to immunotherapy. So remember in the previous slide where I showed you there were just 3 arms: low risk, intermediate risk, and high risk, and that's pretty much it. Now the life is much more complex, unfortunately. Sorry if it doesn't project too well, but I'll just kind of give you a brief summary of how things are now. So any patient with locally advanced rectal cancer needs to be screened for MSI status. So that's where the biology is coming into play. And biology needs to come into play quite early on. So if MSI is high, then they are candidates for immunotherapy. And you can just follow them up. And if the disease goes away, you don't need to do anything. If the disease remains there, then you can offer chemoradiotherapy and surgery, or surgery alone, depending upon their CRM status. But they will respond. If they have an MSI stable disease or low MSI, then you risk stratify them based on low or intermediate risk and high risk. Those patients with low risk rectal cancers, especially those candidates for sphincter sparing surgery, you can either proceed to surgery alone, or you can just offer them neoadjuvant chemotherapy based on the results of prospect trial, and then operate. Those patients who are high risk of disease recurrence, either because they have a closed or involved CRM, or they have node positive disease, you can then escalate the treatment, but then aim to give them total neoadjuvant treatment based on Rapido trial. So give them chemoradiotherapy and chemotherapy before surgery. The choice between long course and short course, we don't know yet which one is better. But our practice generally is that if there is CRM threatened disease with extensive EMVI, you would rather want to give long course chemoradiotherapy, especially in low rectal cancers, because you do want to give them a clear resection margin. Whereas in upper rectal cancer, mid rectal cancer, where you've got this bulky mesorectal fat, you can get away with short course treatment, but try and give them all the treatment upfront. Lastly, you can consider escalating the treatment to FOLFIRINOX in those patients who are very fit and well, who have very aggressive, horrible disease, especially with concurrent synchronous liver mets as well. You can escalate the treatment to FOLFIRINOX. So finally, ctDNA, its role is emerging, and it's hopefully going to change the practice again in a few years' time. There are ongoing trials looking at the role of ctDNA and liquid biopsies to either escalate the treatment or to de-escalate the treatment. So there was one trial ongoing, which is currently looking at escalating the treatment based on 3-monthly ctDNA, and if the DNA level is going up, then they escalate the treatment, adjuvant treatment, to FOLFIRI from CAPOX. And if the ctDNA is going down, then they can de-escalate that to single agent chemotherapy. So that is quite promising. So take home message: total neoadjuvant treatment is now the standard of care in patients with locally advanced rectal cancers.
choice of long course or short course should be determined in the MDT, but generally long course should be preferred in patients with low rectal cancers with CRM-threatened disease. And there's increasing role of MSI testing in rectal cancer, and we should be offering single-agent immunotherapy in those patients who have MSI high disease upfront. And we can safely omit radiotherapy in those patients with favorable upper rectal cancers who are candidates for sphincter sparing surgery. But please do not omit radiotherapy in those patients who have CRM-involved disease, because then there's a high risk of positive resection margins. And with that, I would finish my talk, and thanks a lot for inviting me. Thank you. Thank you, Dr. Fawad, for giving us such a lovely insight into the field of radiation and oncology. And it's nice to hear that what immunotherapy can do, to be honest, in locally advanced rectal cancer with MSI high. Now, moving forward, I would like to request Dr. Irfan al-Islam Nasir to give us some insight into the surgery of rectal cancer, show us how they do it here in Shaukat Khanum and a few steps. Over to Dr. Irfan. Can we do it at the end, or do you want to do it? Yeah. All right. So that's fine. So there's a question. So we'll give you the mic, Dr. Arif. So if you can do it in the mic. Question. Yeah. There were 12 patients who were treated with immunotherapy. Yeah. How many of those did achieve a CR? All 12 of them. All 12 of them. All 12 of them. And did what sort of follow-up did they have? So they had 3 monthly MRI scans. So they did the first MRI scan at 3 months, which showed some partial response. And they were not expecting that they'll go into complete radiological response, but they repeated the scan at 6 months, and there was a complete radiological response. And then they kept doing 3 monthly MRI scans for a total of 3 years. And they also combined that with flexible sigmoidoscopies. So and there all was complete, 12 patients for all 12 3 patients. years have remained in CR. Yeah, all Oh. 12 patients. So that was 100%. It was an early phase study. So they did say that although it is kind of practice changing, but you need, bigger trials. But obviously, it's quite difficult to enrich your patients because it's only 5% of patients with rectal cancers who have MSI high disease. Very interesting. Thanks very much. Yeah, sorry, Dr. Amir wants to ask a question. Sorry, I should have given time for questions. I do apologize. It was an excellent talk as always. Thank you. My question is about your patient, which you presented was 27 years old. Yeah. He had a locally advanced rectal cancer, and you planned neoadjuvant therapy, and you changed it due to toxicity in between, and the patient had complete response. So what is your opinion regarding surgery after complete response versus wait and watch policy? Yes. Because in a 27 years old, giving him a permanent stoma is a big concern, especially in this part of the world, where even the stoma bag is not available. So, so wait and watch versus upfront surgery, especially for low rectal cancer tumors. Yeah. No, thanks a lot for bringing up this point. So essentially, in our practice, we should be doing MRI scans about 8 to 12 weeks after the completion of chemoradiotherapy to assess the response. And in those patients who have got, significant response, and again, I think it's also in our MDTs, we should be requesting a radiologist to grade them based on the MRG scoring. So if there's excellent response, then we can offer another MRI scan at about 15 to 16 weeks after completion of chemoradiotherapy. And if they continue to respond, we should combine that with flexible sigmoidoscopy, and that's what we do anyway. And if there is complete radiological response and there is no disease on sigmoidoscopy, then they should be offered rectal sparing surgery. This gentleman, I recall that he had lots of local symptoms as well from his disease. The scan was done quite early on and it wasn't repeated. So that was one.
And I think it should have been repeated. But the thing is that he had significant local symptoms. So he was offered surgery after completion of CRT quite sooner than what we would do. But the recommendations are that if someone has responded after long course chemoradiotherapy with significant tumor regression, then we should be offering them 3 monthly MRI scans with flexible sigmoidoscopies for 2 years. And then we can gradually increase that to 4 monthly in year 3 and then 6 monthly in year 4 and 5. The practices are quite different. There have been quite a number of studies, especially in America and in Mexico, especially looking at the role of rectal preservation. There have also been some radiotherapy trials which looked at boosting the local tumor after chemoradiotherapy and establishing the role of contact radiotherapy to escalate the dose to the rectum and reduce the risk of local recurrence. It currently is, it should be the standard of care in those patients who have responded in my practice to prevent the need of a permanent stoma. But it requires rigorous monitoring, and sometimes that is an issue as well for patients to travel 3 monthly for a scan. And the problem is if they can't commit to that frequent monitoring, then it becomes quite difficult to pick up the disease when it recurs, especially when it is salvageable. And that is one of the greatest issues, especially here in this part of the world, where patients have to travel from quite a long distance, and they can't keep up with 3 monthly scans and flex ECGs and follow-ups. So that's a bit challenging in our practice. Sorry. Yes, but thank you. Yes. Yeah, that's why I didn't volunteer to ask the questions initially, because I knew I was going to take an. So now going back to the next session, it's on surgery. So Dr. Irfan Nasir will let us know about the surgery and its step and how do we do it. Thank you. First of all, I would like to invite, say thank you, a huge thank you for all those who have came for far-flung areas and have taken time out of their busy schedules, and especially those who haven't got time to come here. They have joined online. And we welcome you to the 22nd Shaukat Khanum Cancer Symposium, which is happening for the first time in Peshawar. Have we got the presentation? So I won't take much of time. Patient is ready in the OR as well. I'll quickly go through what we have done so far from when we started the surgical services in Peshawar Shaukat Khanum. We started from April 2021, and it's around 2.5 years. Why is it taking so much time? So I'll briefly go through our audit, and then by the end of my presentation, I'll just briefly show a video presentation and take you through stepwise approach, how we normally do minimally invasive low anterior resection for rectal cancer patients, especially upper and mid rectal cancer. For low rectal cancer, we normally, when we can preserve and we have some margin,
above the sphincters, then we can do coloanal anastomosis for them as well. So it's basically a minimally invasive approach. Have we shared the presentation? So I am Dr. Irfan al-Islam, working as a surgical oncologist at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, Peshawar. Can you please share it? So sorry for the delay. We have no disclosure. We started in April 2021, as mentioned. We started with colorectal, hepatobiliary, and then an upper GI surgeon joined us. We started gynae oncology surgery as well, and then a plastic surgeon recently joined us. How we work through our patients when they come to a walk-in clinic, they get initial history, initial investigation, the baseline bloods, and the baseline scans, and they are brought to the MDT, where every patient has got a customized plan according to his needs and the presentation. So on the preoperative evaluation, patient is assessed in clinic. They are discussed different options which are available. And as mentioned by my colleague, Dr. Fawad, the radiation oncologist, they did a really good job by giving us a sterile fields so that we can take out the specimen within those sterile fields. So far, we have operated on 313 patients, out of which 67% were males and 32% females. So what we have done out of 313, we attempted on all of them laparoscopically, and we had a conversion of 2 patients, which was because of bleeding during surgery, and we were not able to control it laparoscopically, so we had to open them up. By distribution, most of them in the colon cancer, there were total 118 colon cancer patients, and most of them were in ascending colon. And in the rectal cancer, it were around 195 patients, mixture of upper, mid, and low rectal cancer. In the total the rectal cancer patient, 90% of them received neoadjuvant therapy, and only 10% had upfront surgery. Regarding the surgical procedures, so most of the surgeries were ultra-low anterior resections, followed by right hemicolectomies and abdominoperineal resections. By comparing the mean number of lymph nodes, we had 19.5 mean number of lymph nodes in the colon and 18 in the rectum, although NCCN suggests 12 or about 12. The mean blood loss was around 35 and 55 ml, operative time around 3 to 4 hours, and mean length of stay 6.5 to 6 days. Most of them were adenocarcinomas, and our R0 resection rate as compared to an R1 resection was 10 out of 313. By looking at the complications, we had surgical site infection in 13 patients, anastomotic leak in 7 patients, and I must say that out of those 7 patients, 3 sphincters were preserved through
local control and endosponge technique. And we had six re-explorations and readmission rates of 3 and a 30-day and 90-day mortality of 1. If you look at the ASGBI 2021 audit, just to give you a brief of that as well, this is from the whole United Kingdom data. So obviously there are different centers. The data has merged from different centers as well. Some of them will be really good. Some might be not doing very good. But if we compare ourselves to them, the 90-day post-operative mortality in ASGBI was 3.1%, and we had 0.33%. The proportion of patients undergoing laparoscopic surgery in ASGBI data is 66%, and we had 99.4% in two conversion, as I mentioned. Unplanned return to theater of 7.2%. We had 1.9% if you look at our data, and the proportion of patients with positive CRM is 7.4 in 2021 data. We had 3.3% if you look at our 10 patients who came with CRM positive. And in anastomotic leak of 8.8 to 10%, we had 2.3%. In 7 patients, we had anastomotic leak. So this is the technique with endosponge, which the sphincters we salvage in 3 out of 7 patients whose sphincters was saved by local endosponge technique. This is our OR setup. And obviously, this is not possible without the support of our ancillary, our gastroenterologist, radiation oncologist. And I must say that we have got really good mentors who have trained us well and to give such results as well. And this is my team. This is not possible without the colleagues, supporting colleagues who always help whenever we call for help. So I'll present one patient who was a 45-year-old male who had liver metastasis and low rectal cancer patient. He was planned for a stage resection. So liver resection was done, and then he was planned for low interior resection. So this is the patient position, intraduodenal position. Bowels and omentum has been tucked in. We started 2 centimeter lateral to the right ureter. The plane is being created by slowly and gradually mobilizing opening up the peritoneum. And the target here is to localize the superior rectal artery, which is the continuation of the inferior mesenteric artery. So once we have located the superior rectal artery and inferior mesenteric artery, we create a plane, and this is the artery which can be quite well appreciated. So slowly and gradually, we create a plane and further dissect it. Once we are in this plane, we are least concerned about the ureter or any other structure, because the structures which need to stay behind, we are in the plane in which we need to be. So the ureter can be seen in the bottom. Slowly and gradually, the plane is further mobilized towards the inferior mesenteric artery. And once we reach the inferior mesenteric artery, we will clip it. The aorta can be seen in the background, just distal to that. And there are very important structures which we need to take care of here. There are nerves which we need to preserve, and ureter, which can be seen in the background moving. So slowly and gradually, once we have dissected the inferior mesenteric artery, we clip it 3 times, as is lightly mentioned, 1 for the patient, 1 for the surgeon, and 1 for the lawyer. So we transected the vessel, and the plane is further created. And once this is the inferior mesenteric vein, so we have created a plane below the inferior mesenteric vein and trying to find out the pancreas, which is just close to the 2 centimeter above and lateral to the origin or insertion of the inferior mesenteric vein. So we have created a plane above the pancreas, put a gauze in the lesser sac, transected the inferior, clipped the inferior mesenteric vein, transected it, and put a gauze in the plane where we actually wanted to have above the pancreas. So now we have started the lateral dissection, and we will join it with the dissection which we have already done from the medial side. It makes it very easy when we have done dissection from the medial side.
and we have created a plane. So once now the gauze can be seen, which we have already placed from the medial side. And this is the last attachments of the splenic flexure. Once it's completely mobilized, the spleen can be seen in the background now. So these are the final attachments of the splenocholic ligament. And once they are released, the colon will be checked for mobilization, that whether we have done adequate mobilization or not. So once we move this up here, we have seen that it's quite well mobilized for tension-free anastomosis of the future. So now we have diverted our attention to the pelvis. Few bleeders which need to be taken care of. So we start initially with a TME dissection posteriorly, taking care of the nerves. This is a TME plane further extended deep into the pelvis, and slowly and gradually we have gone deep. So right-sided dissections. Now we have done the posterior dissection. We have made our plane, created our plane. Now we have started the dissection on the right side. We keep ourselves close to the specimen. And now the plane is created interiorly. So slowly and gradually, we have done the posterior side, we have done the right side, similarly the left side, and now the interior dissection. So seminal vesicles can be seen now interiorly. Slowly and gradually, we further extend our planes, and we dissect it on all sides, circumnavigate the specimen. And once we have reached the pelvic floor, we have prepared it for transection, and we have transected it. Now the anastomosis. So this is the specimen, the final look of the specimen, and it was a 5.40 hours of surgery with 25 ml of blood loss, 5 days of length of stay. Thank you. Thank you, Dr. Irfan, for enlightening us with the surgical steps to rectal cancer and showing us the beautiful dissection. So now we have with us, sorry, so are there any questions or anything online? Because you can ask questions online as well. So anything for Dr. Irfan or Dr. Fawad? So sorry, can you just wait for a second, please? So are there any questions? So yes, please, can you just read out the question? So it's for Dr. Fawad, right? Sorry. Okay, so it's an anonymous participant. He's asking that how do you decide between short course versus long course radiotherapy? So the question is how is it decided for long course or short course radiotherapy? Okay, thank you. So both of them are established treatments, but we look at the imaging and the MRI scan and see if the tumor is lower or upper rectal. So if it's an upper rectal tumor, then we push towards the short course treatment because of the risk of small bowel toxicity. If it's a low rectal tumor or any tumor with heavy nodal burden or extramural venous invasion, then we are more favoring long course chemoradiotherapy. But both of them are valid choices. In the PEDO trial, they use short course treatment along with chemotherapy as total neoadjuvant approach. So both of them are established, but we would use long course mostly for low rectal tumors or those with extensive EMVI or nodal burden. Thank you. So any others? I think there's one more question. Okay, so another anonymous attendee. The question is for Dr. Irfan.
Dr. Irfan Nasir. Do you always mobilize the splenic flexure routinely? And if so, what are the advantages and disadvantages? All right, so it's about splenic flexure mobilization. What are the pros and cons of it? Hello. Yeah, so thank you for asking the question. Normally, we always mobilize the splenic flexure in rectal cancer surgeries. The advantages, obviously, we get a lot of, first of all, we get margins. And second, we get tension-free anastomosis as well, which is a prerequisite for a safe anastomosis. Regarding the disadvantages, I don't think so. There are a lot of disadvantages, except that if the surgeon is not comfortable doing it, so he might not prefer doing it. Otherwise, I don't think so. There are a lot of disadvantages of not mobilizing a splenic flexure. So I guess I there's hope I have answered your question. Thank you, Dr. Irfan. Thank So you. there is another question from Dr. Irfan Kabir. He wants to ask a question. Yes, please. Can you hear me there? Okay. So my name is Dr. Irfan Kabir, hepatopathy surgeon here. I have a question for both the oncologist and the colorectal surgeon. My question is, in an asymptomatic primary rectal cancer, which is non-obstructing, and a liver metastasis, which is also probably borderline, what would the oncologist do, and what would be the preference of the rectal surgeon? Yeah, so the question is about rectal cancer with liver mets. Am I right, Dr. Irfan? That's it. So how to approach that? Yeah. Thanks, Dr. Irfan, for opening another Pandora box. So we don't know yet. I mean, there are some centers or some oncologists which would offer kind of perioperative chemotherapy. So they will give, so if someone has got M1 disease with liver mets, then they are at risk of more mets. So it makes sense to start them on some systemic therapy, especially combine them with molecular targets. So anti-EGFR therapy if they have got KRAS wild type disease, or Avastin, bevacizumab if they have got KRAS mutant disease. So chemotherapy combined with immunotherapy, and then if the CRM is threatened, then we can give them CRT or short course radiotherapy for local control. If it's non-CRM threatening disease, we can give them either short course or proceed straight to surgery, and then give them more chemotherapy afterwards. So a more sandwich style approach. And that probably will be an approach for most of the centers. If it's a borderline resectable liver met, we can escalate the treatment to FOLFIRINOX if the patient is fit and well, just to give you a clear plane of resection. Thank you. And yeah, I agree to Dr. Ford. Obviously, most of these decisions are MDT-based decision, and whichever needs first prioritization has to go first. Obviously, these are the decisions which are made in MDT, and I completely agree. So if we can have an opinion from Prof. Amjad, as he's here with us, and he can just enlighten us with about colorectal liver mets. So what is your practice of doing it? Do you do synchronous, stage, or neoadjuvant, whatever? Thank you. Assalamu alaikum. I think the liver is a deal breaker. So the liver is a deal breaker in the whole treatment. Mostly for synchronous resection, it's the right-sided and the left-sided liver that we do. We don't do rectal cancer with a right hepatectomy, for example, as a synchronous agent, because it's a big morbidity hit if they have a problem. More often than not, if the liver surgeons could take the lesions out, they usually have they clean the liver for us. And while this is being done, this is the choice of a local MDT, whether they want to give them chemotherapy. I'll tell you the practical terms. Practical terms, everybody they get converted with chemo, although the liver surgeons don't like it because the liver become ill. Yeah. And then they have liver resection, they clean the liver. And whilst they're waiting, and particularly in the presence of rectal cancer, if they have high risk factors like EMBI or CRM is threatened, they get local treatment as well. So they have local control while they're awaiting the liver resection. So it goes conversion, liver clean, then they come to have the primary taken out. All right. Very occasionally, and Irfan Kabir would know this more than other colorectal surgeons, if the anatomical location of liver lesions are such that this is going to become a technically difficult operation, like the middle vein, or they have to do an extended dissection, so they go in first without chemo.
Yeah. Because they want to sort of make sure that the liver regrow and all sorts. So this is what our MDT is. Lovely. So Dr. Amir, over to you. What is your practice and how do you approach this? My main concern is while doing liver resection, I'm talking about synchronous surgeries, colorectal surgery and liver surgery at the same time. Yeah. My main concern as a colorectal surgeon would have been when they reduce the blood pressure during liver resection. So if I'm doing a low anterior resection, and if they have reduced their blood pressure Yeah. for liver resection, I'm worried because my resection will give me problems. If at all I'm doing abdominoperineal resections, then I'm very okay, whatever type of liver resection they are doing at the same time. But generally, we tend to treat liver first All right. and then come to low anterior resection with the anastomosis. Anastomosis is also equally important because if it Absolutely. leaks, then there is a big problem. So the general consensus is liver first. So I'll have an opinion from Dr. Irfan Kabir on this. So how do you approach the liver in this? If there is a bifocal liver mets or is it the unifocal single lobe liver mets? So I was just hoping to be the controversy starter, not the one to answer it. But I completely agree. It essentially is liver first if you can, because the evidence now doesn't support any role for neoadjuvant or adjuvant approach in it. So if you can take the liver out first, it's better. And like our colleagues have said, right-sided resection with synchronous liver resection, probably very easy thing to do. Left-sided resection, you're going to think 3 times before doing it, unless it's a very minor liver resection. Unless you're doing a Hartmann's or a colostomy, in which case you might take it on. But again, it's on a case-by-case basis, and the evidence is still evolving. So it's still a controversial part of the treatment. All right, thank you. So we have got another question. Do you do prophylactic pelvic side wall lymph node dissection in cases of rectal cancers, Prof? So, can we have the mic to Prof, please? This is an ongoing debate, and this is a cultural difference. This is an Eastern culture versus Western Hemisphere. So Japanese culture says anything which is peritoneal reflection or below the peritoneal reflection, historically, they have always done a lateral lymph node clearance and a lateral compartment lymph node clearance. But none of their studies have ever shown improved survival associated with this. So a lot of the studies have shown better local control. So, but people don't live longer if you've done that. It's a morbid surgery, and of course, if you do it well, then you become good at it. In Western Hemisphere, if you have a disease in the lateral node, this is seen as a systemic problem. So, in a way, it's a cause and effect. If you see a node that light up in the lateral compartment, you are seeing the effect. It's not the cause. So if you have node positive in the lateral compartment, this patient probably have got a micrometastasis. They probably have a systemic disease elsewhere. So they need chemotherapy to control this, and chemotherapy to give them an equivalent or at par survival. So most of the Western practice now is that if you have lateral compartment nodes, they would get chemoradiation anyway, and they would include that field so that you get a better local control, and you do TME alone. Bill Heel have published his data in the time when there was no AMVI as a surrogate marker, and he's got excellent long-term survival and local control data. Our own data for over 1,000 rectal cancers have shown at par results. And we had not done lateral lymph node dissection at all. I think we've done about handful, 12 or 13 of these, and these are the cases who are young. They a unilateral compartment, they light up after treatment. They have chemoradiation, they have a PET scan, and it is still lighting up. So in those particular patients, you've gone after and you've done the nodal clearance. All right. But that just gives them a better local control. It doesn't change the survival at all. So nutshell is, if you would have a lateral nodes, do it. Think of a systemic disease. All right. Chemoradiation would solve the problem of local problem, local disease control problem. And adding a prophylactic lateral lymph node dissection is not going to add anything to the survival of the patient. So this has been proven. Lovely. Thank you. Thank you, everyone. So any other questions?
So let me just check for any other question. I guess that's it. So moving to so now the session will, will progress. Prof. Amjad will be going to the operation theater, and they will be doing a case. So I'll just give you a brief about the patient that we are going to do. So can you just put that, those slides, please? So a rectal cancer case in a while. So I guess it's post-neoadjuvant, had a cancer at 10 centimeters, had a neoadjuvant chemoradiation probably. Yeah, G, please put that. Yeah, so can you just go to the first slide? Yeah, can you share it as well? So 31-year-old gentleman, otherwise fit and well, had a bleeding per rectum. Colonoscopy showed tumor at around 10 centimeters from the anal verge. Histology, adenocarcinoma, moderately differentiated, having an MR which showed T3N1, and CT no Mets discussed in tumor board. It was decided to have a neoadjuvant followed by surgery. Neoadjuvant completed at around 20th of August, 2023. Post-neoadjuvant scan showed good treatment response. These are the MR for the before neoadjuvant chemoradiation and MR after that. So this is the case which will be done today. We have got another case as well, but we'll see if time allows, we can do it. So the first case is that I guess the patient has already been shifted to the theaters, and Prof will join in a short while. So Prof, fine. Thank you. Riyaz, can you go with Prof? Yeah. So any questions or comments while Prof is going to the theaters? Anything? Any questions or comments from the audience? Online or here in the hall? जी 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 बिल्कुल so we can have that. So there'll be a two-way communication with the theaters. So any questions or anything will be most welcomed. So it will be just a break of few minutes, and then we'll be online with the theaters.
Ji, in a short while we'll be live to the theaters. So can you connect with the theaters, please? All right, so then we can just wait for a while. It'll be like 5-10 minutes break so that Dr. Amjad could, go there and then we'll start the session again. So it'll be just 5 minutes. Thank you. माइक पढ़ना नहीं आता अच्छा आप बताओ जी can you hear us hello जी डॉक्टर इरफान आवाज आ रही है जी I can hear you Samjay here so do you have a picture there आपके पास पिक्चर है जी जी वीडियो आ रही है स्क्रीन पे चलें हाँ I mean ये तो they have just done the setup आपको केस हिस्ट्री तो बता दी है उन्होंने it's a male with mid-rectal tumor at about 10 centimeter his post-treatment so उसमें we'll just give you an overview once they've sorted this gauze out give you an overview of the ports first to give you an idea और ये ports जो हैं ये generally they are standardized port for all left-sided dissection भले वो sigmoid colectomy हो या वो low anterior section हो या abdominoperineal excision हो तो उसके लिए यही ports जो configuration है ये हम use करते हैं generally और शौकत खानम group is doing exactly the same तो ये हमारी भी यही practice है तो we'll just give you an overview इरफान हाँ जी हाँ अगर आप outside view बेटा दिखा दो इन्हें so this is the head end of the patient is north where the light has been shining और umbilical port 10 millimeter होता है because they usually we use 10 millimeter 30 degree scope हमारे पास यहाँ मेरा ख्याल है 3D scope है और लेकिन it's a similar sort of setup तो जो working port है it's 2 finger breadth medial to anterior spherical spine Irfan yes so this is the working port 2 finger breadth medial to anterior spherical spine this is 12 millimeter port that is used for transecting of rectum as well then you have a 5 port a fist difference between these two ports just to sort of avoid clashing and then there is a lateral port in line with umbilicus mainly for retraction on the left hand side and then this is an optional port which is a suprapubic 5 I know कि शौकत खानम group वाले use करते हैं for retraction and pulling the rectum out of the pelvis as well which is a good maneuver to have क्योंकि यही इसी level पे फिर extraction site बना देते हैं suprapubically you can convert them into an extraction site so these are the ports कोई question है आप लोगों के ज़हन में Prof, can we get a bit of a global view of your ports? हाँ जी We हाँ see बेटे the इसको individual हाँ ports. ऊपर से दिखा दें global view ताकि can you see it better now because they're trying to show you the scope थोड़ा सा और पीछे कर लें और ये हमें बता दे कि फुट एंड कौन सा है हेड एंड कौन सा है हाँ जी फुट एंड जरा इरफान मियां हाथ लगा के बताएं फुट एंड कहाँ है ये फुट एंड है जी इसका हाथ भी दिखाओ बेटा so that is the foot end of the patient where you can see a 5 millimeter suprapubic port and then the head end is toward the north ठीक है right so you use 1 2 3 4 ports हाँ जी generally there are 4 working ports and 1 camera port ठीक है ना तो ये मतलब जो सटल स्लाइड डिफरेंस आप कह लीजिए या मतलब वो कह मतलब ये वही यूज ये जो सुप्राप्यूबिक 5 है इसको मैं सब कॉस्टल ऊपर यूज करता हूँ क्योंकि भी मोबिलाइज द फ्लेक्चर रूटीनली अगर जरूरत पड़े तो लेकिन ये इसमें चूंकि बंदा इतना बड़ा नहीं है तो वी कैन एबल टू मैनेज इट विद द सेम हैंड्स जनरली बाकी यही पोर्ट्स रहते हैं ये स्टैंडर्डाइज पोर्ट्स हैं ठीक है ठीक चलें
अब उनका हाथ थक गया है, मेरा ख्याल है वो अब नीचे करके अंदर से दिखा दें तो बेहतर है। I hope the patient they've chosen for you is appropriate. हाँ नहीं नहीं नहीं, मतलब ये देखिए आखिर में जब मुझसे नहीं होगा तो इसको खुद करना पड़ेगा, मुसीबत तो इसके लिए ही है ना। So I think maybe I missed the sort of discussion around neoadjuvant therapy and indication of neoadjuvant therapy in this particular patient. इसमें क्या indication क्या थी कीमो रेडिएशन देने के लिए? तो This मेरा could be ख्याल a है good आपके discussion साथ point. जो सर्जन है वो ज्यादा पता होगा कि हम नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वो नाम सर्जन तो तो बेचारा बस- मासूम है, वो तो मतलब जो है वो कह रहा है कि वो नोट पॉजिटिव थे और एमडीटी ने कहा था तो हमारी सुनी नहीं किसी ने। So I tell you why I'm asking this, because this is really a big debate now in the West in terms of indication for downstaging. क्योंकि वो होता है ना कि एक्सेसिव मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो अभी ये भी एक वो है कि EMVI का हिंट होना। अब मैं आपको अपनी मतलब प्रैक्टिस बता देता हूँ, बोथ इन लिस्बन एंड यूके, और फॉर दैट मैटर इन दोहा भी वो सिमिलर प्रैक्टिस करते हैं कि जो पेशेंट्स जिनको या EMVI हो या CRM जो है वो लेस देन 2 millimeter radiologically on pre-operative staging, they get neoadjuvant therapy or neoadjuvant treatment. लेकिन जो बेशक अगर CRM क्लियर है और उसके अंदर EMVI नहीं है तो we really don't worry about nodes और we basically do upfront surgery. So ये हमारा criteria जो है ना वो सर्जरी का, और height of tumor is not an indication for us to give chemoradiation unless somebody specifically is looking for organ preservation, कि जो उसको APR फेस कर रहा है और वो चाहता है कि अगर उसको कंप्लीट क्लिनिकल रिस्पांस मिल जाएगा तो दे प्रॉब्ली डोंट वांट टू हैव एन एब्डोमिनल पेनियल एक्सिजन, तो उसकी इंडिकेशन है कीमो रेडिएशन की। बाकी जिन लोगों को आप रिसेक्ट कर सकते हैं और उनका CRM क्लियर है और EMVI नहीं है या बैड फीचर्स नहीं है, दे गो अप फ्रंट फॉर सर्जरी. This could be something which I'm sure we will speak in the Congress as well, bit more about it, role of organ preservation and everything else. So ये इरफान जो है ना, he is gonna make a start. तो आप देख लीजिए कि जो लैंडमार्क्स हैं, ही इज एक्सपोज द 3-point एक्सपोजर, एम्प्टी पेल्विस राइट साइड के ऊपर यूरेटर है जिसपे हुक के नीचे इसके आइलियक के साथ, तो ये ग्रूव है वेयर यू स्टार्ट विद मोनोपोल डायथर्मी. सो यू मेक अ स्टार्ट इरफान व्हेनेवर यू रेडी. So while Irfan is making a start, and we'll ask his technique in a Yes. second, there's a question online from Syed Shaukat, and he wants to know how should we see the vertical length of rectal cancer. So Yes. the concern is that usually you only see the lower limit. Yes. How do you see the upper limit? देखो How do you decide on that हाँ one? नहीं MRI जो है ना, इट हैज बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ, और उसमें MRI की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं ताकि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज. सो फॉर एग्जांपल इन मोस्ट सेटअप्स MRI बेस्ड जो ट्यूमर लोकेशन है या ट्यूमर हाइट है, इट इज इन रिलेशन फ्रॉम व्हाट यू कॉल एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है ना, वहां से वो आपको डिस्टेंस बताते हैं, एनल वर्ज से नहीं बताते. और लो रेक्टल कैंसर में MRI की थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो सम टाइम उन केसेस के अंदर हम एडिशनली एंडोएनल अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं. और दूसरी चीज ये है कि जो टेक्निकली स्पीकिंग जो अपर लिमिट है ना, दिस इज टेक्निकली नॉट अ कंसर्न फॉर अ कोलोरेक्टल सर्जन. लोअर लिमिट ऑफ द ट्यूमर जो है कि जहां वो बैठ रहा है या जहां आप इसको ट्रांजैक्ट करना है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट relates to your ability to do a sphincter preservation surgery and the functional outcome of course, क्योंकि जितना लोअर जाओगे उतना ही एनास्टोमोटिक लीक का रिस्क ज्यादा है और उतना ही फंक्शन बैड होगा, particularly in male patients. तो इसीलिए जब आप MRI देखते हैं या MRI को रिपोर्ट किया जाता है, तो व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो इज कि इसका लोअर लिमिट क्या है, लोअर बॉटम ऑफ द ट्यूमर कहाँ है, नॉट कंसर्निंग अबाउट अपर लिमिट कि जी ये 5 सेंटीमीटर तक जा रहा है या 7 सेंटीमीटर तक जा रहा है, क्योंकि मिड टू लो रेक्टल कैंसर में जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है, दैट इज टोटल मेसोरेक्टल एक्सिजन. अपर रेक्टल ट्यूमर में आप पार्शियल मेसोरेक्टल एक्सिजन करते हैं, लेकिन वो भी बेस्ड होती है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द ट्यूमर. डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, it does. So what you're saying for the audience is that the lower limit is what decides Yes, on the extent exactly. of the surgery. Upper Exactly. limit आपको intraoperatively वैसे भी नजर आएगा. नहीं और नहीं भी फर्ज कीजिए अगर नहीं भी नजर आता ना, तो उसमें इसलिए वो फैक्टर इन नहीं होता क्योंकि आपने सिग्मोइड डिसेक्शन करनी है, आपने रेक्टम रिमूव करनी है,
तो लोअर लिमिट इज योर टारगेट, और वो जाहिर है कि जब आप IMA को ऊपर लेंगे तो मतलब जाहिर है कि वेज सेक्शन तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो 10 सेंटीमीटर तक आ रहा है या 11 तक आ रहा है, क्योंकि उसने स्पेसिमेन में ही जाना है। अच्छा, so just for the sake of the audience, जी आप हमें patient positioning के बारे में बता दें. जी जी Post आपने हमें दिखा दिए, हाँ but जी, इसमें where is कुछ your चीजें, हाँ assistant इसमें, standing, हाँ where is your बिल्कुल cameraman standing, and ठीक what is ठीक the position of the patient? ठीक। सो स्टैंडर्ड पोजीशन है, अगर आप लोग कोलोरेक्टल सर्जरी करना चाहते हैं और आप ऐसा सेटअप बनाने के में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपके पास राइट इक्विपमेंट हो थिएटर के अंदर, जिसमें टेबल इंपॉर्टेंट है, और टेबल के साथ फिर एक हाइड्रोलिक लेग्स होती हैं कि जिसमें आप पेशेंट की जो लेग है उसको मॉडिफाइड लॉयड डेविस पोजीशन बोलते हैं आप, कि न्यूमेटिक कफ के साथ वो आप उसको पेशेंट को सिक्योर कर सकें टेबल के ऊपर। Some centers use vacuum bag to, because patient is going to go extreme head down in the right tilt. So about 22 degree head down hota hai patient generally speaking, or 7 to 9 degrees right sided tilt hoti hai is patient pe. So it's a very awkward position. अगर आपने कभी मतलब सोचा हो ना कि 4-5 घंटे आपको इस पोजीशन में टेबल के ऊपर लटाया जाएगा, तो हाउ डू यू फील? तो इट इज़ अ रियली गुड एक्सपेरिमेंट। आई एनकरेज यंग बडिंग सर्जन्स के वो एक दिन टेबल पे लेटें बगैर एनेस्थीसिया के, और किसी कोलीग को कहें कि हेड डाउन करें उनको। तो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर नर्व्स, यू नो, नर्व पॉइंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आर्म्स हैं, आर्म्स के पास रेडियल नर्व है, तो हम साइड सपोर्ट नहीं यूज़ करते, और हम शोल्डर सपोर्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी का चांस है उसके साथ। सो दीज आर सटल थिंग्स कि जो नॉन सर्जिकल हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है कि अगर पेशेंट को ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो जाए, आर्म्स आर बाय द साइड, बाय द वे देयर इज नो आर्म एक्सटेंशन आउट, क्योंकि आर्म एक्सटेंडेड होगा और हेड डाउन और राइट टिल्ट होगा तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। अच्छा, अब हेड डाउन कर लिया तो उसमें जाहिर है कि एनेस्थेटिक कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके एनेस्थीसिया वाले हैं, दे हैव अ बाय इन विद दिस टेक्निक, कि वो स्टीप हेड डाउन से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगी उसकी सर्कुलेशन में, उसकी वेंटिलेशन में, दे आर ओके विद इट। शुरू में जब लेप्रोस्कोपी आई थी तो ये डील मतलब जो है ना, जो 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 प्रॉब्लम था जनरली एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये पोजीशन होती थी, और एनेस्थेसिस्ट वर वेरी रिलक्टेंट टू गिव पीपल स्टीप हेड डाउन, क्योंकि वो 4-5 मतलब 3-4 घंटे तो कम से कम रेक्टल कैंसर की सर्जरी रहती है। तो कुछ सेंटर्स ये करते हैं कि 2-2.5 घंटे करने के बाद दे गिव 10-15 मिनट्स ब्रेक के लेवल कर देंगे मरीज को, और यू नो सर्जन्स वुड हैव अ कॉफी ब्रेक और समथिंग, कुछ लोग ऐसे करते हैं। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। एक रिमोट रिस्क है स्लिम पेशेंट्स के अंदर, वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, कि अगर वो हेड डाउन रहेंगे और इस पोजीशन में रहेंगे काफ़ी देर में, तो उनको लेग्स में कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांस होता है, खासकर जो टॉल लोग हों। तो ये जनरली Staying पेशेंट with that, सेफ्टी में। staying with that topic, so sorry to interrupt there. जी So one of the concerns with prolonged rectal surgery is, like you mentioned, compartmental syndrome or जी DVT जी जी post-op. So what strategies would you जी recommend we do, and what other anesthetic changes? I know you're not an anesthetist, so probably not a fair हाँ question. नहीं नहीं But नहीं, still, यू from कैन your आस्क मी। experience, what would you recommend for somebody who's trying to do this in अच्छा their हाँ hospital? What are the minimum requirements for this? हाँ, तो मेरे में रिक्वायरमेंट तो ये जो डीवीटी प्रोफिलैक्सिस है, ये तो बहुत स्टैंडर्डाइज है अब, कि दे यूजुअली गेट क्लेक्सिन प्री ऑप, मतलब जो है ना जो दाखिल होंगे, और डिपेंड करता है कि आप उनका आपका एडमिशन पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो नाइट बिफोर आए हैं तो दे यूजुअली गेट लाइक 12 आवर बिफोर द सर्जरी दे विल गेट अ प्रोफिलैक्टिक क्लेक्सिन ऑन द टेबल, दे वुड हैव न्यूमेटिक कफ, बूट होंगे, और पोस्ट ऑप इनको लेग स्टॉकिंग्स होती हैं, और उसके साथ इनको हम क्लेक्सिन देते हैं 40 मिलीग्राम डेली, मतलब जो है एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज। और ये डोज इंपॉर्टेंट ये है कि ये डोज सिर्फ हॉस्पिटल टाइम तक नहीं है, अब दे हैव शोन दिस इन द डेटा कि ये तो तकरीबन 4 हफ्ते पोस्ट ऑप जो है ना, इनके पेशेंट को घर भेजा जाता है ताकि दे कैन सेल्फ इंजेक्ट ये क्लेक्सिन, वो लेके घर जाते हैं, क्योंकि पेल्विक सर्जरी के साथ रिस्क थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो ये तो जनरल सा वो है, इट हैज नथिंग टू डू विद फॉर एग्जांपल लेप्रोस्कोपी। जो लेप्रोस्कोपी में और जो फॉर दैट मैटर जो आपने एनेस्थेटिक कंसिडरेशन पूछी है, वो इम्पोर्टेंट ये है। नीचे बच्चा नीचे, ये वाइट है ना नीचे, और ये येलो ऊपर जाएगा, ये शो यू, दिस इज द एयर टू स्टिक अराउंड। हाँ ये, So can you just explain to the audience what is happening? Because we can हाँ see जी you're हाँ। doing सो quite ये bloodless surgery here, but we don't हाँ really understand नहीं what's going on. नहीं, give us a chance, we still have time to make it bloodful। तो
तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसने स्टार्ट किया इरफान, दिस इज इरफान ऑपरेटिंग विद दिस टीम, और जनरली ये वही टेक्निक है जो वेल प्रिस्क्राइब, वेल पब्लिश्ड है. ही स्टार्टेड 2 सेंटीमीटर जस्ट आप कह लीजिए कि टू मीडियल टू द और लैटरल, विचएवर वे यू वांट टू लुक एट. तो दो चीजें थी, एक आइलियक आर्टरी थी और एक राइट यूरेटर था, जिसके ग्रूव में इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया. और जो की है वो ये है कि ही स्टार्टेड विद मोनोपोलर डायथर्मी, और उसके बाद आपने देखा कि एयर ट्रैक्ट इनटू द रेट्रोपेरिटोनियम, और उस एयर के ना 2 लेवल हैं, एक लोअर लेवल होता है, एक हाई लेवल. लोअर लेवल ट्रैक डाउन टू द राइट कॉमन आइलियक, upper level track at the back of the Prof, IMA. it might be better for the audience if just for a few minutes, if you could pull Okay. the camera back a bit. Okay, just take a And I camera know back. the surgeons were in a hurry to get it through, Yeah, but yeah, it might be yeah. helpful for the audience to understand what was Okay. being explained. बेटा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाओ, कैमरा को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं. सो राइट आइलियक्स ये नीचे है, ही विल पॉइंट आउट विद अ हुक. सो नीचे राइट आइलियक दिखाओ, ये लेफ्ट आइलियक है, ये राइट आइलियक है, ये लेफ्ट है, और ये यूरेटर था. और अच्छा इसमें और वो यूरेटर नजर आ रहा है लेफ्ट वाला, और राइट यूरेटर ये है. इसमें जो की है ना वो ये है कि पीपल ऑफन आर ऑब्सेस्ड विद दिस लेफ्ट यूरेटर थिंग, और आपने देखा है कि ये कर क्या रहा है कि ही इज जेंटली टीजिंग दिस रेट्रोपेरिटोनियल फेशियल प्लेन to sit in front of the retroperitoneal structures, जो in this case ureter और left gonadal vessel हैं. अगर आपको ureter बहुत clean नजर आ रहा है और आपको psoas muscle नजर आ रहा है इस dissection में, तो you have gone a layer too deep. ये मैसेज है जनरली उन लोगों के लिए. Sorry for interrupting there, but just so that the audience knows where the pelvic brim is and where the pelvis is, थोड़ा सा हमें कैमरे में दिखा दें ताकि हमें orientation हो जाए. थोड़ी देर में आप मेरी और कैमरा पर्सन की लड़ाई करवा देंगे, वो बेचारे मत देना. चलो जी दिखाओ जी इनको पेल्विक ब्रिम. ये है काफी मेहमान नवाज हैं, कुछ नहीं कहेंगे. हाँ यही कह के बुलाया आपने हमें. चले ये देखिए, ये पेल्विस है जिसको रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन पे उठाया हुआ है परपेंडिकुलरली आप, ठीक है. सो दैट इज अ पेल्विस यू आर लुकिंग एट. डिड यू गेट इट? बिल्कुल जी, नजर आ रहा है. अच्छा अब ये आर्क देखो आर्टरी की जिसको साथ ये काम कर रहे हैं. दिस इज द आर्क ऑफ अ पैकेज, ठीक है. ये पैकेज है दिस pulling the rectum up upward. and That's correct. Yeah, it is pulling up, perpendicular up, ठीक है, out of the pelvis, and he is working under the arc of this inferior mesenteric artery, or this will end up in front of the aorta. अगर इसको follow करेगा, there would be a single vessel here. That's the DJ flexure. And there is an inferior mesenteric vein you saw under the gauze. जब इसने सेटअप किया था तो उस वक्त इसने एक्सपोज यहाँ किया था, वो IMV है ऊपर, ठीक है. ठीक. Is it okay to proceed? Any questions from the audience? So, Prof, it's Fahad here. A small question. So, where do you want to have ligate the artery? Is it a high tie or a low tie? Where would you like us to do it? So, what's your preference usually? My preference is what my trainees tell me. So, where would you like us to ligate it? Wherever you want to do it, Prof. You can do it So, anywhere. so well, this is jokes beside. So this is a question of high tie versus low tie. There's a lot of debate, or there used to be a lot of debate about this. Actually, there is no debate anymore. So there is no oncological benefit for doing high ties. We know this. There is some studies which suggest that doing a low tie has got a higher chance of a nerve preservation. ठीक है ना. तो ऑन्कोलॉजिकली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिस्टिकली जो आसान है ना वो हाई टाई करना है. बिकॉज यू टेक वन वेसल, वन आर्टरी एंड वन वेन. इसको बेटा ऊपर से ना इरफान, ये टेक द पेरिटोनियम अबव, ये ऊपर है ना ये वाला एरिया, ऊपर नहीं ऊपर वाला एरिया, ये इसको क्लीन करो पहले. हाँ, जस्ट ओपन दिस अप एंड देन दिस वुड जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ वेयर द लाइन इज. तो इसमें फाद इसमें यह है कि जो प्रॉक्सिमल टाई है, इट इज सिंप्लीफाइड इन अ वे इन योर हेड कि जी आपने सिर्फ एक वेसल लेना है. और बाज़-औक़ात क्योंकि कुछ सेंटर लो टाई करते हैं, लेकिन वो मतलब साथ ही आर्गुमेंट देते हैं कि जी हम स्प्लेनिक फ्रैक्चर मोबिलाइज नहीं हमें करना पड़ता, वी कैन गेट अवे विद इट. और ये जनरली ये पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न यूरोपियन या रशियन या ईरानियन पॉपुलेशन में डिसेंडिंग कोलन यूजुअली इज क्वाइट लॉन्ग. So they do low ties, they don't mobilize flexure. क्योंकि generally speaking अक्सर जो अगर आपने IMV हाई भी ली होगी ना, तो जो मेजेंट्री रुकेगी वो आपकी इसी लेवल पे रुक जाएगी अगर आपने डिस्टल टाई की हुई है. जी. So Prof, आप वो कीजिए कि जो कन्वीनियंट है आपके लिए. ऑन्कोलॉजिकली इसका कोई फायदा नहीं है, ना इसका डिसएडवांटेज है लो टाई करने का. रिस्क आपके सामने है. देखो जितना आप हाई टाई करने के लिए ऊपर जाओगे,
ये hypogastric nerve plexus जो है, खासकर superior plexus जो है, this potentially can get damaged while All right. trying to do the high tie. All right. So sometimes it is a little bit difficult, especially in a little bit obese patients, that Slow we down, slow cannot down. go to the base of हाँ, the नहीं artery. बेस पे नहीं जाना बेटा, वैसे भी आप हमेशा centimeter or 2 from the origin of the vessel you clip it. You don't go right flush on the aorta. So that's a very important हाँ, tip ये that बहुत you have important given. मैसेज है कि जी। आप जो भी काम करें always leave a get out clause, कि आपके 2 सेंटीमीटर छोड़ देने से पोटेंशियली अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होता है ब्लीडिंग का, तो यू हैव समथिंग टू वर्क विद. अगर आप फ्लश होंगे, just trying to show कि जी हम बहुत रेडिकल सर्जरी कर रहे हैं, and if you have a problem in front of the aorta, the cost is very high for patient. So, Prof, just one question here. So, at the bottom of the screen is the aorta. जी, And बिल्कुल. that white And you can structure. see this is the hypogastric plexus medially. इरफान point out करो बेटा, ये देखो जो nerve, नहीं ये है, और दूसरा वो ureter है, ये plexus run कर रहा है रूट के ऊपर aorta के सामने. This थोड़ा is सा it. पीछे कर ले कैमरा, थोड़ा सा पीछे कर ले. थोड़ा सा पीछे कर लें कैमरा, ये लीजिए, उनके ये पास- aorta के सामने. अच्छा, इनको दिखाना. हाँ, ठीक है ना? This is good. इसमें जो सवाल है मेरा एक है कि you're using the hook only. जी जी. So That's देखो, हाँ for हाँ, us, नहीं हाँ, for us देखिए इस lesser mortals, हम तो hook को यहाँ पे इस्तेमाल करने से बड़ा डरते हैं कि पता नहीं वेन में घुस जाएंगे या पता नहीं फिल्टर को मार लेंगे. So what's your strategy here? आप जो है ना, जो आप मॉडल नहीं है, आपको आपके जो स्ट्रक्चर जहां आप काम करते हैं वो काफी बड़े हैं. तो देखो, एनर्जी जो है ना, एनर्जी सोर्स जो आप यूज करते हैं, इट्स रियली इज व्हाट यू कॉल अ पर्सनल प्रेफरेंस. ठीक है, बहुत से लोग हार्मोनिक या लिगाशोर यूज करते हैं डूइंग दिस ब्लंट डिसेक्शन, व्हिच इज फेयर, मतलब नॉट वन इज, आप ये नहीं कहते कि जी सिर्फ इसी तरह करना चाहिए. थोड़ा सा एडवांटेज मोनोपोलर डायथर्मी का जो ओवर द इयर्स मैंने देखा है, वो ये है कि ये प्लेन क्रिएट नहीं कर सकती. यू नो, इट डजंट फ्यूज द प्लेन. you explore the anatomy, you explore the embryology, and if you have missed it, it would bleed. That's how my mind think about it. जो दूसरे जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जिस तरह हार्मोनिक है, लिगाशोर है, they fuse the tissue together, so you create your planes. You can easily do a very dry surgery in an embryologically wrong plane using the other instruments. तो लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही तरीका है करने का. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज कीजिए. इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हाथ में रिजल्ट ठीक होना चाहिए. इसको ये हुक करते हुए जो ये यूज कर रहा है, इसको ऑब्वियसली इसने काफी दफा ये किया हुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क ये है कि पॉइंटी इंस्ट्रूमेंट है, लाइक यू सेड, कि ये वेन, गोनेडल वेन में चला जाए, एओर्टा के पास. सो ही इज यूजिंग द बैक ऑफ द हील ऑफ द हुक एज अ पुशिंग टूल. ठीक है ना? So now I think you can explore just the taking artery. the discussion a little bit further, before taking the artery, do you prefer to do the dissection under the vein, or do you just, you know, take the... नहीं देखें, इस वक्त जो है इसकी पोर्ट, बेटा एक कैमरा की पोर्ट को थोड़ा सा पीछे कर लो ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा. नहीं, सो जो वेन है ना, वेन इज अ सरोगेट मार्कर ऑफ एनाटमी मेरे अपने ख्याल में, क्योंकि वेन की जो एनाटमी है ना, ये मोर कंसिस्टेंट है. तो वेन के रेफरेंस को हम यूज करते हैं कि जब आपने फर्ज कीजिए कोई ओबीस पेशेंट है, यू आर नॉट टू श्योर कि प्रॉक्सिमली आईएमए पे आप रेडिकल इनफ हैं कि नहीं है, तो देन यू लुक एट द लाइन ऑफ द आईएमवी टू फाइंड आउट कि जी आप वेन के नीचे स्टार्ट करेंगे और ये आर्टरी के नीचे से स्टार्ट किया होगा, तो देर इज अ विंडो टू जॉइन वेयर द आर्टरी वुड बी इन द सेंटर ऑफ दिस विंडो. ठीक है ना? जी प्रो. सो अभी ये मेरा ख्याल है कि अभी ये वही दिखाएगा आपको. तो हाँ, तो he So would just show you before the you go same. into that, एक सवाल है online. ये उसके ऊपर One of the कर लो. doctors online wants to see the hypogastric plexus. जी. This time a bit slowly. हाँ, नहीं मैं उन्हें कहिए कि हम उनको दिखाते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस को देखना चाहते हैं तो दिखा दीजिए जी. ये रोल करो ना फिंगर एओर्टा के पास से. ये जो आप देख रहे हैं वाइट स्टैंड, ये एओर्टा है, और ये ऊपर उसका नर्व भी पुल्ड अप, ये जिसके अब इंस्ट्रूमेंट से दिखा रहा है. ये कैमरा थोड़ा सा पीछे कर ले प्रॉफ, यहाँ पे तो कैमरा ज्यादा. थोड़ा सा बेटा पीछे करो. ओवरव्यू इन द मिडल ऑफ द पिक्चर. ये आईएमए है जो ये पुश कर रहा है, और ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस रूट के ऊपर रन कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. ठीक है ना? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस. चलो ऊपर दिखा दें. वेन की लाइन में दिखाओ बेटा. So now he's gonna make a window under the vein, create the retroperitoneal plane, and he will join
the groove. आप ये pulsation देख रहे हैं, this is your left colic pulsation. जी ठीक है, और ये अब वेन को दिखाएगा पहले और वेन को उठाएगा. इसको ना बेटा जेंटली, जो भी आपका असिस्ट कर रहा है ना, इसको कहो कि उठाए वेन को जेंटली, दिखा के, कैमरा दिखा के, क्योंकि वेन को ना आई ट्रीट वेन विद utmost रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है. आर्टरी इज इजी टू मैनेज. शायद ना इरफान बेटा, इरफान मियाँ, शायद दिखाओ जरा किधर है IMB आपकी. So has बेटा, somebody left the IMB IM shop इसमें? ये IMB तो ऊपर है पुत्रा, बहुत ऊपर है. नीचे इसको कहाँ लोगे? हाँ, लेकिन कहाँ लोगे? मेरा नहीं ख्याल, उधर लेने की आपको जरूरत है, क्योंकि इधर, That नहीं इधर, हाँ इधर, इस जहाँ ये आपका हाथ है ना, ये यहाँ पे, हाँ इधर बनाओगे और आई वुड टेक इट एट दिस लेवल. हाँ ठीक है ना, पीछे से हुक करो इसको. So, Prof, just for जी जी those who don't do this on a routine basis, जी जी. how do you decide if by ये देखो, following the अच्छा, vein over here, जी you're जी, going to end up under the pancreas or हाँ, above the pancreas? नहीं, वो तो अगर आप नॉर्मल एनाटॉमिकल प्लेन को फॉलो करोगे ना फ्रॉम बिलो, तो यू वुड ऑलवेज एंड अप बिहाइंड पैंक्रियाज. ये याद रखो, एनाटमी हमेशा आपको पैंक्रियाज के पीछे ले जाएगी, क्योंकि वो मतलब फेशिया जाता ही उधर है. तो जो ओरिजिन है ना वेन का, जो जो ये दिखा रहा है आपको, इसके 2 सेंटीमीटर हमेशा, ये देखें व्हाइट लाइन आपको दिखा रहे हैं ये लोग, जस्ट देयर रेट्रोपेरिटोनियम लाइट लाइन है, जस्ट देयर, जेंटली जेंटली जेंटली. इरफान, ये बच्चा, ये जो फ्रंट है ना, इसको पहले खोल लो सारे को ना, ये कमिंग बैकवर्ड, नहीं बैकवर्ड टुवर्ड द वेन जी. इसको देखो, हाँ, इसको इस लाइन को ना हुक करते हुए बैकवर्ड, हाँ इसको सारे खोलो, सो यू हैव अ बिगर रेफरेंस टू लुक एट. तो इरफान, अगर जब आप वेन की ओरिजिन को देखते हैं ना, तो always 2 centimeter lateral to the origin of the vein and anteriorly you will find the upper border of the pancreas. अब हम लोग उसको we discover pancreas by mistake, generally speaking. वो कैसे होता है कि आप उसको पुश किए जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि आप उसके पीछे चले गए हैं पैंक्रियाज के, और यू लुक एट, यूजुअली यू लुक एट रीनल वेन, क्योंकि ये मतलब ये वो आप लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप रीनल वेन में चले जाएं. अब जाते नहीं है, लेकिन यू कम अक्रॉस अ ब्लू स्ट्रक्चर गोइंग अक्रॉस द स्क्रीन, सो दैट इज योर लेफ्ट रीनल वेन, और आप यू आर टू फार बैक देन. ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप ओरिजिन ऑफ IMB को देखेंगे, तो यू ऑलवेज थिंक कि ये इसके लेटरली जो है ना 2 सेंटीमीटर अपर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज होगा. जो स्लिम लोग होंगे या जो 20 लोग नहीं हैं, उनमें तो बाजुकात आपको मीजोकोलॉन से नजर आ जाता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन से पैंक्रियाज नजर आ जाता है, एंड दिस हेल्प्स ऑफ कोर्स. अब ये देखिए कर क्या रहा है ये, ही इज जस्ट इंक्रीजिंग हिज सरफेस एरिया इन द रेट्रोपेरिटोनियम सो ही कैन जॉइन द विंडो ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्टरी. और देखें इसमें एनर्जी सोर्स वो स्मॉल वेसल नजर आ रहे हैं, जिसको ये बज कर रहा है, एंड ही सॉर्ट स्पॉट वेल्डिंग इट. ठीक है, और ये minor touches हैं, so the small vessel they don't break and bleed. All those tiny little vessels they belong down on the floor. जब आप ढूंढ रहे हो ना कि कहाँ जाना है, तो उन vessels को देखें और उन vessels को persuade करें कि वो नीचे आए फ्लोर के ऊपर. चलो, So what I'm finding is that when you're pushing this इधर fascia down, the vessels are not bleeding. हाँ जी, ये इसके मतलब जो है ना, ये his hands are more gentle and kinder than women's hand, और यही चाहिए. हाँ मतलब उसके लिए यही चाहिए. यू जस्ट को, आपको इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है, वो काफी है. तो ये इसके लिए आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जन उस व्हाइट लाइन को देखें जो इसके ऊपर है, मतलब जन इधर व्हाइट लाइन है, ये टॉप एंड के ऊपर, इसको, और उस व्हाइट लाइन को परसुएट कीजिए कि वो नीचे आ जाए. चलो जी, अब इसको ओवरव्यू देखो बच्चा. ये ऊपर से जो दिखा रहा है ना आपको, जो इरफान, योर असिस्टेंट इज होल्डिंग समथिंग एट द टॉप एंड ही वुड परफोरेट, सो लेट हिम गो. या देयर एग्जैक्टली. चलो, अब ये देखें, ये एनर्जी सोर्स है, ब्लंट डिसेक्शन है, एंड ही वुड डू द सेम. अब इसने चेंज इसलिए किया है, आई कैन ऑलमोस्ट रीड हिज माइंड, क्योंकि हुक जो है ना, इट इज बिट डेंजरस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कि अगर वो नीचे उसके रीनल वेन है या गोनेडल है और हुक उसमें फंस गया या उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी. सो ही इज यूजिंग द ब्लंट टूल नाउ, but he's using the same operation, just gentle touching the top end of the white. So tell us what the assistance is doing right now. I mean, the view is a very nice view. So I'm sure it's not just the surgeon who's giving you this view. There must be something the assistant is doing at this point. Of course, the assistant at the moment is just praying कि उसको कोई काम ना पकड़ा दिया जाए. No, the assistant का इस वक्त रोल कम इसलिए है कि he is controlling the exposure
with his left hand, the surgeon is. ये important है क्योंकि left hand में ना IMV है, as you can see, और ये जो tension है ना vein के ऊपर, if you are not gentle enough, you can actually sometime break the vein. मतलब ये disaster है अगर ये हो जाए, और खासकर robotic surgery में जिसमें haptic feedback नहीं होती है हमें, it is a risk which is far bigger than laparoscopy because you can't feel anything. और आप उसको लेफ्ट हैंड को, रोबोटिक लेफ्ट हैंड को वेन के नीचे जरा जरा जल्दी तेज मूव करेंगे तो इट कैन ब्रेक इट. आई हैव सीन इट हैपन इन लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस. तो इसीलिए इस वक्त असिस्टेंट का रोल कम है, लेकिन जब ये जाहिर है कि एक्सपोजर के लिए आएगा तो उसमें इसको जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ आ जाओ इरफान. हाँ, अब इसको ये देखें, ये असिस्टेंट कोशिश कर रहा है कि मतलब जो है ना कि आके वो इसका अच्छा इस ट्रैक्शन का एक रिस्क है. लेफ्ट कॉलेज जो है ना ये रिप, इट गेट रिप हेयर. इसको आर्टरी के नीचे जाना है इरफान मियाँ. आर्टरी से उठवा दें ऐसे, यूजुअली गॉज रखवा दें. गॉज ना छोटा सा हाफ वर्किंग गॉज पीसेस रखें. So now he will put a gauze behind the IMA and he can join the both windows that he's created. ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है inferior mesenteric artery dissection का, जो इरफान आपको आज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, and is doing it beautifully. So, Prof, a basic question: how important is the role of a camera person, and what are the special? हाँ, नहीं इसको बेटा नहीं इरफान मियाँ, गॉज करो बेटा, आर्टरी के पीछे डालो ताकि आप इमेजिन करो विंडो कहाँ होगी. ये इधर, ठीक है, नीचे बेस पे. कैमरा पर्सन का रोल वफाद मियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. कैमरा पर्सन ऑब्वियसली इन लेप्रोस्कोपी इज योर आईज, और दे आर लकी कि जो कैमरा पर्सन इस वक्त इनके पास है, शी इज वेरी गुड एंड शी इज शोइंग देम व्हाट दे वांट टू सी, और विदाउट मच मतलब जनरल डायरेक्शन के जी हमें ये दिखाओ, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स ऑपरेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसी प्रैक्टिस को शुरू करें तो आप कंसिस्टेंटली एक ही टीम को रखें अपने साथ, एनेस्थीसिया वाले, फेलोज, कैमरा पर्सन, सो दे ऑल गेट टू नो कि उनको क्या करना है, मतलब व्हाट दे वांट टू सी. क्योंकि जब आप इस लेप्रोस्कोपी में अगर आपका एफर्ट बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन पास करने पे लगा रहे और लोगों को ये कहने में लगा रहे कि मुझे ये देखना है, मुझे देखना है, दे डोंट अंडरस्टैंड यू, यू विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. और फिर जब बंदा जब फ्रस्ट्रेट होता है तो देन यू मेक बैड डिसीजंस, यू मेक मिस्टेक्स. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली वही टीम रखें अपने साथ. ब्लीडिंग होगी, इसको रोको, ऊपर जो ऊपर ब्लड है बच्चा, इसको On. वॉच लेफ्ट हैंड जो है ना, ये इस लेफ्ट हैंड अंदर जा रहा है, वापस आओ जेंटली, इसको इधर रखो. अब वर्क विद दिस. हाँ अच्छा प्रॉफ, तो फिर एक सवाल उठता है यहाँ पे. जी सिर्फ जो एक ही सवाल. हर जगह पे होगा. तो advantages of doing this laparoscopic over say open, क्योंकि open is probably quicker, you probably won't have the incision is probably a bit bigger. लेकिन अगर oncological benefit not probably, definitely it would be a bigger incision. so apart from the cosmesis, what are the advantages? नहीं देखो, हाँ बिल्कुल, ये सारी डिबेट जो है ना, एज यू नो दिस, और ये रेलेवेंट क्वेश्चन है उन लोगों के पर्सपेक्टिव से कि जो ओपन सर्जरी स्टिल अभी करना चाहते हैं, दे वांट टू जस्टिफाई इट, व्हिच इज फेयर, यू नो. इसमें इरफान मियां ये वेन इसकी रिप हो जाएगी, ये जो है ना, ये जो ट्रैक्शन है इससे वेन जाती है लेफ्ट कॉलिक. अब आप आर्टरी पे फोकस करें और यहाँ विंडो बनाए, बस ये देखो ना, ये प्लेक्सिस ऊपर जा रहा है ना, इसको नीचे टीज करो. ये सामने वाला जो है, नहीं सामने आर्टरी के पीछे बचा, ये वाला जो है ना नीचे, इसको हुक करो और इसको नीचे टीज करके लाओ, यहाँ आपकी विंडो बनेगी. सो नंबर ऑफ रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैव नाउ बियॉन्ड डाउट शोन कि शॉर्ट टर्म आउटकम जो है ना वो बेहतर है लेप्रोस्कोपी से. दिस इज नॉट क्वेश्चन एट ऑल. शॉर्ट टर्म आउटकम मीन कि पेन कम है, रिकवरी क्विकर है, डिस्चार्ज जल्दी होता है पेशेंट, ठीक है. और जनरली जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी ये ऑन्कोलॉजिकली जो है ना इसको बेहतर होना चाहिए तब हम मानेंगे, जनरली यही कहते हैं ना. आप रोबोट के लिए भी सब यही कह रहे हैं कि जब तक आप इसको ऑन्कोलॉजिकल एडवांटेज नहीं दिखाएंगे तो फायदा क्या हुआ. तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. जो कैंसर है ना, कैंसर की बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होल्ड्स द की फॉर एवरीथिंग इन कैंसर, ठीक है. आपको अगर बैड बायोलॉजी है, बैड बायोलॉजी है, तो आप उसको भले रोबोटिकली करें, ओपन करें, बेशक उसको आप लेप्रोस्कोपिकली करें, उससे चेंज नहीं होना, ठीक है ना. आपके हाथ में, सर्जन के हाथ में बड़ी लिमिटेड चीजें हैं. आपको मैं बताऊं, हम बायोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज द बायोलॉजी ऑफ द कैंसर. हाँ, जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं ना वो ये है कि हम मॉर्बिडिटी ना दें अपने मरीज को, हम रेडिकल रिसेक्शन करें कि मार्जिन क्लियर हो,
और उनकी कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो लेप्रोस्कोपी ने क्या किया है, आप ये परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है जो ये लड़का आज दे रहा है हमें, कि लेप्रोस्कोपी ने ये किया है कि इट हैज मेड पॉसिबल, ये बेटा ये जो हुक था ना, ये नर्व जिसको हुक कर रहे हो, इसको नीचे से ऊपर हुक करो, ये गिरेगी। हाँ, ये दिस इज होल्डिंग यू नीचे ना, ग्रूव में आके ये लगती सारी शुरू में नर्व्स हैं कि ऊपर जा रही है, दिस माइट ब्लीड, ये लिम्फेटिक्स है जो। कैमरा थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लें प्रॉप, जो डायसेक्ट वो थोड़ा सा कैमरा साइड पे हो रहा है। सेंट्रलाइज कर दें। अच्छा जी, अब ठीक है, ना करिए ना करिए, ये ब्लीड करेगा। पीछे से जाके पहले विंडो बना ले, पीछे अवे फ्रॉम इट। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बचा, पीछे ना ये जो एरिया, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो पीछे जो है ना, इसको गोइंग अवे ड्रॉप करो ना, गोइंग अवे, हुक अवे फ्रॉम द आर्टरी। देखा, ये लिम्फेटिक्स था, कोई बात नहीं, टेक दिस देयर, गॉज ले लो, और वो हाँ ये राइट एंगल लेके रख के दिखाओ ना, तुम्हें पता चल जाएगा योर विंडो इज ऑलमोस्ट देयर। तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इसको ले लो इससे, हाँ कि जो बायोलॉजी है ना वो तो चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए किसी भी ट्रायल में अब तक लोग सर्वाइवल बेनिफिट या ऑन्कोलॉजिकल, ऊपर से बेटा फ्रंट पे आप क्लियर करना, फ्रंट जो है ना, फ्रंट ये जो स्टफ है आर्टरी के साथ से शुरू कर, यहाँ से बस ये लाइन है, यहाँ विंडो बनेगी आपकी, ठीक है। So the वो vein is, जी हाँ, जी, वेन इज हेल्ड अप एज अ कर्टन अंडर हिज लेफ्ट हैंड, नीचे गॉज है, और अब ये यहाँ विंडो बना रहा है जस्ट अबव द वेसल, ताकि एक सिंगल वेसल होगा जिसको एक क्लिप करेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन अराउंड इट। so तो the nerve is lower down, isn't it, हाँ, Prof? न फ्लोर पे है, जिसको हुक वो टेंट अप हुई थी, जिसको आप देख रहे थे ना, ये जो पीछे से हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्स था, यहाँ विंडो बनेगी इसकी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको क्लीन कर लो ऊपर से फ्रंट पे, अभी नीचे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है ये। लेफ्ट लेफ्ट कोलिक ब्रांच जो है वो हाँ जी, कहाँ हाँ, से वो जो इसका लेफ्ट हैंड है ना, उसमें है लेफ्ट कॉलिन, ये इसको यहाँ नीचे लाओ ऊपर, इसको बर्न करना, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। सो जो इस IMV की जो लाइन है ना, इसमें ही लेफ्ट कॉलिक आर्टरी जो है रन करती है एसोसिएटेड विद दिस, मतलब जो इसका लेफ्ट हैंड का कर्टन है ना, अब ये दिखाएगा आपको थोड़ी देर में, ऊपर जाना बचा, वो लिम्फेटिक देख रहा है, हाँ इसको ले ले, ये लिम्फ नोड है और लिम्फेटिक टिश्यू है, इसको मतलब जरा यहाँ विंडो बना ले, इनसे राइट एंगल मांग लेना और मेक अ विंडो हेयर, सो मेक अ विंडो जस्ट नेक्स्ट टू द आर्टरी, और उसके पीछे नर्व जो है ना वो टेंटेड अप है, ये फ्लो ऊपर जा, यहाँ जा, ये यहाँ विंडो होगी तुम्हारी, ये लो, चलो भाई क्लिप दो इसको, So Prof, इसको स्ट्रेच नहीं where we करना। left, there's a question. So how देखो do we? अब ये देखो, फ्लोर के ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो टेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये जाता रूट के ऊपर और इस नीचे स्लाइड करो, नीचे स्लाइड करो, यहाँ बस, ठीक है, चलो, एंड यू कैन सी इट्स अबाउट अ सेंटीमीटर और 2 फ्रॉम द एओर्टा, ठीक है, मैग्नीफाइड व्यू है, और यहाँ पे लेगा, इसके पीछे जब ये आर्टरी को ले लेगा, आप देखोगे इसके पीछे टिश्यू है जिसमें नर्व जो है ना वो टेंट अप हुई है ऊपर की तरफ, तो ही वुड ड्रॉप ऑल ऑफ दैट, इज डन इट वेरी नाइसली। जी फरमाएं फाद मियां। So just taking forward the discussion, how do we justify robotics in हाँ जी, field of colorectal surgery? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एनीथिंग। हाँ। ठीक है, अब होता क्या है, वो इलाज लगवा रहे, उतार दो, वापस ले आ, बड़ा वाला लगा ले, हाँ बड़ा वाला ले। सो नहीं बचा, देखो रोबोटिक्स जो है ना, सारी इसमें सारी डिस्कशन है क्या, जो लेप्रोस्कोपी है, 3D लेप्रोस्कोपी है, it has allowed us to see the anatomy that much clearly and it has allowed us to become much more precise anatomical surgeon, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशन आपने देख ली है कि स्ट्रेट स्टिक है, इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि यहाँ लगा ले, बस लगा दो, लॉक इट हेयर एंड देन यू कैन कट इट। अच्छा, इसमें अब हार्मोनिक या एनर्जी सोर्स नहीं यूज करनी, कोल्ड सीजर यूज करनी है, क्योंकि वरना ये क्लिप्स जो है ना ये बर्न होके खुल जाते हैं, तो जस्ट कट स्लाइटली प्रिसाइसली। तो रोबोटिक सर्जरी जो है, अब स्लो कर ले, अब उसको ना वो पकड़ ले, वो जो एनर्जी सोर्स है ना उससे, ये लिम्फेटिक टिश्यू है पीछे जिसको आपको स्क्वीज करके बर्न करना है और ये नर्व ड्रॉप हो जाएगी। सो रोबोटिक सर्जरी का जो हमारी स्पेशलिटी में जो इंडिकेशन है और जो मार्जिनल एडवांटेज है, जो मतलब ओवर द इयर्स जो हमने भी मतलब जरा करते हुए देखा है, वो रेक्टल कैंसर सर्जरी में है, और इन पर्टिकुलरली वो सब सेट ऑफ पेशेंट्स कि जिसमें आपको राइट पेल्विक साइड वॉल की एक्सेस जो है ना वो डिफिकल्ट होती है, मेल, इसको सारे टिश्यू को ना ऊपर लो बेटा, टॉप पे,
इस वाले को, दिस वन, गो डाउन डाउन देयर, अब ये ड्रॉप होगा नीचे, बस ठीक है, बर्न कर दे, अब ये नीचे एकदम से ड्रॉप हो जाएगा कर्टन, बर्न एंड देन कट, एंड द नर्व्स, देयर यू गो, सी, देखा आपने कि उसने कितना खूबसूरती से ये आर्टरी को डायसेक्ट किया है विदाउट पुलिंग एंड विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, सो वेरी नाइसली डन, एक्सीलेंट। अब ये एयर है सामने, he will work with this air now, right in front of him there is a air that he would work with. So वो सब सेट ऑफ पेशेंट कौन से हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है? रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है मेल, ओबीस और मिड टू लो रेक्टल कैंसर, पोस्ट कीमोथेरेपी रेक्टम्स, ठीक है, और जिसमें आप लो ट्यूमर कह लें, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ट्यूमर कह लें, कि जिसमें आप नीचे लोअर एंड लोअर जा सकते हैं, तो प्रिसाइसली आप एडवांटेज दिखा सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज अब तक रोबोटिक सर्जरी ने दिखाए किस चीज़ के हैं? लोगों ने दिखाया कि कन्वर्जन कम है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी। लोगों ने ये दिखाया कि जो सबसेट ऑफ दोज वेरी पेशेंट, बल्कि हमारा जो ग्रुप है, हमने हाई रिस्क पब्लिकेशन, हाई रिस्क पेशेंट के ऊपर लैब वर्सेस रोबोटिक पब्लिकेशन, जमील रोट दैट पेपर, ही वुड बी हियर एक्चुअली टुडे और टुमारो, तो वो उस वक्त हमारा फेलो होता था, तो उसने 100 केसेस को कंपेयर किया, तो हमारे हाथों में जो कन्वर्जन थी वो कम थी, हमारे हाथों में स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन रेट ज़्यादा था, और हमारे हाथों में कॉम्प्लिकेशन रिक्वायरिंग लेंथ ऑफ स्टे वाज बेटर इन रोबोटिक आर्म। और ये जनरली अब बहुत से सेंटर्स ने अब आस्ता आस्ता इसको दिखाना शुरू कर दिया है कि मॉर्बिडिटी कम है क्योंकि सर्जरी आप प्रिसाइज करते हो। बहुत से ग्रुप्स ने यूरोजेनिटल फंक्शन में एडवांटेज डेफिनेटली दिखाया है कंपेयर टू लेप्रोस्कोपी, क्योंकि उसके पीछे आइडिया सिंपल है, क्योंकि आप देख अच्छा सकते हैं, योर हैंड्स आल्सो मूव विद मच मोर फ्रीडम इन अ नैरो पेल्विस, तो उसमें जाहिर है कि एडवांटेज है नर्व प्रिजर्वेशन का। और अब कुछ सेंटर्स जो हैं, वेरी रिसेंटली एक रियल ट्रायल पब्लिश हुआ है शंघाई से, कि विच इज क्लेमिंग कि जी जो ऑन्कोलॉजिकल शॉर्ट टर्म एडवांटेज है, स्पेसिमेन क्वालिटी कह लीजिए, कंप्लीटनेस ऑफ टीएमई कह लें, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रोबोट में बेहतर हैं। एक कोरियन ग्रुप ने पब्लिश किया था लाइक विद लाइक डेटा, सोहन किम ने लैब वर्सेस रोबोटिक डीसीआर में कुछ साल पहले, शोइंग सर्वाइवल एडवांटेज इन रोबोटिक आर्म। सो गो, ये इंडिविजुअल सीरीज हैं, लेकिन ये सीरीज हैं विच इज वर्थ लुकिंग इनटू। तो ये तो हो गया क्लिनिकल बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग ट्रेनिंग में है, तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज, ये पैंक्रियाज है, देख लीजिए सामने दिखा रहा है आपको पैंक्रियाज, ये इरफान मियाँ, ये पैंक्रियाज ही है ना? नहीं नहीं, वो दूसरे इरफान से पूछ रहा हूँ जिसको पैंक्रियाज को ये पहचान है। हाँ जी, लग रहा है सर, थोड़ा सा क्योंकि याद आ रहा है इसका शक्ल। याद आ रहा है ना, तो मैंने कहा बता दे इसको। अच्छा, आप रोक, इसको देख बता कि आप इसको लेना कहाँ पे है इरफान? आई वुड गो सी, ये जो वेसल ऊपर जा रहा है ना, आई एम वरीड अबाउट दिस वेसल गोइंग अप, ये जो है ना, ये इसके साथ कंपनिंग आर्टरी ना हो, तो जहां आपने पकड़ा हुआ है इस लेवल पे डिवाइड कर लो तो बेहतर है। हाँ, इस पे मतलब यार, यहाँ फिर ऊपर जाओगे तो फिर ऊपर भी वैसे जा ही सकते हो, क्योंकि ये जा रहा है, आर्टरी तो नहीं है ना साथ को पल्सेट कर रही, तो बस इधर फिर विंडो बनाओ। हाँ हाँ, इधर ले ले, इधर। इसमें हाई रिलीज ऑफ द वेन जो है ना, ये क्रूशियल है फॉर मेजेंटेरिक लेंथनिंग, कि जो नीचे लेंथ आपको चाहिए ना, वो वेन से आती है, तो इसीलिए इसको जब ये हाई लेगा, अब इधर ना जाना, हाँ अब पैंक्रियाज में विंडो बना ले पहले बिफोर यू टेक द वेन, ठीक है ना। स्लोली स्लोली स्लोली, ये ऊपर अपर बॉर्डर ये ब्लीड करेगा, ज्यादा पुश नहीं करना। अच्छा, अब नहीं, इधर नहीं, अब ऐसे करो ना, इसको उठाओ लेफ्ट हैंड को, और इसको पेरिटोनियम, हाँ इस तरह, इस तरह। अब ये साइड से दिखाएगी आपको, और ये आपने इसको ना होल्ड करके ना, ये फ्रंट लेयर जो है ना, इसको हाँ टीज करके बर्न करो, ये। So, Prof, इसकी लिमिटेशन just थोड़ी move. सी है, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, जो ये जो क्या कहते होते हैं इसको, 3D को ना, कि आप इसको अप एंड डाउन ही सिर्फ दिखा सकते हैं, 30 साइड से दिखाना जरा ऑकवर्डली चैलेंजिंग होता है, तो लेकिन शी इज डूइंग अ गुड जॉब एक्चुअली। ये अब इसका ये अपर बॉर्डर है, ये खोलेगा इसको स्लोली, थोड़ा सा कैमरा पीछे बचा रखो। हाँ, ये जो दूसरा मतलब फ्लाई बाय जो जा रहा है, इसको भी कंट्रोल करो, जो असिस्टेंट का हैंड है ना, ठीक है ना, ऐसे एक्सपोजर ये है। अच्छा, अब एक मिनट, स्लो ना, स्लो ना, स्लो ना, देखो पैंक्रियाज किधर है बतरा, ना 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 गोले, नीचे देखना, हाँ ये है। अब इसका ऊपर वाला बॉर्डर जहाँ पे कर रहे हो ना काम, इसी को इसी लाइन में आगे तक जाते जाओ, विगल 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 द फ्रंट लेयर ओनली, ठीक है जी। जी आदमिया क्या कह रहे हैं? So, there's a question, Prof, in people who are not using a robot, जी। surgeons who are using laparoscope,
And if you come across an obese patient, in a high BMI, जी जी so what are the tips and tricks, how to approach that case? one of the best tip and trick is to send this patient to your colleague. Yes, probably. This comes with experience. The older you get, the more you realize this is a very important skill in life to have. When you're young, you are a macho man or macho woman and you want to show everybody I can do everything. Yes, absolutely. नहीं नहीं देखो उसके लिए रोबोट के आने से पहले भी 20 लोगों में सर्जरी हो रही थी और अच्छी सर्जरी हो रही थी और उनके आउटकम अच्छे थे, नो डाउट। मैं उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक रोबोट नहीं आया था तो 20 लोगों की मतलब जिंदगी में मतलब जो है ना कोई कमी थी, ऐसा नहीं है। गो कि इसने जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा आसान जरूर कर दिया है, ठीक है। और इस सारे गेम में अगर आप अभी तक इस ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हो तो आप रियलाइज करोगे एक चीज बहुत ऑब्वियस है कि इट्स टू डू विद एक्सपोजर। इफ यू कैन एक्सपोज थिंग्स देन यू कैन डू इट, और यही की है जो आप लोग पूछते हैं ना कि उसका टिप एंड ट्रिक बताएं, इसका टिप एंड ट्रिक, उसका सबका टिप एंड ट्रिक जो है ना वो एक्सपोजर है और एनाटमी है। देखो होमोसैपियन जो है ना, जिस 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 कल्ट ऑफ एनिमल दैट वी बिलोंग इन, इसकी जो एनाटमी है वो तकरीबन 250 साल से तो 250,000 ईयर से ना चेंज तो हुई नहीं है, ठीक है। और ये इतनी जल्दी ये चेंज होनी भी नहीं है, मेरा अपना ख्याल है। तो अगर जो बच्चे बैठे हुए एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम गुड सर्जन्स और उनका ख्याल है कि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक वुड डू ऑल द मैजिक, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपी जो है ना, दे आर मेड टूल्स, दे आर नॉट द रिलीजन। रिलीजन रियली इज एनाटमी फॉर सर्जन्स। कि जिन लोगों को एनाटॉमिकल सर्जरी आती है ना, दे डू इट नाइसली रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर टूल यू गिव देम इन द हैंड्स। तो सर्जरी करते हुए जो सबसे पहला क्रूशल स्टेप है वो है एनाटमी को अप्रिशिएट करना, एनाटमी सीखना और एनाटमी को रिस्पेक्ट करना। देखो इसने अभी तक जो जितनी भी सर्जरी की है, ही इज ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ डूइंग इट सो डेलिकेटली कि ही इज सेपरेटिंग एम्ब्रियोलॉजी वन लेयर फ्रॉम अनदर। ही डजंट हैव टू कट अक्रॉस एनीथिंग इफ ही इज ट्रूली इन अ करेक्ट लेयर्स, ठीक है ना। तो ओबीस लोगों में भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद परहैप्स पुटिंग एक्स्ट्रा हैंड्स, एक्स्ट्रा पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग गॉज। अब वेन ले लो बच्चा, अब वेन ले लो क्योंकि अब वेन टेंशन में है। यहाँ इधर इधर अगर ये कर सकते हो सेफली तो ये कर लो। ये गॉज तो रख दी है उधर, ये वाली सर जी ऊपर 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 है, वाइट लाइन ऊपर है, इधर है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये जब So, whenever you hit it on the head then it moves. so Prof, in continuation of that, what is your practice? Do you take artery and then go जी जी do TME, or do you want जी to नहीं go नहीं and नहीं नहीं mobilize the vein first नहीं नहीं and नहीं नहीं नहीं, जो जो आप देख रहे हैं ना, जी यही हमारी प्रैक्टिस है। so artery, vein, mobilize the splenic fraction and जी then do the जी business end. जी 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 बिल्कुल। मतलब जो आप देख रहे हैं यही हमारी प्रैक्टिस है, एक्सेप्ट कि जो ये दिखा रहा है वो हमारी प्रैक्टिस से बेहतर दिखा रहा है। हाँ जी, there no doubt about that हाँ जी, he's a accomplished surgeon, mashallah. नहीं नहीं बिल्कुल। So now I would take the vein here. This is a window. Prof, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि पूछिए इरफान मियां। back in 2010, 11 में जब कोरेक्टर में था, उस वक्त लेप्रोस्कोपी भी शुरू हुई रही थी, कोरेक्टर जी। in the places where I worked. तो जॉन मैकफी नाम आपने सुना होगा, क्लेयर जी जी मैकनॉट, जी जी बिल्कुल। हाँ मार्सेल गट, वो लोग lateral to medial जी mobilization जी बड़ा जी जी करते थे। हाँ But बिल्कुल। today मैं देख रहा हूँ आप लोग medial to lateral कर हाँ रहे हैं। उसके So what are the पीछे advantages and disadvantages here? उसके पीछे जो जो इनिशियली जो, बस इसको ख्याल से रखना बेटा, इस लेफ्ट हैंड को ना देख के रखना। अच्छा इरफान, इसमें ये था कि जो जब लेप्रोस्कोपी आई ना, तो दिस वाज अ न्यू एनाटमी, मीडियल टू लैटरल जाना। ये एनाटमी हमने पहले देखी नहीं थी। आपने देखा है कोलोरेक्टल सर्जरी कन्वेंशनली लेट, ख्याल से जगह छोड़ के थोड़ी सी यहाँ क्लिप करो। तो उसमें जो ये नई एनाटमी थी, ये नई एक चीज थी जो लोग फेमिलियर नहीं थे, और दे थॉट कि जी एक तो हम पहले अपने हाथों वाला जो इंसिजन है उसको गिव अप कर रहे हैं, फिर अब टूल माइक्रोस्कोप मतलब छोटे टूल्स ले रहे हैं, फिर एक नई एनाटमी आ जाएगी। सो दे वर टू, सो लॉट ऑफ सर्जन्स बिकम कंफर्टेबल डूइंग लैटरल टू मीडियल, क्योंकि वो एनाटमी उनको फेमिलियर लगती थी, क्योंकि ओपन सर्जरी में वो लैटरल टू मीडियल आते थे और वो मतलब उनको आसान लगता था वो करना। और दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल डिड दैट एट द बिगिनिंग, एंड सम
do that still, मतलब जो ना इसलिए कि वो this is a like what you call the devil you know. अब प्रॉब्लम ये हुआ कि विद टाइम ऐसा हुआ है कि अब लोगों ने एनाटॉमी सीख ली है मीडियल टू लैटरल जाते हुए, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न, और थोड़े से सटल एडवांटेजेस हैं दोनों टेक्निक्स के। इस टेक्निक का सटल एडवांटेज ये है कि जब आप देखें इसने सारा मीडियल टू लैटरल कर लिया और कोलॉन जो है इट इज बीन हंग अप, ठीक है ना, द कर्टन इज बीन हंग अप, सो नथिंग इज फॉलिंग ऑन हिज फेस। लैटरली जब आप कभी मोबिलाइज करते हैं तो फिर उसके बाद ये बहुत ज्यादा मोबाइल हो जाता है स्पेसिमेन, और इसको मैनेज करना मुश्किल होता है बाजुकात। इसको यार छोड़ दो बच्चा, ये असिस्टेंट को कहो कि हाथ वापस ले आए, क्योंकि ये अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब क्या करना है, चलो But with medial to lateral में when you take pedicle first, जी। it's more oncological. हाँ, ये वो मैं नेक्स्ट चीज ये कहने लगा था कि एक Most बिल्कुल आमिर भाई important सही thing कह रहे हैं, is एग्जैक्टली दिस इज अ because टर्नबल प्रिंसिपल, मतलब जो है ना जिसमें वो कहते हैं कि नो टच टेक्निक, कि आप पहले गए और आपने पेडिकल को अर्लियर ऑन ले लिया बजाय इसके कि आप ट्यूमर को मैनिपुलेट करते रहे या स्पेसिमेन को मैनिपुलेट करते रहे। तो देयर इज एन एडवांटेज ऑफ दैट। when are you going to stop doing मीडियल टू लैटरल, medial to हाँ lateral? हाँ जी What are बिल्कुल। your landmarks? So if you look at it, what he's doing now is he's trying to bring the white line down. तो ये जो छोटे छोटे vessels है ना, ये जो टॉप के ऊपर हैं, ये he's bringing them down. अब होता क्या है कि यहाँ तो आप back of the colon देखना शुरू कर दें, medial to lateral जाए, he would see the back of the colon, ठीक है। और दूसरा हाल ये है कि जब ये आपके जो छोटे vessels है ना, ये they stop moving that easily and they stop breaking, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि this is the lateral limit of this retroperitoneal fascia. जब तक ये इसको मूव करके नीचे ला सकता है, द मोर यू डू इट फ्रॉम दिस साइड द इजियर हिज लैटरल वर्क वुड बिकम। ये ऊपर से आओ बेटा, इधर से आ, इधर से जाएगा नीचे। सो ये जनरली देखें आप, ये वाइट लाइन को नीचे ला रहा है, और ये जो बैक ऑफ मीजोकोलोन आपको नजर आ रही है ना, दिस हैज टू बी इंटैक्ट, इट डजंट हैव टू बी ब्रोकन, और इसको शाइन इस पे होना चाहिए, जिसको मीजोकॉलिक एक्सिजन बोलते हैं, जिसमें आजकल क्रोनिक सर्जरी में बहुत डिबेट थी कि सीएमई लोगों ने समझा कि शायद ये कोई नया ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन इज द ऑन्कोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफ कैंसर सर्जरी, यू नो, वेयर यू सेपरेट वन लेयर फ्रॉम अनदर। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिए सेंट्रल वेस्कुलर लाइगेशन से, वो एक डिफरेंट चीज है। CME is a standard which everybody should be doing, which is respecting embryology, bringing one layer down from another. ऊपर है बच्चा, इधर ऊपर थोड़ा सा ऊपर। अब ये देखिए अमर भाई, probably is getting toward the back of the colon. You just saw just glimpse of it, कि ये अब इसको नीचे लाएगा और you see it कि इसके back of the colon पे आने वाला है। I guess we have got a couple of questions, do we? तो एक क्वेश्चन आया, तो मैं तो थोड़ा सा आगे पूछना चाहता जब आप जी जी। डिसाइड करेंगे, बट द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हैड अ सिनेरियो वेयर the middle colic vessels have stopped you from doing a tension-free anastomosis? And what did you do in that situation? नहीं मिडिल कॉलिक तो बच्चा नहीं करेंगे ना। मिडिल कॉलिक तो मतलब मिडिल कॉलिक वेसल जो है ना उसकी, अब ये देखिए, सॉरी बिफोर आई गो ऑन टू दिस, अब ये लेटरल लिमिट है, देख रहे हैं आप अमीर भाई, ये आपने क्वेश्चन पूछा था टू फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस आई नो, लेकिन अब ये देख लीजिए कि अब यहाँ प्लेन फ्यूज हो गए हैं, अब नथिंग इज मूविंग, सो दिस इज द लिमिट ऑफ हिज लेटरल मोबिलाइजेशन फ्रॉम हियर, मीडियल टू लेटरल मोबिलाइजेशन। कमिंग बैक टू मिडिल कॉलिक्स से ज्यादा जो है ना, ये मतलब फर्ज कीजिए कि क्वेश्चन कुड बी कि जब आपको आमिर भाई ने मुझसे बैठे हुए ऐसे ही सवाल किया था, विल टॉक मोर अबाउट इट, कि लेंथनिंग प्रोसीजर्स जो हैं, कि अगर आपकी कोलॉन की रीच नहीं है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वेरी रेयरली आई मस्ट कन्फेस दिस, के मतलब हैंडफुल ऑफ केसेस, 5 या 6 केसेस हैं जो अपने करियर में मुझे याद हैं, कि जिसमें मुझे मिडिल कॉलिक लेके हेपेटिक फ्रैक्चर मोबिलाइज करके और कोलॉन को फ्रंट टू बैक टर्न करके एनास्टोमोसिस करना पड़ा, ठीक है ना। तो जनरली वो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होता है जनरली कि अगर आप जो कॉमन चीजें कॉमन होती है ना, कॉमन चीजें ये है कि टेक्निकल एरर सर्जन्स का, कि अगर आपने मार्जिनल को स्प्लेनिक फ्रैक्चर मोबिलाइज करते हुए यू नॉक्ड ऑफ द मार्जिनल, अब वो स्प्लेनिक फ्रैक्चर जो है ना आपका इस्केमिक हो गया है, तो अब आपको डेफिनेटली मिडिल कॉलिक की तरफ आना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली ट्रांसवर्स कोलॉन मोबिलाइज करनी पड़ेगी और उसमें आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पैंक्रियाज के लेवल पे रहते हैं, आप जो सर्जरी ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये वाली सर्जरी करते हैं, तो ये बाय लार्ज जामुन से कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती और कभी नहीं कहनी चाहिए लाइव सर्जरी में, लेकिन जनरली दिस इज नेवर अ प्रॉब्लम कि जी वो प्रॉब्लम मतलब मिडिल कॉलिक को आपको ना लेना पड़ेगा, जनरली नहीं।
I think you are talking about toupees and जी 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 Turnbull's operation and Absolutely. defined operation. हाँ जी बिल्कुल वो वो भी वो rare situations हैं. बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब, very very rarely you have to do it. अच्छा इसमें जो एनाटॉमिकल वो है, जब ये देखें इसको उठाता है, नहीं नहीं बच्चा उधर किधर जा रहे हो, ये आपने मतलब फैशन के अंदाज में इसको खड़ा कर दिया. चले, यहाँ इसने गॉज रखा था, आपको याद होगा, ही इज हेडिंग टुवर्ड दैट गॉज. गॉज दो चीजें करता है, एक तो ये आपको बताता है कि जाना कहाँ है, दूसरा इट कीप्स द स्मॉल बाउल अवे. दिस इज द गॉज. और इसने सारा ये डिसेक्शन जो है ये वहां, अब ये इसको और रुको जरा थोड़ी देर के रुको. देखो जंक्शन क्या है, येलो और व्हाइट का. ऊपर जाओ ना, ऊपर यहाँ ये दिखाओ ना जंक्शन जो है, ये मीडियल 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 बच्चा मीडियल, ये ना ना पुत्रा, येलो किधर है, हुक के नीचे है ना, ये लाइन है. जहां येलो मिलती है व्हाइट को, दैट्स एनाटॉमिकल लेयर, दैट्स वेयर ही इज गोइंग टू स्की. ही इज गोना यूज हिज इंस्ट्रूमेंट एज इफ ही स्कीइंग ओवर द टॉप. करो जाओ, वन लेयर. So there's a question for Dr. Amir from Dr. Masood. Thank That God for when that. are you bringing robot to SKM, I guess? This is a question from you, We are planted by you. I know. Medial colon को follow करो बच्चा. I think आमिर भाई बताएं. we had multiple meetings, me and Amjad have been working on this. I think we presented first feasibility report नहीं, about 11 years ago. नहीं यहाँ नहीं आमिर. Sorry. And we are Irfan. recently had Assistant will tear something. Don't do it. Yeah. So ऊपर जाओ, ऊपर इसको लाओ. all इसके about the नीचे. funds. जी. When we get the funds, we will get the robot. Inshallah. इंशाल्लाह कहना बहुत जरूरी है फाद मियां. That's a big inshallah. Amjad, my question is you are doing, Irfan is doing splenic flexure mobilization. जी जी जी. Is it always necessary to do splenic नहीं. flexure mobilization? ये वो आमिर भाई आपको याद होगा कि किसी, मुझे तो अभी बहुत याद नहीं रहा पर आखिरी इम्तहान कब दिया था, लेकिन इम्तहानों में कुछ सवाल ऐसे होते थे, ऑलवेज डू इट, उसका आंसर हमेशा फॉल्स ही होता था. ठीक है ना, जो ये अगर आपसे कोई पूछे कि जी आप हमेशा करते हैं, तो आंसर इसका ये है कि हमेशा, जाहिर है कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन आपकी बाय एंड लार्ज प्रैक्टिस क्या है. वी एक्चुअली लुक्ड एट इट, हमारे डेटा में ना 93% जो रेक्टल डिसेक्शन जब हमने की, तो 93% ऑफ द टाइम वी मोबिलाइज द फ्लेक्चर. ठीक है ना, हमारी सीरीज में पोर्ट्समouth जब मैं था उस साल की. तो ये जो टीएमई है खासकर ना, उसमें बाय एंड लार्ज जो एक कहते हैं ना कि जो गिवन है वो यही है कि आप इसको मोबिलाइज आपको करना पड़ेगा. खासकर अगर आपने हाई टाई लिया है जिस तरह इसने लिया है, तो वो जो सिग्मॉइड का जो लूप है जो आर्टरी के नीचे है, वो तो हमारे लिए यूजलेस है ना, दैट इज गोइंग इन द बकेट. ठीक है, तो इसको रिसेंडिंग कोलन को मोबिलाइज करना पड़ेगा. ये जो नोशन था ना, जो पहले जिसकी वजह से ये सारा डिबेट शुरू हुई थी कि जी आपको सिग्मॉइड जो है वो हाई प्रेशर जोन होता है, उसको एनास्टमोस करने से फंक्शन खराब होता है, उसमें लीक रेट ज्यादा है. दैट इज नॉट ट्रू. वो इट डजंट होल्ड वाटर इन द लॉन्ग टर्म डेटा. हाँ ये जरूर है कि लेंथ की वजह से, टेंशन होने की वजह से जो है ना एनास्टमोटिक प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं. तो इसलिए हमें, ये तो मेरी पार्टी ट्रिक है इरफान मियाँ, हुक को उसमें फंसा लेना और उसके बाद खोल ना सकना. तो उसमें उसमें जो हम लोग करते हैं कि अगर टीएमई है तो वी वुड मोबिलाइज इट बाय डिफॉल्ट. अच्छा उसकी वजह क्या है और इस स्टेज पे करने की वजह क्या है, ये ह्यूमन फैक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जब आप ये कहते हो ना कि पहले टीएमई कर लें फिर देखेंगे शायद जरूरत ना पड़े, उस वक्त ना बंदा थका होता है, यू मेक बैड डिसीजन एंड यू से कि यार ये इट वुड रीच, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट्स लाइक फेशियोटमीज एंड वेस्कुलर इंजरीज, कि जब आप फेशियोटमीज के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्ट योर ऑपरेशन बाय डूइंग अ फेशियोटमी बिफोर यू फिक्स द वेसल. क्योंकि बाद में आप थके होंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मतलब जाना कोई इशू होगा. तो इसीलिए इसको मोबिलाइज शुरू में ही कर लेते हैं ताकि आप ये इसको उसमें मतलब यू टेक इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ द इक्वेशन एज इट वर. लेकिन अगर अपर रेक्टल ट्यूमर है, सिग्मॉइड कोलेक्टमी है, तो फिर सिलेक्टिव मोबिलाइजेशन है, फिर ऑलवेज कभी भी नहीं है, फिर डेफिनेटली सिलेक्टिव है. Thank you. तो प्रॉफ मुझे ये बताएं कि जो हम एचपीवी सर्जरी करते थे ट्रेनिंग में, अगर हम पैंक्रियास को थोड़ा बहुत भी सोतेले बेटे की तरह ट्रीट करते थे तो बॉस हमें थिएटर से बाहर निकाल देता था. हाँ बिल्कुल तो ठीक है. कभी कभी मुझे लग रहा है कि जब आप लोग पैंक्रियास के आसपास जाते हैं तो काफी
बगैर डर के जाते हैं. हाँ So हम have you had उसको any problems with हाँ pancreatitis post-op? देखिए हम पैंक्रियाज को आप तो सौतेले बेटे की तरह ट्रीट करते थे, हम उसको मतलब जो है ना एज अ सेकंड रिलेशनशिप ट्रीट करते हैं डर डर के, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हमारा फड्डा ना ही हो। तो दूसरी ये इट्स अ फेमिलियरिटी थिंग, यू नो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मीडियल टू लैटरल गोइंग ओवर द पैंक्रियाज, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर कोलोरेक्टल सर्जन्स टू रियलाइज कि दिस इज पोटेंशियली फीजिबल। क्योंकि हम लोग इससे डरते थे, हम कन्वेंशनली लैटरली आते थे और लैटरली आके थोड़ा सा एंगल को नीचे ले आए और ये काफी हो गया जी, मोबिलाइज हो गया, ठीक है ना। तो रिस्क डेफिनेटली पैंक्रेटाइटिस का, रिस्क डेफिनेटली पैंक्रियाटिक इंजरी का है, रिस्क हर उस चीज का है कि जो एक ऑर्गन को आप मिसट्रीट करेंगे तो हो सकता है और होता है, मतलब जो है ना आपने देखा है। लेकिन उसमें की क्या है, उसमें की ये है कि हाउ यू ट्रीट इट, हाउ यू रिस्पेक्ट द प्लेन्स अराउंड इट एंड हाउ वेयर यू डू द डिसेक्शन। और खास करके आपने देखा होगा कि इसने जितनी भी डिसेक्शन की पैंक्रियाज के ऊपर, वो सिंगल लेयर जो पेरिटोनियल जो रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर की, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ उसको नीचे ड्रॉप कर सके। जब लोग हैवी एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, जब वो पैंक्रियास से डर के ऊपर चले जाते हैं ट्रांसवर्स मेसेंट्री के अंदर, दैट इज अ प्लेस वेयर यू डैमेज द मार्जिनल वेसल। तो जब स्प्लेनिक फ्रैक्चर मोबिलाइजेशन में पैंक्रियास की बड़ी इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकली, बिकॉज दैट होल्ड्स द की टू वेयर डू यू थिंक यू गोइंग टू बी वर्किंग टू अवॉइड इंजरी टू द वेस्कुलेचर, ठीक है ना। तो पैंक्रेटाइटिस जिस तरह आपने पूछा है नोइंगली, तो अभी तक हमारे पास एक टेल ऑफ पैंक्रियास की एक इंजरी डेफिनेटली थी और वो मैं कर रहा था और हुई थी, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन यू डिडंट रियलाइज इट, वरना ऑब्वियसली आप उसको उस वक्त मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पोस्ट ऑप ड्रेन और मतलब पेशेंट अनवेल हुआ, ड्रेन हुआ, हाई एमएलए, मतलब सारा कुछ इट बिकम ऑब्वियस। हम रूटीन पे एमएलएज नहीं करवाते हर टीएमई प्लीज का, और हो सकता है कि एमएलएजीमिया शायद होता हो कि एमएलएज जो सर्च करता हो इसको फिडल करने से, लेकिन क्लिनिकली इसकी मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो कि जी हमें मतलब जो है ना हर एक का करवाने की जरूरत है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, जिस तरह मैंने कहा है। Acha, Prof, just to let you know, we have about 60 viewers online. अच्छा, मैंने बड़े कहा, interest मैं डर से गया, देख रहे आपने कहा कि मुझे लगा आप कह रहे हैं वी हैव अबाउट 60 ट्रांजैक्शंस व्हाइल मोबिलाइजिंग स्पेनिक फ्रैक्चर। हैं। No, इतने बुरे नहीं है। और यहाँ पे भी काफी लोग आए हुए हैं, KTL अच्छा, से, LRX चले, से, ठीक है जी। आई होप दे आर RMI, सीइंग, Northwest. नहीं, आई होप So दे आर you सीइंग कि जी आप you लोग have जो काम कर रहे हो वो किस स्टैंडर्ड का है, मतलब जो है ना दिस इज so फैसिनेटिंग। you have a mixed group. So we've got some ठीक, medical officers, we've got some trainees, and then we've ठीक, got some consultants as well. In ठीक, particular, मैं कहूँगा कि डॉक्टर नादिर अब्दबाद से आए हैं, ठीक। डॉक्टर रुमान, डॉक्टर मुसरत और डॉक्टर सिद्दीक HMC से आए हैं, नो डॉक्टर दे वेलकम जी, निसार वेलकम, बिल्कुल। KPA से आए हुए हैं, और डॉक्टर सादिया नजीर RMI से आए हैं. So you've got और डॉक्टर एहतिशाम LRH से आए हैं. आई So एम a ऑनर्ड, very आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज कि मैं इन लोगों की कंपनी में खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, Dr. आमिर अली Ishaq, शाह साहब, हाँ। शायद खटक साहब कहाँ हैं? नहीं he's आए तो on his शायद way. खटक साहब नहीं आए। He's on his way, bro. नहीं नहीं, पता है हमें, वो आज सुबह एयरपोर्ट आए थे, तो उन्होंने ही बल्कि मुझे पूछा कि भाई तुम्हें कोई लेने आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा ये लड़कों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आप फिक्र ना करें, So, वो आके आपसे बात करेंगे। हमारे पास अब्दुल वाहिद अनवर सर्जन अच्छा, लाहौर अच्छा। से हैं. उन्होंने एक इनको सवाल किया है कि डू यू रियली नीड टू टेक डाउन दिस मोमेंटम व्हेन इट इज जी, बियॉन्ड द ट्रांसवर्स कोलन, शुड वी नॉट स्टार्ट डायसेक्शन एट द ट्रांसवर्स कोलन? नहीं नहीं, मोमेंटम को कोलॉन से सेपरेट करते हैं, वी डोंट टेक इट। जो जो जब जब आप ये करेगा ना, अभी जब सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट में जाएगा तो ही विल सेपरेट द मोमेंटम ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, मोमेंटम स्टेज इन द पेशेंट, ठीक है ना। जो ये लंबा रूट है, स्टे टेकिंग इट ऑफ द कोलॉन, यू नो, आपको मेटिकुलस डिसेक्शन करनी पड़ती है। बाज लोग शुरू शुरू में क्या करते थे कि जब ये लेप्रोस्कोपी शुरू हुई थी कि गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्केड के थोड़ा सा बाहर आके विंडो बना के लेसिस सैक में घुस गए, एंड दे वुड लीव द मोमेंटम अटैच टू द कोलॉन। वो मतलब जरा उस वो इतना अच्छा एलिगेंट तरीका नहीं है, और उसमें ये होता है कि बाज़ का मेल पेशेंट्स में इन पर्टिकुलर मोमेंटम इज क्वाइट हैवी एंड इट कीप्स द कोलॉन अप। तो इसको सेपरेट करना कोलॉन से जो है ना एर्गोनॉमिकली और मतलब एस्थेटिकली भी बेहतर चीज है, रादर देन कीपिंग द मोमेंटम ऑन द कोलॉन।
So Irfan is using a quite nice technique of जी जी using hook as a brush. I've हाँ जी heard that term before as well. हाँ ये पेंट जो ब्रश जगह अभी जहाँ पे है, तो जी एक तो ऑडियंस को दिखा दें कि what are the major चलो structures lying behind there? Because हाँ I can एक मिनट इरफान sense मियां there's a एक मिनट few ठहरो big vessels there which you don't want to पेल्विक पेल्विक वो damage. जहाँ आप काम कर रहे थे ना वो चीज दिखाओ अच्छा इसमें अब ना दो चीजें हैं ये यहाँ पे इधर बेटा दिखाओ सिर्फ यही रोको देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डैमेज हो सकती है ना एक तो यूरेटर है ये सामने नजर आ रहा है ये सॉस है ये वाइट यूरेटर है ये दिस इज द यूरेटर और इसके मीडियली इसके नीचे जो है ना वो आइलियक वेसल पड़े होंगे दिस इज द यूरेटर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को रिकग्नाइज करना और इसमें आपने देखा कि ये जो यूज कर रहा है ये मैं बार बार ये टर्म यूज करता हूँ कि येलो और जो वाइट का जंक्शन है ना एम्ब्रियोलॉजी यहाँ है डोंट गो वाइडर कि जो वाइट में परे चला जाऊंगा और उससे दूर हो जाऊंगा क्योंकि मैं डैमेज कर दूंगा दिस इज वेयर द एनाटॉमी इज और ये आपको लैटरल टू मीडियल आते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है ठीक है अच्छा इसमें अब दो चीजें हैं आप सजेशन मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ आमिर भाई बैठे हैं कि अब इसमें अब ट्रांसफर्स कोलन मोबिलाइज करनी है और इसमें बाजू का तो आपको हेड अप करना पड़ता है पेशेंट को टू गेट द ग्रेविटी उसमें फिर आपका जो पेल्विक एक्सपोजर है वो सारा मतलब जाता है आपको दोबारा हेड डाउन करके दोबारा एक्सपोज करना पड़ता है बाज लोग स्टेज पे ऐसे करते हैं आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू कि नाउ दे वुड डू द टीएमई पार्ट एंड दे वुड ट्रांजैक्ट इट एंड देन दे वुड डू हेड अप ओनली वंस ताकि जो है ना वो सारा जो गिमिक है ना वो सारा को दोबारा आपको ना करना पड़े तो आपकी क्या राय है आमिर भाई इसके बारे में It depends upon the patient. हाँ Agar जी to it's a heavy patient, BMI is around 30 or above, where there is thick omentum. So I would stop here. I हाँ won't do the complete thing. I would stop here, do the pelvic टीएमई part, ठीक है and come back to it at a later stage. हाँ Because ठीक most of the difficult part, mediolateral dissection इज and ऑलरेडी lateral डन mobilization has already been done. Exposure बिल्कुल of the pancreas has already हाँ been done. But if ठीक है it's a thin, lean patient, देन यू कैन so चेंज इट ट्वाइस ठीक है then you can even without sometimes without moving the table, हाँ you पॉसिबल है can बिल्कुल done ठीक that है you can ठीक done है that do the top part. ठीक But in this patient, which is I think fairly obese, इज uh, स्लाइटली ओवरवेट I यस या yeah. So I think चलें फिर हम ऐसे करते हैं कि हम you टीएमई stop स्टार्ट here. करते हैं हाँ वी हाँ, कैन डू द टीएमई और उसके हाँ. बाद फिर ऊपर जाएंगे और मोबिलाइज द फ्लेक्सर एंड देन वी डू द एनास्टोमोसिस ठीक है इसका पेनक्रियास जी सॉरी आई लॉस्ट यू देयर आमिर भाई इसका पेनक्रियास थोड़ा सा देख लें फिर से हाँ वो एक्सपोज नहीं हुआ अभी पूरी नहीं तरह। वो ऊपर चला गया था उसके बीजोकोलॉन के साथ ही आई सॉ इट हाँ, हाँ नहीं वो देख लेंगे ठीक है तो ये इसने जोड़ दिया अब एंगल को अब वी विल जस्ट sort of start and do the TME part Quick question. So there's a question, I इरफान में guess, from the audience. पेल्विस हाँ जी जी इसको मैं वहां ले जा सकता हूँ स्क्रब हुए हुए अरे ये क्या हो गया अच्छा सर एक सवाल आया है ऑनलाइन कि हाउ कम जब आप डायपर में यूज कर रहे हैं देयर इज नो स्मोक तो इसमें कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स है He's off the mic. So we need to wait for this to answer. He's scrubbing in now. दूसरा मोबाइल उसको अरे बीच में इसका क्या हुआ आ गया? हाँ चला गया। तो अगर आवाज आ रही है तो हमारे एक थिएटर सेटअप अगर इसको मेन स्क्रीन पे ले आए rather than द ऑपरेटिंग व्यू अगर सर्जन्स व्यू मेन पे ले आए ताकि हम एक थिएटर का भी एक नजर दिखा लें कि क्या सेटअप है किस तरह सेटअप है श्योर वी वोंट बी एबल टू कम अप Yeah, I guess that's a. Now we're cootie chicken with that.
So anything in the audience that you want to ask or have your opinion or anything like that? How do you do? Is there any difference in what you do or what you see here? Any, comments or suggestions? Yeah, another one. I think we need to ask that from Prof about the spatula dissection. No, no. Can you give mic to Dr. Ahmed, please? Ji, Dr. Ahmed. Amjad, are you still there? I think he's scrubbing in, so he'll be with us in a couple of minutes. We'll ask him. All right. You hear us now? Ji. चलें जी ये इन्होंने मतलब जो है वो स्कोप क्लीन किया है वी हैव अ गॉज तो जी ये योहर है जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सो विल स्टार्ट द टीएमई नाउ इंशाल्लाह सो बेटा एक गॉज है वर्किंग गॉज आपके पास है छोटा हाफ अ गॉज एक हाफ अ गॉज इधर दे दो बेटा वो तो ऊपर है ना कोई बात इट्स ओके टेक लेट हिम टेक हिज टाइम सो बेसिकली जो अब तक इरफान ने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है वो इससे कहीं बेहतर है कि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो इसने किया है कि दैट इज रेलेवेंट ऑफ हाउ द टीएमई वुड स्टार्ट कि अगर आप पहले से जो है लाइए जो हुक दीजिए आपकी डिसेक्शन प्रिसाइज हो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के पीछे तो ये जो प्लेन है ना ये एनाटॉमिकली यू लैंड इनटू दिस प्लेन अच्छा जी अब आइए So, Prof, can you show us a little bit? Yeah. So, where do you want to start this now, please? तो From बच्चा ये देखे ना ये वाइट लाइन अपर वाइट है ठीक है ना ये जो लाइन है ठीक है जी ये नर्व्स है और अभी इसको आपको मुझे असल में एक छोटा सा प्लेजेट चाहिए होगा थोड़ी देर में क्योंकि मैं डोंट वांट टू ट्रॉमेटाइज दिस पीनट जिसको बोलते हैं अच्छा इधर आओ बेटा So, where is the nerve at this point in time? Would you be able to see it, Prof? चलो हाँ ये देखो बेटा इधर दिखाओ इनको नर्व फ्लोर पे मेरे हुक को फॉलो करो ये जो है प्लेक्सिस है नर्व का जो नीचे रन करता है देख रहे हैं ना ये सारी का सारा और ये वाइट जो है स्ट्रक्चर है वाइट लेयर जो है जिसको टीएमई लेयर बोलते हैं होली प्लेन कहते हैं इट रन्स एट द बैक ऑफ द मीजो रेक्टम ठीक है तो आइडिया इसके पीछे बड़ा सिंपल है कि मैं इसको यहाँ से दिखाएगा बच्चा ये वाइट लाइन का जो अपर बॉर्डर है ना इस पे हमने काम करना है जो बेसिकली एट द बैक ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होता है तो जितनी आपकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्लीन होगी ना उतनी आपकी डिसेक्शन प्रिसाइज होगी इसीलिए जो इसका जो काम था ना जो इसने शुरू किया था दैट वाज क्रूशियल इन ट्राइंग टू हेल्प अस डू दिस पार्ट नाउ ये देखिए ये प्लेन है ये टीएमई का प्लेन है जो वाइट गोज डाउन और येलो स्टेज अप एज अ पैकेज So, I guess Dr. Amir wants to ask a question from you. अरे मरवाओगे जी Amjad, I've seen your robotic videos where you were using scissors rather than a hook. Yes, that's true. Now you are using hook. Some Yes, people use spatula.
Yes. So It is just a matter of what you call, what you get used to. So मैंने जब robotic surgery 2013 में I switched to robotic surgery, तो मैं hook से switch हुआ था क्योंकि मैं laparoscopically hook से करता था. अच्छा, अब जब robotic वो लेके आए तो उन्होंने बोला कि जी हम इसको बेटा यहाँ से छोड़े, थोड़ा सा ना आप आगे जाइएगा इधर. तो उसमें, हाँ थैंक यू, इसको ऊपर. तो उन्होंने सीजर ऑफर की एज ए इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये मैंने नहीं मांगी थी उनसे. उन्होंने कहा जी कि फिलहाल ये हुक आ रहा है, वो कुछ 2 हफ्तों में ना आ जाएगा. तो आई रियलाइज कि उस सीजर का आपने देखा होगा मुझे यूज करते हुए कि उसको मैं उसको हुक की तरह यूज हूँ या पेंट ब्रश की तरह यूज करता हूँ, जस्ट द वे आई एम यूजिंग इट नाउ. एडवांटेज उसमें मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि वो उसके पास आई कैन डू कपल ऑफ अदर फंक्शंस विद इट. आई कैन कट माई सेल्फ. वरना मुझे असिस्टेंट को कहना पड़ता था कि वो इसको काटे जब मैं एक्सपोज कर रहा हूँ या कोई चीज को कटवाना होता था. तो आई सर्व चेंज प्योरली बिकॉज ऑफ दिस. उसके पीछे और कोई वजह नहीं थी. तो एनीथिंग इज गुड. आप जिस चीज के यूज टू हो जाते हैं. आप देखें कुछ लोग स्पेचुला यूज करते हैं, जापानीज सर्जन खासकर जो है, दे यूज स्पेचुला, मोनोपोलर स्पेचुला इन लेप्रोस्कोपिक अप्रोचेस. और इसको भी हम अगर आप देखें तो हुक के लिए कम ही यूज करते हैं. इसको हम बेसिकली एज अ स्पेचुला या बैक एंड ऑफ द हुक जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए यूज करते हैं. बेटा वो प्लेजेट मुझे दीजिएगा जो आपने मुझे कहा था. सो अभी तक क्लियर है आई होप आमिर भाई, व्हाट यू आर सीइंग, यू कैन सी इट एंड यू कैन अप्रिशिएट एनाटॉमी, एक्सपोजर क्या है. एक स्पेचुला ये दे दो बस. हाँ ठीक है, ये बस एक ही इंस्ट्रूमेंट काफी है मेरे लिए. वैसे डालूंगा और फिर आई चेंज हैंड्स. चलो जी, अब हुक दीजिएगा बच्चा. सो you can demonstrate us the Walden's fascia and जी जी, the sacral veins. आई होप नॉट सेक्रल वेन्स जिनसे भाई. जिनसे दूर रहना है. हाँ मतलब जना आप तो ड्रा ही रहे हैं. I try to do one operation. I'm not a very talented guy. Okay. इसको देखें, इस वक्त आपने देखा है कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ हुक, क्योंकि इसको मैं नीचे नहीं पेंट करना चाहता. इन केस आई निक समथिंग ऑन द साइड वॉल, पर्टिकुलरली द आइलियक्स. तो इसको जेहन में रखिए कि इसको यूज करते हुए आपके जेहन में क्या है कि व्हाट इज द रीजन यू आर यूजिंग इट इन अ पर्टिकुलर वे. आए बच्चा साथ सारा, थैंक यू जी. अच्छा, जो की है वो ये है कि पोस्टीरियरली मिड लाइन इज अ सेफर एरिया टू वर्क विद बिटवीन द टू नर्व्स. ठीक है ना, आप यहाँ पे रिलेटिवली सेफ एरिया. वरना जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं कि डीप अगर मैं इस एयर के थ्रू चला जाऊंगा तो दिस इज वेयर द प्रीसेकल वेन्स आर. वो आपने नहीं उस तरफ जाना, मतलब जाना वो आपको एनाटॉमी की बुक में ही देखें तो बेहतर है, यहाँ ना ही नजर आए. अच्छा, फिर अक्सर लोग, अब ये क्योंकि मैं सब तो बेटा बस ठीक है, ये एक ऑन गोइंग डिबेट है क्योंकि मैं अब चूंकि रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, लेप्रोस्कोपी में बहुत कम अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ. रेक्टल कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ. तो वो लोग कहते हैं भाई उसका फायदा क्या है. उसका फायदा बच्चा ये जो राइट साइड वॉल है ना मेल पेशेंट में, इसमें मार्जिनल एडवांटेज है रोबोट का, क्योंकि सीजर जो है इट कैन टर्न बैकवर्ड. ये स्ट्रेट 90 डिग्री का इंस्ट्रूमेंट है, ये सीधा रहता है. इसमें थोड़ा सा चैलेंज होता है, खासकर अगर बंदा ओबीस हो और उसकी पेल्विक राइट साइड वॉल जो है उसमें आपको डिसेक्ट करते हुए चैलेंज होते हैं. कम बैक विद द कैमरा, कम बैक इन, दैट्स इट, गुड. So, Prof, in this case, how far would you prefer to So, go? हाँ देखो ना, ये आप नोट करोगे खुद ही कि एक स्टेज आएगी कि when the specimen would start moving forward or you have to come forward, जो top of the Walden's है जिसका आमिर भाई ने जिक्र किया था, तो उस स्टेज के ऊपर आपको रुकना पड़ता है क्योंकि फिर आपको साइड से रिलीज करना पड़ता है because you want the rectum to leave pelvis. So you go as far as you can and then you go a little bit further. Are you seeing a good picture, I hope? Yeah, the quality is not bad. Excellent picture. हाँ, वो देखे ना,
Fahad is a hard man to please. उनके और आमिर जी, भाई हो के रही है। कमेंट, हाँ No, आमिर no, no भाई problem. के It's आमिर भाई के कमेंट में और we are, फहद के we are कमेंट में एक seeing a masterpiece, bro. आमिर भाई ने कहा एक्सीलेंट पिक्चर, क्योंकि उनका शागिर्द ऑपरेट कर रहा है, वो तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और फहद भी ये कह रहे हैं कि इट इज ओके। The question was, I guess, about the picture, not the the surgery. Yes, बच्चा, पिक्चर नेवर लाइज, पिक्चर टेल अ थाउजेंड स्टोरी। absolutely true, bro. It's a picture and it's a man behind the picture. Yes. हाँ बिल्कुल, ये तो ये देखिए, ये यहाँ पे अब नोट करें, ये जो है बड़ी bro. टेम्पटेशन होती है कि यू गो थ्रू दिस, कि मैं पीछे रहूं। अब ये फॉरवर्ड आ रहा है, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड आइज है, जो आमिर भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इट स्टार्ट्स हियर, सो शेप ऑफ द स्पेसिमेन जो है ना, आपने उसको फॉलो करना है, All right. ठीक So है। always stay behind this. हाँ बिल्कुल, जो हगिंग द स्पेसिमेन, यू आर बेसिकली जस्ट क्रेसिंग इट। और ये All right. सर्कम नेविगेशनल सर्जरी है कि जिसमें आप कोशिश करते हैं कि स्पेसिमेन गिर्द गिर्द जाते रहें, जब आप और कहीं नहीं जा सकेंगे डिस्टली, तो योर टीएमई इज डन देन। All right. ये देखिए, ये वाइट लाइन है, ये लिमिटेशन की हम बात कर रहे थे, देखो इंस्ट्रूमेंट कैसे जा रहा है, सो आई एम स्कीइंग इट, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि आप पीछे को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है ना, साइड वॉल स्ट्रक्चर को। I mean, just most of our patients, get neoadjuvant chemoradiation. जी, When you reach at this level, you get a lot of fluid and यस, oozing. So how do you deal with that? you deal with it with difficulty. You deal with it by using a mop. You must have seen me using a lot of gauze, और उसमें पेशेंस थोड़ी सी चाहिए कि आप बार बार रुक के उसको जो है ना मॉप करते रहे, उसको सक करते रहे। इसको बेटा रखना है, इसको ब्लीडर को रोके, और एक ये ब्लीडर है, क्योंकि तो उस उसमें fluid उसमें वो territory फ्लूइड, में वो बहुत वो आपकी बात बिल्कुल बजाय। इधर आओ बच्चा, इनको दिखाएं। ये फ्लोर पे आमिर भाई देखिए, ये हैं प्री सेकल वेन्स, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक लेयर पीछे हैं। अगर आप ये सिर्फ एक रिम ऑफ फेशिया से डीप चले जाए ना, दीज वेन्स आर विदाउट वैल्व एंड दे ब्लीड अ लॉट इन अ नैरो स्पेस। तो इसको इसीलिए जब मैं उठाता हूँ तो इस द अपर एंड ऑफ द वाइट, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ बोरिंगली, जो मेरे ट्रेनी है वो भी कहते होंगे कि इसको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। सो So ये where is your देखिए, left hand, prof, in this, in all लेफ्ट हैंड this? बेटा, वापस आओ ना, मैं दिखाऊं इनको, ये है बेटा लेफ्ट हैंड, सो इट विल Like- मूव विद अ गॉज विद अ प्लेजेट ओवर इट। सो ये All ट्रैक्शन अब फॉरवर्ड ट्रैक्शन है, ठीक है। अब ये देखो, वाइट नीचे नहीं जाना बचा, ठीक है। फॉलो द शेप ऑफ द स्पेसिमेन, इट इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ। जी जी जी, उसको उसी तरह रखना है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मतलब आई वांट टू कमेंट ऑन समथिंग, क्योंकि चूंकि अब मैं पिछले कुछ सालों से कम अज कम जो रेक्टल कैंसर सर्जरी है वो रोबोटिकली करता हूँ, तो रोबोट का व्यू जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। स्टैटिक पिक्चर होती है, आपको हर चीज़ बड़ी क्लियरली नजर आती है। तो आई वांट टू सर कमेंट हेयर कि यहाँ पे जो कैमरा पर्सन है, शी इज बिहेविंग लाइक अ रोबोट। ये आप देखिएगा कि बिल्कुल स्टैटिक व्यू है, एक्सेलेंट। चलो बच्चा वापस आओ। अच्छा, इसको अब यहाँ छोड़ दें। अब वापस आना, जरा वापस आओ कैमरा से, इधर आप जाइएगा। इधर यहाँ पे ना एक फ्री एज होगी जो इस बच्चे ने यहाँ से, या इरफान ने छोड़ा होगा यहाँ पे ना फ्री एज को। यू कैन शो मी फ्रॉम द बैक, वेट अ मिनट, आर यू एबल टू शो अस? या देयर। अच्छा वापस आओ, ठीक है। अच्छा मतलब आप छोड़ो, मतलब इसको छोड़ दीजिए यहाँ से, एंड यू गो, देन इसको यहीं रहने दें। आप ऐसे कीजिए, जस्ट स्टे देयर। आई एम जस्ट गोना मूव द गॉज बैक एंड वी जस्ट गोना मेक एन इंसिजन ऑन द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इधर आओ, जस्ट कम इन हियर, जस्ट होल्ड इट देयर, that's it, and just show me this edge.
वैसे किया, इसको ऐसे पकड़ा और अब आई एम मेकिंग अ इंसिजन ऑन पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन है, इसके 2-1 सेंटीमीटर रफली ऊपर इंसाइज करता हूं मैं। सो देन आई कैन होल्ड इट इन माय हैंड। अच्छा अभी तो दिखाओ बेटा। So, Prof, sometimes when you do the lateral dissection here, there's a tendency to go, more lateral. So, are there any tips and tricks for Yes. that to prevent us from going too much lateral? जी जी। अच्छा एक मिनट वापस आना बेटा। आर यू टेकिंग इट आउट ऑफ द पेल्विस पुत्र, स्पेसिमेन जो है आपका? चले, थैंक यू, दैट्स इट जी। तो की जो है ना वो नर्व्स है। ये देखिए, ये बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन आपको नर्व की, ये सारे लोग नर्व की बात कर रहे थे, ये नर्व है देखो बच्चा, ठीक है। ये स्पेसिमेन पे आती है और इसको आपको ना टीज करना है कि इट लीव योर स्पेसिमेन विदाउट यू गोइंग अक्रॉस इट। सी देखिए ये नर्व का इनसाइड ऑफ द नर्व जो है, दैट इज द की टू द होल ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब आप देखोगे कि दूसरा आपने मुझसे पूछा था कि किस तरह आप अवॉइड करें लैटरली ज्यादा ना जाएं, ठीक है। तो एक तो नर्व लैंडमार्क है मेरे लिए, ठीक है। कोई डिसेक्शन इधर नहीं होगी, डिसेक्शन, और मैं जब लॉस्ट हो जाऊंगा, so I would go at the back of the specimen. I always go posterior to find myself, ठीक है ना। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा आपको फ्रंट पे सेमिनल वेसिकल ऑब्वियसली की है कि वो आपका एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, जिसको आपको देखना है और उसको आपको आइडेंटिफाई करके सेव करना है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे हम कफ देंगे, ऐसे ही कफ पकड़ ली और आई एम गोना गो अक्रॉस दिस। ये सारी की सारी जो गेम है ना, ये एनाटमी की और फिंगर टिप सर्जरी की गेम है। अगर आप अपने सारे ऑपरेशन को सर्कम नेविगेट कर लें जी, तो इट इज मोर और लेस द ऑपरेशन दैट यू वुड लाइक टू डू। अच्छा अब यहाँ उतरा, कम बैक, शो हिम। सो यू गो बिट डाउन हेयर। इसको नहीं ऊपर पकड़ो, चलो यहाँ पकड़ के दिखाओ। अगर तो जेंटली उठा सकते हो। इसने उठाया, देखें, ट्रैक्शन, काउंटर ट्रैक्शन, and this is where we're going to find the back of the seminal vesicle. Prof, एक सवाल था earlier भी कि जी, आपकी हुक जो है वो स्मोक नहीं कॉज कर रही, तो हाँ, इसकी ये क्या वजह है? कोई खास इसकी सेटिंग लगाया हुआ है इसकी या सिर्फ और कोई सिर्फ स्पेशल? वजह जो है ना, पेशावर का हुक है। इसके लिए पेशावर वालों से ताल्लुक रब्ता रखे, ये यही अवेलेबल है। नहीं नहीं, एक तो ये है कि हम यूजली पता नहीं इन्होंने अब सेटिंग क्या रखी है, 25 पे मैं काम करता हूँ। देखें, वाह जी वाह, ये हुई ना बात। इरफान मियाँ ने आज जो है ना हमारा दिल जीत लिया है, हर चीज उस तरह सेट की हुई है। तो ये 25 सेटिंग है। ये एक वजह है जिसकी वजह से स्मोक यूजली ना, मैं आपको बताऊं, स्मोक मेल पेशेंट में रेडियोथेरेपी के बाद जब अडीमा बहुत होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम देता है स्मोक, नो डाउट। लेकिन जनरली अगर अडीमा नहीं है या कम है और आप देखें कि बिल्कुल आप इसको टच करते हैं, आप इस तरह में डायथेरेपी नहीं यूज करता। देखें ये जो है, ये इसको कहते हैं स्पॉट वेल्ड, देखे ना, ये होल जो किया मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसको पेंटिंग टेक्निक है कि आपको सिर्फ पेंट करना है कि सेपरेट करें आप एक लेयर को दूसरे से, तो उसमें यूजली स्मोक वगैरह कम आता है नजर। ये पेंटिंग टेक्निक से प्रॉफ समझ आए कि इरफान हर वक्त कहता रहता है मैं पिकासो हूँ, हाँ तो ये अभी तो समझ आए कि वो ही क्यों कहता रहता है। ये तो पिकासो है। हम जैसे लोग जो हैं वो करवाजियो हैं। आपने करवाजियो के बारे में पढ़ा हुआ है? ये वो था जिसको वहां से निकाल दिया था उन्होंने फ्लोरेंस फिर से। इस वक्त बड़े मुश्किल नाम ले रहे हैं लोगों के एक दो बंदों के नाम पता है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे बिल हील ने कहा था कि यू आर मोर लाइक करवाजियो। ठहर ठहर, पीछे आओ, वापस आओ, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल अंदर है, आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। कि मैं वापस आओ बेटा, वापस कम बैक, मुझे गैस पर दो बेटा। So there is a gauze here. Can you show me the gauze? Okay, just gently there. ठीक है, thank you. Just go with me. It is my mistake. I got distracted क्योंकि अच्छा ट्यूमर इसका देखो यहाँ से कहीं शुरू हो रहा है, यहाँ पे पकड़िंग मुझे नजर आ रही है, लेकिन we actually could feel it. इरफान ने मुझे कहा है कि he felt the tumor, although it is
like advertise as 10 centimeter. अब वापस आओ बतरो छोड़ आप इसको इधर ला सकती है इस साइड पे. Okay, to move it on the other side. So the question following on from the last question is, if you were to use the 25 setting for, say, other organs, would there still be no हाँ smoke? हाँ, I think so. I think मतलब जिस भी ऑर्गन की आप सर्जरी करेंगे ना, हुक दीजिएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आप एम्ब्रोलॉजिकल प्लेन्स में रहेंगे तो आपकी एनर्जी की जरूरत कम है. मतलब जनरली स्पीकिंग ये उसके पीछे रैशनल ये है. अच्छा बस इनफ बेटा, बस ज्यादा नहीं. ये येलो और वाइट है, ये आपको पेंट करना है ऐसे, ये आपको ऐसे करना है. अब देखिए मैं इस स्टेज पे इस वाले मतलब उस पे आया हूँ क्योंकि आई वांट द लेफ्ट साइड नाउ टू मूव. सही है, देखो ना. छोड़ो छोड़ो जेंटिया ना बता ना ना इतनी जोर से तो बेटा इसको उठाओ. छोड़ो, लेट गो ऑफ योर हैंड्स, लेट गो ऑफ योर हैंड्स, लेट गो. इसको यहाँ से उठाओ हल्का सा, सिर्फ पेरिटोनियम को. ये तो प्यार मोहब्बत का काम है. आप तो क्लाशनकोफ ले आए हैं. So, Prof, there is a question from the online audience जी that if there is an intra-op transaction of the nerve, then जी. what next? नहीं नहीं आप वो तो इंट्रा ऑपरेटिव, आप अगर आपसे ट्रांजैक्शन हो गई है तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू एट द टाइम. वो अगर आप ये कोशिश करेंगे दूसरी साइड बचा ले, ठीक है. और डिपेंड करता है किस लेवल पे हुई है. फर्ज कीजिए अगर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस का होता है तो फिर सेक्सुअली एक्टिव मेल जो है उनको प्रॉब्लम रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन का होता है. पेनफुल रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन इज अ प्रॉब्लम विद द नर्व बीइंग डैमेज दैट हाई. अगर आप इसको पेल्विक उसके ऊपर करते हैं तो फिर पोटेंसी प्रॉब्लम है, तो उसके ज़ाहिर है कि उसकी फिर मेडिकल मैनेजमेंट है. क्योंकि आपने तो एक साइड पे आप कहेंगे शायद रिकवर हो जाए, यही दिस इज ऑल यू कैन होप फॉर. जो ये ठीक. इंट्रा ऑपरेटिवली रिपेयर करना उसके, नहीं नहीं मेरा नहीं ख्याल, नोबडी हैव, नहीं बच्चे इसको ख्याल करो. छोड़ो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. कम इन विद द कैमरा. सो लेट्स जस्ट मार्क इट. सो इंट्रा ऑपरेटिवली लोगों ने जर्मनी में कुछ लोगों ने मतलब इस तरह के काम किए कि उन्होंने मतलब वो इंट्रा ऑपरेटिवली वो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मतलब कि देखने के लिए कि जी नर्व्स हैं कहाँ. अच्छा बेटा आप इसको छोड़ेंगे जरा थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को. लेट गो देयर, लेट गो विद द इंस्ट्रूमेंट. लेट गो इज लाइक टेक इट ऑफ. थैंक यू. चलो थैंक यू सो मच. अब इधर आओ उतरो. So this is where you damage the left nerve. जो shape of specimen है ना वो clue है. जो rounded shape of specimen है, that is coming towards me like this. She's gonna come in. Are you able to see it clearly? Yes, इधर आओ, absolutely. बस ठीक ठीक. So इसको rotate किया और जो rounded नहीं है it doesn't belong to me. ठीक है ना. One, two. Rotate it up. Very nice. Sarah is obviously a very experienced eye. She knows what to see. And if she is interested in seeing something, we are likely to see that as well. चलो ऊपर आओ, इधर जा, ऊपर से आओ यहाँ पे जेंटली. बहुत सारी जो इंजरीज है ना वो नॉन डोमिनेंट हैंड जो है ना वो करता है. अच्छा अब इधर आओ बच्चा, वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ. ऐसे अब ऐसे कीजिए. अब इसको आप ले लें दोबारा इंस्ट्रूमेंट से बच्चा. Put your instrument back on so we can pull it up and we can just let go some of the smoke. ये कैमरा कर लो. We'll just clean the lens now. चलो वो देखो इसको देखना देखना देखो बच्चा. Watch 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 watch. ठहरो इसको मैं निकाल दूं.
कैमरा क्लीन करते हैं, फिर हम एक्सपोज करते हैं. So we have done the back. We have marked the right side. I marked the front now, and I've released the left. So the specimen can leave the deeper pelvis. That's the idea behind this. ठीक है ना? अब हम deeper posteriorly और आगे जा सकते हैं, क्योंकि now specimen is bit more mobile as compared to there. ठीक है? इधर आ जाओ, ठहरो. Amjad? जी, जी, yes. Hmm. जी. And at some stage, could you demonstrate the whole nerve from the top Yes. to bottom? Yes, I will do that. And the sites where it can possibly be at Okay. risk? ठीक है. इधर आओ वापस. Okay, just the edge, rotating it back. So, ये लेफ्ट नर्व का वही एपेक्स है जो राइट मैंने आपको दिखाया था. You stay inside, you paint it away. Not going there. Stay onto the specimen and let this fall away from you. There. आ जाओ बच्चा, वापस आओ. Let's go here now. Let's stop this bleeder. Gently, अब यहाँ से वापस जाएंगे हम. Hello, sir. Hello. Sir, this is Dr. Usman from Hyderabad Medical Complex. जी डॉक्टर उस्मान. Sir, I have a question. Do you use tattooing of the tumor? Tattooing Yes. in order to locate the tumor perioperatively? Yes, good question. So tattooing have got a very little role for rectal tumors, for rectal cancers, for example. For tattooing has got a very important role in colonic tumors, because particularly when you can't see them on a CT and they're small tumors. So we do use them for colon tumors, and we ask our guys who are tattooing them to tattoo it distal to the tumor. And we use only one like reference point, distal spot, right? But rectum में बेटा नहीं. Rectum में it basically stain the mesorectal plane very badly. और वो मतलब जाना it is not helpful at all, क्योंकि rectum में जो ज़्यादा चीज़ helpful है वो आपकी finger है to feel कि आप ट्यूमर के नीचे जा चुके हैं कि नहीं. वो गो के हम इंट्राऑपरेटिव एंडोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है ना. तो उसमें इसका रोल नहीं है बता. So this is the front of the adenovillous fascia. Now you could see. अगर ये ट्यूमर एंटीरियर इधर होगा तो आप इधर जाने की कोशिश करते हैं इस प्लेन में जितनी देर आप जा सकते हैं जब ये प्रोस्टेट के पीछे फ्यूज होता है. ये पेशेंट TRG2 है और इसमें एंटीरियर रिस्क नहीं है और ये रिलेटिवली यंग आदमी है. दिस इज अनदर प्लेस वेयर यू कैन डैमेज द नर्व. अगर मैं इसके बाहर रहूंगा तो 2 o'clock, सॉरी 10 o'clock और 2 o'clock, दिस इज वेयर यू बंडल ऑफ जिसको वेल्श बोलते हैं, यू कैन डैमेज इट. तो मैं इसको यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ डेनोवेलियस फेशिया को आपके सामने. So we can go below this. ये देखिए ये डिवीजन है इसकी, एक लेयर है सिर्फ ये फेशिया है आमिर भाई. Yep.
You can only see it on with the जी laparoscope. जी हाँ, ये ओपन सर्जरी में मुझे काफी Open साल surgery लगे में अपने बहुत- बॉस की बात का यकीन आने का। वो भी हाँ। मतलब दिखाया नहीं उन्होंने, बस उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह तुम्हारा ईमान है, हाँ। मान लो। लीजिए अब हम जाएंगे पोस्टीरियरली। बेटा आप अपना हाथ छोड़े उधर से, आप इसको इस तरफ लेके जाइए। अब नौजवान इधर आओ और हॉकी स्टिक, मुझे एक सवाल, एक गॉल, ये इंस्ट्रूमेंट देना है, इसको क्या कहते हैं? योर हैंड बेटा, हाँ, थैंक यू। So now we would go posteriorly because I mobilized right and left of this. So I'll ask my assistant to go and do what I call hockey stick maneuver. So he's going to go underneath here on the package, close. इसके नीचे जाओ बच्चा। ओ नीचे ना, वेन में ना घुस जाना, आसा पड़ जाए। इधर से ऐसे 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 and then lift it forward as much as you can. ठीक हो गया? हो रहा है कि नहीं? अच्छा चलें, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दें बेटा। इनके असिस्टेंट के हाथ से रुक रहा है। आइए अब आएंगे, तशरीफ लाए और ऐसे आ जाए। सो दो हेयर, इधर आ जा, इधर आ जा, नीचे आके नीचे नीचे नीचे, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अ हॉकी स्टिक मैनूवर। तो अब आपके पास दोनों साइडों पे एक्सपोजर है, लाइक दिस। हुक दीजिएगा। ये आपको नजर आ रहा है अब आमिर भाई? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये मीडियन सेक्रल वेन आपको नजर आ रही होगी। अब इधर थोड़ा सा बेटा इधर रुकना, ठीक है? इधर मेरे हुक को फॉलो करो। ये नर्व है जो राइट नर्व है, ये जा रही है, इस हुक को ये फॉलो करेगी और ये दिखाएगी आपको सारा ऑल द वे, ठीक है? यहाँ डैमेज करते हैं जब लैटरली आते हैं लोग, और मतलब दे मिस कैलकुलेटेड एंड दे गो वाइड। बाकी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में अभी और दिखाता हूँ। विल जस्ट गो हेयर नाउ टू इसके इस तरफ से जाओ बेटा, डाउन हेयर, ठीक? चलो so either you have to come forward, don't go here. ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हमने देखा था। अब हम इसको स्पेसिमेन को आगे लाना चाह रहे हैं ताकि इट शुड लीव द डीप पेल्विस। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन डैमेज these nerves or these veins, ठीक है ना? इधर ही रखो बेटा, इधर बस, ठीक है? आपने नोट किया था कि ये वो नर्व थी जो मैं लैटरली ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था, लैटरल टू मीडियल, और हमें मुश्किल हो रही थी। अब इधर से एक्सपोज कर लिया आपने इसको। थोड़ा सा वापस आओ बच्चा, थोड़ा सा स्लो, हैंग अराउंड हियर, हाँ, हैंग अराउंड अवे फ्रॉम। ये आपका ना फोरग्राउंड में ये गिर रहा है। कम इन नाउ, बस ठीक, स्लो डाउन। सीधा दिखाओगे बच्चा, स्ट्रेट अहेड, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो। वापस आओ, ग्रेस पर दीजिएगा मुझे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देन लेट गो देयर इरफान, इरफान बेटा छोड़ो इसको, अब इधर लाओ, इस पे गॉज के नीचे। यार इधर आओ जरा, इधर क्या ये ब्लीडिंग जो हमने शुरू की थी अब रुक गई है? वैसे वो भी एक हादसा ही था, आई जस्ट मिस्ड इट। ये निकालो बेटा, दूसरा दे दो मुझे, ड्राई गॉज। सो यू सी दिस नाउ कि स्पेसिमेन अब फ्री है, रिलेटिवली मूव कर सकता है। मुझे लेफ्ट से थोड़ा सा ज्वाइन करना है इस लाइन को, और राइट को प्रोग्रेस करना है बेटा, वही हाफ हाफ, हाँ जी जी। अच्छा जी, चले क्या करें इरफान मियाँ, आप किधर जाए? लेफ्ट साइड पे जाए, चलो। अच्छा जी, चलें अब इरफान की फरमाइश पे लेफ्ट पे जाके देखते हैं क्या होता है। इधर आओ इरफान मियाँ, आओ। There is a doctor who has just come all the way from England. अच्छा He चले, has मतलब just arrived and sitting next to me. अच्छा ठीक है जी।
They are हेलो welcome. हाँ, ये तो आवाज जानी पहचानी है. क्या हाल है शाहिद भाई? ये तो काफी हो गया है. हाँ, ये आपके देखिए गैर मौजूदगी में. अब खैर से आप आ गए हैं. अब देखते हैं कैसे होता है. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. You landed before me, you know. हाँ, I landed at a different place. Yeah. बस यही मसला रहा है सारी जिंदगी. I ended up landing in a different place in a wrong place. इस्लामाबाद उतर गया मैं आके. So ये काम तो बेसिकली सारा इरफान ने किया है. हम तो just sort of following on from his work. आपके आने से पहले शायद भाई जी. ये जो लोकल लड़का है इरफान, इसने ये सारा काम किया हुआ है. हम तो आके बस वैसे ही पेंट किए जा रहे हैं. हमारा इरफान. हाँ जी, इरफान आप ही का है जी. हमारी मजाल. नहीं, he did it very nicely. ये अब यहाँ जाएंगे हम सामने और ये एयर है and this is where the lion is. ठीक हो गया सारा. You know, the place I was, people were talking about your painting. अच्छा चले. मैं सोच रहा था कि अगर पेंटिंग का ही है तो व्हाई डोंट वी यूज अ पेंट ब्रश हाँ जी, इंस्टेड ऑफ अ हुक. बिल्कुल वो जो स्पैचुला जिसको बोलते हैं वो मोर और लेस यही है. Exactly. I think sometimes the tip of this hook can be very dangerous. जी जी जी, it gets stuck. It gets stuck and it can injure अच्छा your knee or rectum. ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल है जिसको हमें रिलीज करना है. देखें ये एज पे है. इसमें यहाँ ब्लीडिंग होती है. Because the nerves can be sometimes pulled, you know, when जी we जी are. जी जी. There is a lateral heat generated by, all these energy devices, including hook. जी. So what should be the safe distance especially at this part, when the nerve is slightly tented and you are working very close to the nerve? या उसमें अभी भाई कुछ लोगों ने की है स्टडीज टू लुक एट द डायथेमी स्प्रेड कितना होता है, हार्मोनिक का स्प्रेड कितना है. ठीक है. और उसमें मतलब साइंस कोई नहीं है टू टेल यू द ट्रूथ. जो बॉटम लाइन है वो ये है. इधर तो नहीं है पोस्टीरियरली, बहुत पीछे डीप तो नहीं है हम इधर. पैकेज तो यही है. सो उसके पीछे ये है कि आप क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कि दे यूज कटिंग व्हेन दे कम क्लोजर टू द नर्व्स. ठीक है ना. और खासकर मैं जब शुरू करता था टीएमई एट द स्टार्ट तो मैं कटिंग यूज करता था कि लैटरल स्प्रेड या कोलैटरल डैमेज का रिस्क कम हो. वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट, आई एम नॉट टू श्योर. डेफिनेटली उसका ये फायदा होता है कि कटिंग से वो चारिंग इफेक्ट कम होता है. वापस आओ चाहिए. आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस. So let's have the specimen rotated. आप डालोगे वैसे this instrument, put it back in. So yes, so कुछ लोगों ने बोला इतने मतलब 25 मिलीमीटर तक जाता है, कुछ ने कहा इतने मिलीमीटर तक कोएक का स्प्रेड जाता है, कुछ ने कहा जॉज के अंदर सिर्फ रहता है. लेकिन हमें पता है कि हार्मोनिक से भी जब करते हैं तो उसके जॉज के अंदर नहीं है, उसके अंदर भी रेडियल स्प्रेड भी है. So that is also not safe. क्योंकि लोगों ने बोला कि जी उसके जॉज में चूंकि लेफ्ट पे इस साइड पे लेके जाओ. हाँ, that's it. तो वो भी नहीं है. तो there is no effectively no hard and fast rule of what the thermal spread would look like and what it could be. लेकिन generally ये है कि short burst और minimum contact. मैंने नहीं पकड़ना, आपने opposite जाना है. Come in closer, please. ज्यादातर तो हमारे पेशेंट तो पोस्ट न्यू एडजुवेंट होते हैं. जी हाँ, जी. तो उसमें तो मेरे ख्याल में कट यूज हो सकता है. जब अगर वो अपफ्रंट सर्जरी हो तो देन आई थिंक थोड़ी oozing ज्यादा होती है तो we prefer to use coagulation. But I mean we can use blend as well. Have you tried that? हाँ जी, blend भी यूज करते हैं.
खासकर वो जो क्या नाम है उनका, वो ये वो वाले है ना जो ये इनकी डायथर्मी है कॉमेडियन की, उसमें ब्लेंड का वो एक फीचर होता था, आई रिमेम्बर कि जिसमें हम दोनों यूज कर। अच्छा, इसमें यहाँ मैं गया, आई मेड इट ब्लीड, रिमेम्बर प्लेन जो है ना हमारे ऊपर है इधर, इसको हमें टीज करके ना वी हैव टू लेट इट गो अवे फ्रॉम अस, ये है। Yeah. So you stay over the fascia. जी जी Then जस्ट with the fascia जी की- जी हाँ जी, मैंने वो हमने डिवाइड कर लिया आपके आने से थोड़ी देर पहले, Yeah. ये अभी है यहाँ वो, पे बिल्कुल हाँ ये है। because it is a upper tumor, probably that's why you divided it जी at जी this जी level. जी 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 Otherwise, जी you will हाँ, नहीं go. नहीं, वरना इसके बाहर रहते हैं, और रिस्क Yeah. वही है कि आप जाहिर है कि जितना बाहर रहेंगे उतना न्यूरोवास्कुलर इंजरी का रिस्क ज्यादा है नर्व्स का। Yeah. But I mean, it is, you have to look at the lesser evil. एक तरफ nerves की हाँ जी, injury का chart है, और एक तरफ दूसरी ऑन्कोलॉजी तरफ है। if it is a tumor, so you are worried that जी 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 if जी you जी cut the बिल्कुल। fascia too high, वापस you आ जाओ। might have an anterior positive margin. यस यस If दैट्स ट्रू। if it's a तो lower उनमें tumor. हाँ उनमें उनमें हमारा थ्रेशोल्ड बाहर रहने का ज्यादा होता है, वी ट्राई टू स्टे आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे अब आएंगे हम, इसको डिस्प्ले करेंगे ऐसे, ये न्यूरोवास्कुलर बेटा वो देना, वो जो आपकी मशीन है, कम बैक विद द कैमरा फर्स्ट, जस्ट देयर। So I'm just going to seal this because you can see ये neurovascular bundle जो है ना, it is puckering onto the specimen, ये यहाँ पे है। So come back थोड़ा सा वापस, ये Yeah. so जो clue है वो बैक साइड से है, ये बैक पोस्टीरियर साइड जो है, that holds a clue। ये neurovascular bundle इसके अंदर आ रहा है, so we have to release that। अच्छा वापस आओ बच्चा, वापस आओ। So now it depends कि हम इसको देख कैसे रहे हैं, ठीक है, ये भी important है कि how you are looking at it। अब आओ, देखा So अब you वो do, डिफरेंट व्यू बन गया है। you do the posterior, you do the anterior, and then you do the जी, lateral. then we do the sides, that's correct। Because the sides are, I think, Awkward, more they are the challenging. awkward ones, So yeah, if you have planes from anterior and posterior, you join them, that give you. that's correct, बिल्कुल। अब देखिए प्लेन ये है, यहाँ प्लेन है, ये जगह पे, Yeah. और ये न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है ना, इसको टेदर कर रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम टू लीव द स्पेसिमेन। ये और अच्छा, ये भी क्लू है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं ये टेकिंग मीजो। अब देखिए मैं सिर्फ शेव कर रहा हूँ सरफेस को, सो इट लीव्स अस, तो मीजो इंटैक्ट रहेगी। ये देखिए ना, ये इट हैज टू गो अवे एंड यू हैव टू गो पैरेलल टू योर स्पेसिमेन। और ये डिफिकल्टी है मेल पेशेंट की पेल्विक राइट साइड वॉल की और स्टेट इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें रोबोट का एडवांटेज डेफिनेटली है। इधर बेटा दिखाओ, ये बैक है, ये प्लेन है इरफान मियां, ये देख रहे हैं, ये पुराने जमाने में जो हाथ से ब्लंट डिसेक्शन करते थे पीछे डाल के, वो ये वाला प्लेन था। एंड यू डोंट डू दिस विद द लिगाश्योर, ठीक है ना, सिर्फ देख लो एंड देन यू कीप सर्कम नेविगेटिंग इट, ताकि ये स्पेसिमेन की जान छोड़े। ये देखो ना, इज स्टेदरिंग द स्पेसिमेन, ये ब्लीडर यहाँ पे होगा। रोबोट का एडवांटेज तो खैर आई थिंक ऑन बोथ लेटरल साइड वापस है, आओ बेटा, लेकिन वापस आओ, राइट साइड पे राइट साइड इज मोर प्रोनाउंस, यू आर राइट, रिस्ट एब्सोल्युटली। मूवमेंट वाली की वजह हुक से। दीजिएगा बेटा, हुक दो मुझे। अच्छा अब ये देखिए, ये एक्सपोजर है शायद भाई। अब या बैक जो है ना, वो मेरा रेफरेंस है, मैंने सिर्फ या 2-3 बर्न किए कि नर्व को मैं सेपरेट करूं। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा, वेरी गुड सारा।
वापस आओ बच्चा, वापस आओ। अब इधर से दिखाओ मुझे इसको, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इरफान, देखे ना जिस तरह आप इसको होल्ड करते हो। एक मैंने ऐसे ट्रैक्शन दी हुई थी, अब मैंने सीधी ट्रैक्शन की, तो देखो ये वाइड है, यहाँ नहीं जाना, प्लेन इधर है। इस न्यूरोवेस्कुलर बंडल को परसुएट कर रहा है कि ये वापस जाए और हम इसके नीचे जाए। मशीन दीजिएगा। So we'll just go and take this bit more forward. ये हो गया, ये इरफान देखा, ये आपके स्पेसिमेन के ऊपर है। देखो ये पकड़ के ना हमारे स्पेसिमेन को इसने रोका हुआ है। It is stopping us. Move it forward here. हाँ ये देखे ना, ये वेसल साइड वॉल को बिलोंग करता है। स्पेसिमेन टर्न कर गया है। Air is telling us that it has turned already. So if it start bleeding, it means you are in the wrong हाँ place. you are lateral, you are too much. यहाँ तो मैं मीडियल होके मीजो के अंदर हूँ और मीजो के किसी वेसल को ब्लीड करवा दिया है। मोर लाइकली ये होता है कि हम लेटरल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब ये वो पुराना कंसेप्ट जो था कि यहाँ पे लेटरल लिगामेंट होते हैं। वेसल्स आती हैं, and you know, as I am an old man, you know, we used to put our robots and ligate them, you know. We thought that they were just like big arteries. लेटरल लिगामेंट कहते थे उनको। Lateral ligaments has got big vessels. You know, वो concept तो तकरीबन अब खत्म ही हो गया है, जी, क्योंकि जी, we हाँ, never नहीं, find any big vessel there. हाँ जी बिल्कुल, अगर आप करेक्ट प्लेन में हो तो जनरली यू आर ओके। नहीं पार्शल ये आपने क्योंकि कहा है मुझे कि इस पैल्पेबल स्टेन, तो ये टीएमई है इसका आंसर। अगर अपर एक्टिव हो तो पीएमई इज द आंसर, टीएमई इज नॉट आंसर। ठीक है ना। So in this patient, at what level is the neoplasm? वो बोल रहे हैं जी 10 सेंटीमीटर पे। 10 centimeters. So will you do a complete TME or will you नहीं do a नहीं partial आपको TME? नहीं, ये आप देखेंगे कि जब ये हम खत्म करेंगे तो इट वुड बी कंप्लीट टीएमई। मिड रेक्टल ट्यूमर है ना, तो बाय द टाइम यू एंड अप मोबिलाइजिंग इट, यू आर एट द टॉप ऑफ योर बॉटम एंड ऑफ योर टीएमई। तो ये Yeah. टीएमई मिड रेक्टल कैंसर के लिए जनरली स्पीकिंग मतलब जनरल कि टीएमई इज द आंसर। जो सिर्फ और सिर्फ अपर रेक्टल ट्यूमर है, जो जिसको आप 12 to 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उसमें सिर्फ आप मैं समझता हूँ कि पार्शियल मेसोरेक्टल एक्सिजन जो है ना इट वर्क्स, बाकियों में नहीं। बाकियों में और वो ये भी एक फैक्ट है। अच्छा दूसरा फैक्ट ये है कि जी आप स्फिंक्टर के अंदर जाएंगे इस ट्यूमर के लिए या आप थोड़ा सा कफ छोड़ेंगे, जिसको कहते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक टीएमई। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्फिंक्टर के अंदर जाने की जरूरत है इस केस के लिए। Yeah. But in the rectosigmoid or in the upper rectum, you can easily get a 5 centimeter distal margin. So that's why probably you don't have to. बिल्कुल उसमें तो You बिल्कुल don't वही have to करते do a हैं। complete TME. बिल्कुल कम बैक। ये उसी तरह की नर्व पैकेज है बच्चा, देखो इसको इधर आओ जरा, ये ब्लीडिंग तो नहीं है। अच्छा नहीं, अब ये लाइन है देखो फ्रंट पे, वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। अच्छा मैं आपको ना रेफरेंस बता रहा हूँ, ये देखो ये लाइन है फ्रंट पे, ठीक है, और वो लाइन है पीछे बैक पे। ये दरमियान में अंदर जो है ना एनॉमली है, ठीक है ना। सो अब इस एयर के पीछे नहीं जाना, यू विल एक्सरसाइज ऑल हिज न्यूरोवेस्कुलर बंडल एंड दैट्स अ बैड थिंग। आमिर भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ कहाँ डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर प्लेस वेयर यू कैन डैमेज द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। कि आप लैटरली चले जाए और आप यहाँ से इसको एम्पुटेट कर दें। What's your experience? The injury to the neurovascular bundle is less in robotic surgery रोबोटिक because you have got डेफिनेटली, that हाँ wrist नहीं हमने movement. इसको, हाँ हमने तो इसको थोड़ा साइंटिफिकली भी देखा क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडी के ऊपर भी। तो हमारी सीरीज में तो डेफिनेटली इंसिडेंट्स कम है विद रोबोट एज कंपेयर टू लेप्रोस्कोपी इवन इन आवर हैंड्स। तो ये तो एडवांटेज डेफिनेटली है। देखिए ना ये आपका व्यू बहुत अच्छा है, 3D व्यू है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि जब आप रोबोट से करते हैं आपके पास एंगुलेटेड हैंड भी है, so you have another factor which is helping you do this. So you have looked into it, the जी incidence of. we have looked into nerve preservation lab versus robotic in our series. तो जो सेक्सुअली एक्टिव मेल थे ना, जो ग्रुप हमारे पेशेंट से थे, उनमें उनका स्कोर बेहतर था पोस्ट ऑप रोबोटिक आर्म का
रिकवरी भी स्कोर की फास्टर थी रोबोटिक आर्म में। तो गिवन के जो फैक्ट है ना वो ये है कि जितनी भी क्वेश्चनेयर बेस्ड स्टडीज आप करेंगे वो थोड़ी Yeah. बाइस्ड होंगी, क्योंकि Yeah. आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम अपना सेक्सुअल फंक्शन रेट करो, और खासकर वो नर्सें चूंकि कहती हैं क्लिनिक में, एंड मेन टेंड टू ऑलवेज स्कोर देमसेल्फ हायर देन व्हाट द रियली इज। तो ये साइंस है नहीं है, मतलब टू टेल यू द ट्रूथ। लेकिन हमारे पास यही एक टूल है इस वक्त। हमने एक यूरोल ट्रायल की प्रपोजल दी थी विच इज measuring residual volume of urine after voiding TME के बाद, ताकि Yeah. उससे हमें पता चल जाए कि नर्व इंजरी है हुई है कि नहीं। तो वो अभी उसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम लोगों की, देखेंगे कि कब वो कितने सेंटर। उसमें प्रॉब्लम ये है इट्स अ लैब वर्सेस रोबोटिक, तो आजकल लोग जो है ना वो लैब के लिए रैंडमाइज होना ही नहीं चाहते। ये वही है ना, जिस तरह मतलब जब वो रॉबिन कैनेडी ट्रायल रन कर रहे थे, मुझे उसका नाम अभी याद आ जाएगा, इनहेंस रिकवरी का ट्रायल था, लैब वर्सेस ओपन। Open, yeah. तो So हमने 2 difficult साल to recruit. Yeah. हाँ, तो वो हमारे पास कोई मरीज रिक्रूट ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा हमने नहीं करवाना, वापस आइए। सो अब हम इसको पोस्टीरियरली देखेंगे जाके लास्ट फ्यू फाइबर्स इसको उठाने के लिए। अच्छा, इसको इरफान मियां इधर से आओ बच्चा, नीचे चले जाओगे, चलो। अब नाउ वी वुड गो राइट एट द बैक एंड आई एम गोना, इधर बेटा बस इधर रख देता हूँ। अच्छा, अब आओ साथ आओ। So, अब आप इसका पेल्विक फ्लोर देखेंगे, ये हुक दीजिएगा मुझे, ये देखें, ऊपर दिखा सकती हो अपवर्ड। ये इस स्टेज पे you are the one who is holding the peanut. आपके जी लेफ्ट हैंड में है? जी 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 जी, ये ग्रेस्पर है बस, ठीक है जी जी। मैं ये दिस इज माय हैंड व्हिच इज होल्डिंग। और आपके असिस्टेंट ने उसका हैंड जो है, इज इट बिहाइंड द रेक्टम? और जी जी जी, वो हॉकी स्टिक जो मैनूवर है ना, कि जिसमें उसने उस रेक्टम को हॉकी स्टिक किया हुआ है ऊपर होल्ड करने के लिए। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है सर्जरी का जिस वक्त हम कर रहे हैं, टू मोबिलाइज द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब फॉर द स्टेपलिंग पर्पसेस। ये वो नर्व थी जो नहीं उतर रही थी, देख रहे हैं इरफान? हाँ बिल्कुल, ये ले जी, ये रिलीज हो गया। so this release is going to help you. Yes, of course. जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, if it is not released, then you वापस आओ might बेटा, वापस use आओ, ये more कहाँ से staplers. ब्लीडिंग? हाँ जी बिल्कुल, ग्रास्पर दीजिएगा, ग्रास्पर। तो इसको ये ब्लीडिंग कहाँ से होगी भाई? हमने तो इसको बड़े प्यार मोहब्बत से सांचा था, ये कहाँ से शुरू हो गया? इधर आओ बच्चा। इट्स यूजुअली इज द न्यूरोवेस्कुलर बंडल। ये फ्लूइड है बेसिकली, थोड़ा सा भी फ्लूइड होता है तो यहाँ ट्रांजैक्शन लाइन होगी हमारी मोस्ट लाइकली, बट आई एम जस्ट गोना गो बैक एंड रिलीज द लास्ट फाइबर्स, क्योंकि वो जो रिलीज है दैट अलाउज द स्टेपलर टू सिट ऑन द फ्लोर एंड इट अलाउज द रेक्टम टू मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, ये बटक्स, बिल बटक जिसको बोलते हैं। अब ऊपर दिखाओ बेटा, ऊपर 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 दिखाओगे? कैमरा एक दफा साफ कर हाँ, लीजिए। कैमरा साफ कर लीजिए, कैमरा साफ कर ले। So I'm going to release the last few fibers so the rectum leave the pelvic floor, जिसको एनोकोक्सीजियस बोलते हैं, या एनोकोक्सीजियल लिगामेंट बाज लोग उसको बोलते हैं, जो मीडियन रेफाई मुख्तलिफ नाम है। जब तक आप वो रिलीज नहीं करेंगे, आपकी टीएमई के ऊपर ट्रांजैक्शन में स्टेपलिंग नीचे आ नहीं पाएगी। तो I'm gonna do this, then we're gonna do a digital examination to make sure कि जहाँ हम जो हमारा डिजायर्ड एरिया है ट्रांजैक्शन का, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्लियर है, और फिर we would just do the stapling. So बेटा ऊपर दिखाओगे 30 up, 30 upward, there you go, well done। अब आओ, ये लीजिए जी, ये आपके सामने आ जाओ। 30 up कैमरा है? रोटेट किया आपने? नहीं नहीं, इसने 30 अप साइड दिखा रहा है बेटा, ऊपर दिखा रहा है। अब मुझे ऊपर दिखाओ ना ऐसे, हाँ। अब स्लोली ये यहाँ जाइए, थोड़ा सा ना हम दोनों साथ काम करेंगे तो फिर ये अंजाम पे पहुंचेगा। इरफान मियाँ का दिल धड़क रहा है, जोर जोर से कह रहे हैं बाउल पीछे ही है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये आप बर्न कर सकते हैं विदाउट सीइंग। आहिस्ता, इसको अब इधर से ना आहिस्ता हो बेटा।
So I'm gonna release it from this side. ये important है to realize कि देखें कितना ऊपर चला गया ये. हमजद आर्टिकुलेटिंग हुक कभी यूज किया आपने? जी सर, जब ये शुरू में आपको याद होगा ये एक जमाने में चली थी वो कि आर्टिकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट आए थे तो हमने यूज किए थे शुरू में, लेकिन वो जिस तरह लाइक एनीथिंग एल्स वो वेव आती है, वो उसमें फलक्रम बहुत बड़ा होता था, वो लंबी सी शैफ्ट थी उस हुक की, वो डेप्रीज, उसको डेप्रीज फोर्सेप्स बोलते थे। वो एक मेरा ख्याल है कि एक इटालियन सर्जन था, उसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, डेपेरीज या डेप्रीज इसके नाम से था। तो ये उस वक्त हमने भी यूज किए जब सब जगह पे फैशन में था। So here we go. एंड उसका लिगा का भी आया था ना, जिसकी जी जी जी, जिसमें एंगुलेट, इसमें हुक भी आ जाता था। हाँ, जिसमें you know, you could actually tilt it, but I mean we tried it as well, लेकिन tilt की वजह से that instrument is not as strong, sometimes you need to push with it. तो हमने भी try किया, लेकिन we never actually used it for that long. लगता है अब थक गई है। मैं बहुत कॉन्शियस हूं कि मैं इधर ना जाऊं, दिस इज टू फार आउट, so I'm trying to stay on to the specimen ताकि ये मुझसे सेपरेट हो जाएगा, like this, and this is the pelvic floor now. ये देखिए, okay, I think we are low enough now, वरना टेम्पटेशन ये है कि हम डीप से डीप, अब मैं जस्ट गोना सी इट फ्रॉम द साइड्स नाउ टू मेक श्योर वी आर गुड, और फिर हम ट्यूब डिफाइन करेंगे कि हमने इसको ट्रांजैक्ट कहाँ करना है। सो चलो बच्चा आओ सारा दिखाओ, ये इसके फार्मिया यहाँ लें। सो वी जस्ट गोना सी द लेफ्ट साइड फर्स्ट। सी, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे टाइम के साथ मैंने भी सीखा है। जब नीचे से किए जा रहे थे तो दूर से दूर हुए जा रहे थे, अब देखे इट हैज टर्न्ड ऑलरेडी, आई रियली डिडंट नीड टू बी गोइंग दैट फार डाउन। तो एक खास स्टेज के बाद हैव अ लुक एट इट अगेन। अब ये साइड जो है ना, ईयर मैंने बता नहीं, इसको बस ये जो साइड है ना, ये वी जस्ट गोना ट्रिम दिस ईयर, वी गोना कम ऑन टू द ट्यूब एंड देन वी आर डन। वो मशीन दे दे, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बड़ा आसान है, मतलब गोइंग डाउन, इधर नहीं जाना। ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, हमने अब इसको फॉलो करना है शेप ऑफ द स्पेसिमेन को, और इसको हमने रिलीज करना है अपने स्पेसिमेन से, लाइक दिस। ठीक है इरफान, आप मुतमईन है इससे? ये लीजिए, ये आखिरी बर्न है जो पेल्विक फ्लोर दिखाएगा आपको, यहाँ पेल्विक फ्लोर है। ठीक है, अब वापस आए, इसको अंदर है, इसके अंदर रहना है इस पैकेज के, इसके बाहर नहीं जाना। ओ यारा मामा, वापस आइए। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फ्रंट है, ठीक है, इधर नहीं जाना, जस्ट द सरफेस, और ये नहीं कि चू करके बहुत सारा जरा, बिल्कुल सरफेस को, ताकि ये हमारे हमें छोड़ेगा तो हमें ट्यूब नजर आएगी इसके नीचे। देख रहे हो इरफान पीछे बैक पे ना, हाँ टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है, और ये इंटैक्ट रखना है, साइड जो पेल्विक साइड वॉल है ना, ये इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये अगर आपको मसल बहुत क्लीन नजर आए ना ये वाला, देन यू गॉन बिहाइंड दिस फेशिया, ये नहीं करना। ये लीजिए, जब राइट साइड को देखते हैं, इसको बच्चा इधर लेफ्ट पे लेके जाओ, दूसरी साइड पे जो लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट जो है। चलो आओ भाई इरफान मियाँ इधर, ये हम है, ये हमारा हाथ है,
अब ये देखिए यहाँ से सब कुछ हमने कर लिया होगा, हमें सिर्फ वही चीज जो है ना साइड से ऊपर लानी है, वेसल्स को छोड़ते हुए। ठीक है इरफान ना, फिर बैक नहीं दिखाओ बच्चा, वापस आओ वापस आओ। इसको ना हाथ को डिस्प्ले करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये देखो इरफान मियाँ, ये देखिए वेसल आपको पल्सेशन नजर आ रही है। दिस इज व्हाट पीपल टेक, दिस इज व्हाट पीपल मिस्टेक इट फॉर। सो प्लेन इसके अंदर है। अब ये हमें हमारी ट्यूब पे ले जाएगा यहाँ पे। दिस इज वेयर द TME ends, दिस इज स्पॉट ऑन। ये देखिए इरफान, ठीक है, ये मोबिलाइज हो गया। इसको टेयर नहीं करना, ठीक है, ये मतलब टेंशन में बंदा जल्दी के चक्कर में इसको टेयर कर देता है। इरफान को इस वक्त पोर्चुगल याद आ रहा है, जहां वो आपके साथ जी जी, जो ऑपरेशन करता था। इरफान को बहुत मिस करते हैं पोर्चुगल वाले। अभी भी पूछा है उन्होंने कि जाओ तो पता पूछो कि चीन का तोता किस हाल में है। तो मैं मैसेज लेके आया हूँ इसके लिए। नहीं नहीं, he had a fantastic year in Portugal, माशाल्लाह। He actually made everybody very proud. So ये बाउल ट्यूब आ गई, ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल आ गया, ये पेल्विक फ्लोर आ गया साइड पे। ठीक है जी, एवरीबॉडी हैप्पी? आमिर भाई आप यू अप्रूव ऑफ दिस? यस। चलें जी, बुजुर्गों ने कह दिया तो बस तो हो गया। क्योंकि मैं इसको मोबाइल ऐप पे देख रहा हूँ, वहां पर इसकी रिसेप्शन बहुत जबरदस्त आ रही है। अच्छा चले फिर तो अच्छा है। तो ये हाँ जी एशलॉन 45 क्या लगाओगे इरफान मियाँ, बताओ हमें। नहीं नहीं बताओ भाई, आप अफसर आला हैं यहाँ के, हम तो शामिल बाजे हैं जो आ जाए। हाँ 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 जी 45 पे। अच्छा बेटा वापस आओ, कम बैक विद योर आइज। अच्छा जी, अब ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, और ये ट्यूब है जी। एवरीबॉडी पेल्विक फ्लोर जी जरा मैं दिखाता हूँ जी, मैं भी आई जस्ट गिव यू अ व्यू ऑफ एवरीथिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये, अच्छा फीमेल पेशेंट होगा तो ये यहाँ पे बैक वॉल ऑफ वजाइना आती है, तो आपको थोड़ा सा ना उसको फ्री करना पड़ता है ताकि सर्कुलर स्टेपलर ना उसको कैच ना कर ले। ये एक टेक्निकल टिप है फॉर फीमेल पेशेंट्स। मेल में गो के इतना इशू नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसको यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी ताकि मेरा स्टेपल यहाँ बैठेगा एंड वी आर गुड हेयर। तो आमिर भाई की फरमाइश पे अब हम जो है ना वो कुछ एनाटॉमी का टूर दे दे। वापस आओ बच्चा। सो कम बैक आपके ऑल द साथ वे। कोई दूसरा प्रोफेसर तो नहीं है कि बिल हील की नहीं तरह, नहीं, प्रोफेसर बिल हील की तरह इधर मुझे स्वाब फोलो दीजिएगा। विजाइनल एनास्टेमोसिस करने के नहीं नहीं लिए? अल्लाह ना करे, मुझे स्वाब दे एक बेटा, हाँ स्वाब दो। ये टेल देम दिस इज गोइंग इन, आई एम गोना गिव यू द अदर वन बैक। ये मैं इसको ना, इस ब्लीडर को थोड़ा होना नहीं चाहिए था यार, ये इरफान क्या हम लोगों ने ना एक ही चीज 3 दफा। चलो इसको फिलहाल तो यहाँ रखो ना, इसको फिर देखते हैं अभी। हमने यहाँ पर कई दफा वो स्टिच लगा के हिच कर जी जी लेते हैं जी जी बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं वो आज असल में आई एम वेरी लकी कि मेरे पास जाहिर है कि सिस्टम्स बहुत अच्छी थी, और इसका फायदा होता है इसको, इस वाली पेरिटोरियम को ना हिच करता हूँ मैं ताकि जो मेरा असिस्टेंट है वो डीप जा सके प्लेजेट के साथ। तो आज एक तो ये थोड़ा फेवरेबल था, और दूसरा यह है कि असिस्टेंट्स वाज वेरी गुड, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, तो हमने उसके लिए कहा नहीं। तो मुझे अब मैं आपको थोड़ा सा ना जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ फ्यू थिंग्स। पीछे आओ बेटा, वापस आओ द कैमरा। सो ये जी पेल्विस को दिखाओ नीचे। सो ये आपकी एनाटमी शुरू होगी यहाँ से। जो वेसल इरफान ने लिया, ये लेफ्ट यूरेटर है, लेफ्ट कॉमन आइलियक हो गए, ये बाइफिकेशन आ गई आइलियक्स की, ये राइट यूरेटर है। और यहाँ पे आपको हमने नर्व्स दिखानी शुरू की थी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। इसको ऊपर हिच करो इरफान, हाँ ऐसे, ठीक है। अच्छा इरफान ने अब इसको हिच कर दिया। ये TME के 2 बटक्स जिसको बोलते हैं, ये पैकेज है। ये प्री सेकल फेशिया, ये है सारा सेरोगेट मार्कर इस सर्जरी का। अगर ये इंटैक्ट है ना तो ये वेसल जिसके पीछे, अला मामा इधर बच्चा, इस साइड से, इधर से, हाँ इधर से दिखाओ। तो ये
पेल्विक फ्लोर को इसने कवर किया हुआ है, इसने हर स्ट्रक्चर, ये राइट नर्व है जो जा रही है, ये कवर्ड है, और ये इसको नीचे आओ बेटा, इसको और ऊपर दिखाओगे, अब ऐसे वापस आओ ना, जरा वापस आओ, वापस आओ इरफान मियाँ, यहाँ से पकड़े, नहीं ज्यादा ना जाओ बेटा, डैमेज हो जाएगा। हाँ, इसको इधर आना, इधर इसके नीचे जाओ, हॉकी स्टिक देर। अब इसको बेटा 30 ऊपर दिखाओगे। ये ओके, नर्व के साथ एक जी ब्लड वेसल भी जी थ्रू आउट ट्रेवल जी कर जी रही जी जी है। बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी अच्छी आमिर जगह है। आमिर भाई, ये है पेल्विक फ्लोर जो आप देखना चाह रहे थे। तो जब आपने ऑलमोस्ट कोलोएडल एनास्टोमोसिस करना होता है ना, तो यू फॉलो दिस प्लेन हेयर, ये आपको इंटरस्फिंक्टेरिक लेयर में, क्योंकि मैंने वहां जाना नहीं है, मैं इसको यहाँ ट्रांजैक्ट करूंगा इसी लेवल पे, ठीक है। आई वांट टू लीव दिस इन, लेकिन ये है पेल्विक फ्लोर राइट ऑन द फ्लोर। इधर ही रहो बेटा, इधर ही रहो, इधर रहो, मैं दिखाता हूँ। ये न्यूरोवैस्कुलर बंडल ये रन करता है, जिसके बाहर जाए तो ये ब्लीड करता है, इसके आपने अंदर रहना है। दिस इज वेयर द लाइन इज, ठीक है ना, ये लाइन है ये, ठीक है आमिर भाई। बिल्कुल। सो आई कैन रिलीज दिस नर्व। अगर आप इसको भी रिलीज कर लें तो आपकी तो आप, स्टेपल अच्छी लगेगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आई वुड रिलीज दिस बिट मोर ऑन द राइट साइड, ठीक है ना, ये जो जगह है इसको मैं रिलीज करता हूँ। दे जी मुझे मशीन, ये दे दे, मशीन दे दीजिए, ताकि मैं उसको ऊपर से बिल्कुल एपेक्स पे जाके रिलीज कर दूं। स्लोली कम इन। सो यहाँ पे ये एपेक्स ये है ऊपर, वापस आओ बच्चा। ये रिलीज होगा ये। गुड। चलें जी, अब ये लास्ट बर्न है, देन वी डू द रेक्टल एग्जामिनेशन एंड देन वी स्टेपल इट। ठीक हो गया, ये दिखाओ बच्चा, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर ये जॉ वाला इंस्ट्रूमेंट बजाय डायथेमी हुक यूज करने का सिंपल मकसद ये है, हुक से अगर मैं करते हुए होल्ड कर दूं ना बाउल में, दैट्स अ प्रॉब्लम। आई वांट टू ग्रैस्प समथिंग टू पुट इट अवे फ्रॉम द बाउल, लाइक दिस। ये ऐसे किया, इसको मूव किया ऐसे और फिर बर्न किया। सो देयर इज अ रीजन, ये वजह और कोई नहीं है। चलो बच्चा वापस आओ, ऑल द वे बैक, वेरी गुड। लेट्स लुक एट इट नाउ टॉप डाउन यूजुअल वे। चलो अब हम इसको चेक करते हैं, इरफान छोड़ो बेटा वहां से। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा स्टेपल कहाँ जाएगा। इरफान यहाँ ना, जेंटली जेंटली आओ, जेंटली आओ। ये यहाँ से ऊज एक बनाना, स्लो करना बच्चा। ये ऊज कहाँ से था यार, हमने मिस क्यों किया ये ऊज को। मीटिंग वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। इरफान इधर आओ ना, अपोजिट साइड पे, इधर इधर ऊपर वाला एरिया पकड़ो इसको ऐसे। ये है ना, वापस 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 वापस, थोड़ा सा वापस। ये कुछ भी नहीं है, लेट्स जस्ट ट्रांजैक्ट करके फिर इसको क्लियरली देखते हैं ताकि इसको फिर स्टॉप कर सके, ठीक है। अच्छा, अब इरफान मियाँ, ट्रांजैक्शन के बारे में क्या ख्याल है। इसको सेंटर में ले जाओ ना, इसको सेंटर में रखो। नहीं नहीं, आप अपने हाथ को इरफान सेंटर में लाओ, काउंटर ट्रैक्शन हैंड को। सो आई विल टेक द गॉज बैक। आप आओ बेटा, दिस इज ऑल फ्री, दिस इज ऑल फ्री, दिस इज ऑल फ्री, ठीक है जी। लाओ जी, वापस आओ। ये रही, आई डोंट लाइक दिस, ये क्या बकवास है। वापस आओ, ऊपर उठाना। क्या एनोइंग सा है ना ये ऐसा है कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हुक दे यार, ये मासूम सा ऊज कहीं बहुत बड़ा ऊज ना बन जाए, महान आदमी। आओ, चलो चलो जी, वापस आओ जी, छोड़ दे इरफान। अच्छा, अब आओ जी, फिर दोबारा स्टेपलिंग की तरफ चले। ये वापस आ जाएगा हाथ, शी इज पुलिंग इट आउट, दैट्स गुड। एंड यू गोना गिव मी द स्टेपलर प्लीज। लाओ जी, पीछे गॉज तो नहीं रखा हुआ कोई। अच्छा, तो
तो ये आ गया, इसको खोलो बच्चा, ये open this. I think one of the benefit of laparoscopic and robotic surgery is Staple खोलो कि बच्चा। आपकी पूरी कोशिश होती है अच्छा, नहीं, कि फील्ड में नहीं, ब्लड ना हो। जी जी, इसको ना वापस पोर्ट को वापस खींचो थोड़ा सा, वापस अब आ गया। अब इसको खोल बच्चा, गन को। अरे इतने इंतजार से गन रखी हुई थी कि कब आएंगे, कब ये गन इस्तेमाल होगी। अब गन खुलने से इनकार कर रही है। यार तुम लोग भी मेरी तरह ही हो। ला खोलो खोलो, इसको खोलो। ये इसको बंद क्यों किया है किसी ने? ना ना, निकालो, वापस निकालो। छोड़ो छोड़ो बच्चा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों ये खोल रही क्यों? ठहरे जी, हम गन का ट्रबल शूट कर ले, वो खोलने से इनकार कर रही है। गन भी हमारी तरह ही है, जब काम का वक्त आया तो शहादत। तो यहाँ आप कौन सा ग्रीन मैं या ब्लू यूज 45 ग्रीन यूज करना चाहता हूँ मैं। दूसरी दे दे जरा, दूसरी खोल दे। ये नहीं, ये मेल फंक्शन है गन का, ये बाद में तंग करेगी, ये खोल ही नहीं रही। सो विल यूज 45। ये नहीं, ये अपने, मेरा ख्याल है कि आखिरी अयाम गुजार चुकी है, ये आखिरी सांसें ले चुकी है इरफान। इसको इसको रखे। still trying? हाँ नहीं, they would try of course. It can't be Shaukat Khanum unless it is lack of trying, you know. लाओ जी, ग्रीन स्टेपलर डाल दो। Man, why green? Why not हाँ जी, blue? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और इसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू थिकनेस और स्टेपल हाइट, पोस्ट रेडिएशन टिश्यू इज ऑलवेज थिकर देन द नॉर्मल। अगर अप फ्रंट सर्जरी हो तो ब्लू इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर एनी बाउल। रेडिएशन वाली जो है रेक्टम जो है, उसमें ग्रीन यूज करते हैं। बल्कि टू टेल यू द ट्रूथ, बाजू का तो इतनी बुरी रेडिएशन इफेक्ट होता है कि ग्रीन भी वहां पे जो है ना काम नहीं आता, तो ब्लैक यूज करते हैं, जो एक स्टेप अप है। जो मेरा ख्याल इस मुल्क में बैरियाट्रिक सर्जरी काफी मतलब फैशनेबल है, वो लोग यूज करते होते हैं ये, मतलब जो है ना ब्लैक स्टेपलर, क्योंकि वो स्टमक के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो ग्रीन और ब्लैक और ग्रीन और गोल्ड, एक गोल्ड भी एक मेरा ख्याल आता होता है। मैं तो मतलब एक ग्रीन ही यूज करता हूँ। आइए जी, तशरीफ लाएं। Yeah, I mean we have never actually used black. Gold भी हमने बहुत rarely. Gold is in between the blue and green. जी जी। सो ये आए हम फ्रंट टू बैक, और ये So अब आगे इधर। आमिर भाई, as it is a male इजाजत है? patient, that why you are using 45, जी जी Amjad? जी 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 जी, बिल्कुल, दैट इज द रीजन। इजाजत है आमिर भाई? बिल्कुल। चले जी। हाथ रोटेट कर लिया। जी जी, हाथ रोटेट हो चुका है। ये 12 to 6 o'clock डिवीजन है, और अब इरफान मियाँ ने गन को पकड़ा हुआ है, और हम जो है ना दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये काट दे। लीजिए, कट गया जी। सेकंड फायरिंग प्लीज। और मुझे इतनी देर में बेटा वो वाला मशीन दो जो है लेके शो टाइप जो होती है। और अब हाँ जी, 45 इसलिए कि मेल पेशेंट था, अगर फीमेल है तो आप 60 भी यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। अरे अब तो जाओ यार, अब भी नहीं जा रहा, लड़ाई कर रहा है। अच्छा, ये गॉज पीछे वाला ना ख्याल करें, ये छोटी सी चीजें हैं बाजू का। बस ठीक है बच्चा, वापस आ जाओ। नॉट टू कैच दैट गॉज इन द स्टेपलर, ठीक है। कोई भी चीज जो है ना वो इट्स नॉट अ सिंगल वन बिग ट्रिक दैट वुड मेक यू लर्न थिंग्स, यू नो, देयर आर सीरीज ऑफ लिटिल थिंग्स दैट मेक्स द डिफरेंस। अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है। वापस आओ बच्चा थोड़ा सा, अब मेरे साथ जाओ, गो इन। सो आई वांट टू सी कि ये इसके ऐसे चला गया, ठीक है, और गॉज नहीं लिया, ठीक हो गया जी। फ्यू सेकंड्स टू वेट। पकड़ो जी, पकड़ लिया। Amjad, do you use the motorized जी जी stapler? जी जी, हाँ वो आसान है, जाहिर है। अब तो मोटराइज ही यूज होते हैं। सीजर दीजिएगा। ये तो हमने गॉज को जिसकी हम बात कर रहे थे वही हुआ ना। नहीं, गॉज नहीं है, बावल ही है, ठीक है। इसको देखें ताकि स्टेपल सारे चले गए क्रॉस, तो फिर काटेंगे। स्टेपल जरा क्रॉस, ठीक है। अच्छा, वापस आओ बच्चा, थोड़ा सा स्लो। अब आओ साथ हमारे। And then while applying the stapler, sometimes people apply it and leave it for a time being. जी, 20 सेकंड, सम पीपल डू इट। खासकर अगर एडीमा बहुत ज्यादा हो आमिर भाई, अगर आपने Right. काम करते हो कि एडीमा बहुत ज्यादा बाउल में नजर आ रहा है, तो अप्लाई करके अब आपको थोड़ा सा हम ये देंगे आइडिया कि अब इतनी मेहनत हम किस लिए कर रहे थे। कैमरा क्लीन कर दीजिए सारा। सो हाँ, यू कैन लेट गो देयर। तो आई विल जस्ट शो यू द स्पेसिमेन, देन आई विल शो यू द पेल्विस,
और उसके बाद आई एम गोना लाई डाउन ऑन द फ्लोर और इरफान को कहूंगा कि इसको हेड अप करे, फिर इसका फ्लेक्चर मोबिलाइज करे। आई होप इट वाज यूजफुल। जो आपको हमने दिखाने की कोशिश की है, इट इज क्लोजर टू व्हाट यू यूजुअली डू इन योर प्रैक्टिस टू। छोड़ दो, दोबारा साफ करो बेटा। आई थिंक जो अगर मतलब बहुत से लोग हमें सुन भी रहे होंगे या देख भी रहे होंगे, और खासकर जो यंग लोग ऑन्कोलॉजी सर्जरी सीखना चाहते हैं, सर्जरी जो है वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट है कैंसर केयर का। मतलब इसमें बहुत सारी और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये पेशेंट का यहाँ आना, इस ऑपरेशन के होने से पहले बहुत सी चीज़ें हैव टू गो द राइट वे। स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, न्यू एडजुवेंट का रोल है, उसको देने की जरूरत है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, और वो देने के लिए लोगों का होना जरूरी है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज कि सिर्फ ये टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सर्जन हैं, हमें ऑपरेशन का शौक है, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। इसे बेटा दिखाओ, इधर नीचे नीचे दिखाओ। अच्छा आमिर भाई, ये अब आपको हम टीएमई स्पेसिमेन दिखाने की कोशिश करते हैं, और आई होप कि ये आपके स्टैंडर्ड को मीट करेगा। ठीक है जी। और ये वहीं पे स्टेपल लाइन डिवाइड कर रही है जहाँ मीज़ो ख़त्म हो रही है, देखें ये बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है जी, ऑल द वे अप। और अब हम आपको एम्प्टी पेल्विस दिखाने की कोशिश करते हैं। ठहर जो बच्चा, इसको मैं गॉज दे दूं वापस। So, Prof, sorry, there's a question for you. अरे महान आदमी, कहाँ थे तुम? मैंने तो कहा चले गए हो। नहीं, so there's a question about the transaction, that whether it should be cut transversely or जी vertically. Is there जी any हाँ difference हाँ, between गुड गुड those? क्वेश्चन। आओ जी, जी। पहले इनको हम पेल्विस दिखा दें। यहाँ से शुरू करते हैं। मैं फाद आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। जी। ये है राइट नर्व, ये देखिए ये, और ये है लेफ्ट नर्व जो इस पेडिकल के अंदर रन कर रही है। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ। ठीक है, ये इसका लोअर स्प्लैनिक नर्व जो प्लेक्सस है वो नीचे है। ये इसका एम्प्टी पेल्विक फ्लोर है जो आमिर भाई ने हमें कहा था दिखाने को इनको। और ये वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं जो चीज़ें सीखने। अब आओ ना इधर। जब हम इधर से आए ना, यहाँ से हमने टीएमई शुरू की। ठीक है, वी वेंट ऑल द वे। वापस आओ बच्चा, सारा साथ आओ। When I came here, तो मुझे वेन पहली दफा नजर आई, तो मैंने कहा नो, वी हैव टू कम फॉरवर्ड, दिस इज द टॉप ऑफ द वेल्डाइल्स फेशिया। ये जो जगह है, यहाँ से देखो आर्क में ना स्पेसिमेन आगे ऊपर मूव होता है। अगर इसको आप अप्रिशिएट नहीं ना करेंगे सर्जरी करते हुए, तो व्हाट यू वुड एंड अप डूइंग इज कि आप इसको प्री सेकल वेन से अंदर घुस जाएंगे। तो आपको स्पेसिमेन को ऊपर फॉलो करना है। अब इधर आओ इस जगह पे, ये देखिए इसके इस ऊपर फेशिया है। अगर ये करीब आएगी ना लड़की, तो आपको नजर आएगा। सारा वुड शो यू दिस। ये देखिए ये थिन लेयर फेशिया है जो इसको कवर कर रही है। और ये सरोगेट मार्कर है आपकी टीएमई सर्जरी का, कि हाउ द टीएमई सर्जरी शुड बी डन। वापस आओ। अब स्टेपल की बारी आई। हमने इसको डिवाइड किया है बिटवीन 12 टू 6 या 1 टू 7 ओ क्लॉक। ये दो स्टेपल यहाँ मिले हैं हाफ वे। यहाँ से हम इसका वो स्पाइक निकालेंगे टू डू द सर्कुलर एनास्टोमोसिस। अगर आप साइड से स्टेपल करोगे ना, ये देखो इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, इट वुड ऑलवेज गो ओब्लीक। ठीक है, और अगर वो एंगुलेटेड हो भी जाते हैं ना, तो वो 42 डिग्री 44 डिग्री से ज्यादा एंगुलेशन नहीं है। So you would never have a 90-degree clean cut, so you will have an ischemic segment of the distal stump। उसमें लीक के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम इसको फ्रंट टू बैक स्टेपल करते हैं, ताकि इधर गैप हमने इसी उसके लिए जरूरी ये था कि आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू मिनट्स में वी वेंट बैक एंड वी रिलीज इट फ्रॉम हेयर अप टू देयर, ताकि ये ऊपर चली जाए ट्यूब, ताकि स्टेपल बैठ सके। ठीक हो गया? Is And it usually clear you to end up everyone? with a S-shaped staple line Yes, exactly. going from front to bottom to Yes, behind, yeah, बिल्कुल हाँ, bottom. बिल्कुल उसको आपने to make sure कि वो ना हो। अब now I'm gonna put this back in। ये आपको देगा आइडिया, देखे स्पेसिमेन का, कि ये स्पेसिमेन है जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही थी। ये मैं प्लेजेट दे दूं, हमारा नौजवान जो है स्क्रब नर्स, वो बार बार इशारे कर रहा है, बोल नहीं रहा मुंह से कुछ, लेकिन वो नर्वस है कि प्लेजेट गुम ना जाए। I know why he's nervous, क्योंकि जाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीजिए। अच्छा जी, अब इसको बेटा दिखाओ कोलन को ऊपर। इरफान में आ जाए इस तरफ, हम तो जाए, हम तो सोशलाइज करें दोस्तों के साथ, आप इधर रगड़ा खाए। अच्छा इधर आओ। ये देखिए, हालांकि ये बड़ा लग रहा है कि लूप इतनी ज्यादा है, छड़ यारा मतलब मोबिलाइज हो गया है ना, निकाल लें। अब ये टेम्पटेशन है ना, देखें मैंने आपको कहा था कि दिस वुड ऑलवेज बी अ टेम्पटेशन। वेन इसने हाई ले ली है, प्रेजेंट्री यहाँ से फ्री हो गई है,
आमिर भाई ने पैंक्रियाज, इसको रोकोगे बच्चा ऊपर इरफान, इसको ला के ना इसको ऐसे रख जरा। You know, Amjad, they say that Pathans have got long sigmoid colons. So maybe not in every patient you need to mobilize them. You know, Khyber teaching वालों ने मुझसे रिव्यू कराया था, एक पेपर इन्होंने लिखा था specifically on volvulus and primary anastomosis of volvulus about I think 20 years back. इसको कर हाँ, इसको ऐसे कर। Because it's quite common In here. in here. तोड़ना नहीं बेटा। You have been, इसको you have उठा ले, trained इसको this. सिर्फ पकड़ उठा। Yes, नहीं that's इसको fine. ना बच्चा, Demo lot. ना इसको इधर से रखो ना ऐसे, ठीक है, और इसको सिर्फ उठा लो। Can you support it? मुझे लगता है तोड़ ना देना, बस बस इधर आ बच्चा। अब इस पैंक्रियास दिखाया इनको, केड़ा पैंक्रियास से जड़ा तेन लेबरिया नहीं से मुड़िया। आमिर भाई कह रहे हैं पैंक्रियास हमें नजर नहीं आया। अच्छा ये आ गया जी पैंक्रियास, ऊपर से दिखाओगे। ये आ गया जी पैंक्रियास। आमिर भाई ये पैंक्रियास है और ये मेसोकोलोन है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा इससे, वैसे इसमें सारा कुछ तो कर दिया है, इज ड्रॉप्ड इट ऑलरेडी, यू कैन सी इट कि ये इसका अपर बॉर्डर यहाँ पे है, ये जा रहा है यहाँ पे और ये लाइन है इसकी, ठीक है। तो गिव मी दिस बर्निंग मशीन, ताकि मैं थोड़ा सा इसको और ड्रॉप कर दूं, ताकि ये बाद में फ्लेक्सर मोबिलाइज करते होकर इसको जोड़ देगा इससे। ठीक हो गया? गुड। शायद भाई मैंने ना आपका मतलब वो आपका कमेंट मेरे उसमें गायब हो गया कि उन्होंने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया था, वापस आ बचा थोड़ा सा। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट मैंने सुना वो ये था कि पठान पॉपुलेशन की जो कोलोन है वो काफी लंबी होती है। you know, it is the sigmoid colon जी जी which is apparently quite looped and long, and that's why the incidence of volvulus is higher that's correct in this part of the world. नहीं आई एग्री। और असल में वो जो सिग्मॉइड है ना वो हमारी यूज इतनी ज्यादा है नहीं है उसके लिए। हमें डिसेंडिंग चाहिए कि अगर डिसेंडिंग बहुत बड़ा लूप हो तो फिर फायदा है। I agree with it. You know, even if you have a redundant sigmoid, even then it is better to mobilize the spinal fracture because you want to join the descending colon rather than sigmoid colon. बिल्कुल, बाय प्रेफरेंस आप वही ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि sigmoid colon की, if you have taken a inferior mesenteric, you have obviously taken the main blood supply of it, so it is always better to join the descending rather than sigmoid. Agree. अब ये एक लेयर है जिसको हमने खोल दिया है। थोड़ी सी लिमिटेशन इस स्कोप की ये होती है कि साइड से नहीं दिखा पाती इतना अच्छा, ये फ्रंट या बैक सिर्फ दिखाती है। सो लेयर पैंक्रियास के ऊपर है, ठीक है जी इरफान, ये पैंक्रियास के ऊपर वाली लेयर जो है ना, ये लेयर है। So you want to go into the lesser sac? If I can, yes, of course, this is the area to go to, right? थोड़ा सा हमें इसमें लिमिटेशन अगर भाई ये है कि ये वो 3D स्कोप है तो ये साइड से हमें नहीं दिखा पा रही, लेकिन शी इज डूइंग अ गुड जॉब। ये लेयर है टू गेट इनटू द लेसर सैक। हम पहले 2D पे करते थे और जब से ये 3D पे आया है तो इन बिटवीन 2D एंड 3D स्विच करते हुए में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। You have this problem while doing laparoscopy versus robotics? नहीं बिल्कुल है, नहीं आई हैव, मतलब आई वोंट प्रिटेंड कि ये जाहिर है मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है। रोबोट तो हर चीज आपके मतलब उसमें हाथ में है ना, कैमरा भी आपके पास है, खुद इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपकी अपनी है, तो वो आपको मतलब जो खासकर जब मतलब आई ट्रैवल एंड आई डेमोन्स्ट्रेट, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कहते हैं तो आई वंडर कि मुझे वो हेल्प कौन करेगा, मतलब जो है ना लोग कैसे होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे कि नहीं। रोबोट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड है, एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे और एक ही तरह का ऑपरेशन होगा, तो इट्स अ बिग डिफरेंस, यू राइट। ओके इरफान मियां, Do you still use your swab technique for the हाँ splenic जी हाँ, flexure? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही ऑपरेशन है, वही करते हैं हम। स्वाब इधर रखेंगे और इसको ऊपर से देखेगा।
इसके नीचे जाना चाहते हैं हम, इधर से ना, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन प्लेन ऊपर है, इस जगह पे है, नीचे इधर ना जाना, ये पेंक्रियाज है, ठीक है ना। द प्लेन यहाँ है, ये जगह है, ये देखो डिफरेंट है, दिस इज द डिफरेंट एरिया। सो आई एम गोना जस्ट लूसन इट अ बिट फॉर यू। आप फ्लेक्चर ऑलमोस्ट कर चुके हो, साइड से तो आप आ चुके हो, आई कैन सी इट। Prof, so there is another question from the online audience. They wanted to know the differentiation between pancreatic or peripancreatic fat and the mesocolon. If you could जी जी, please. आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस, ठीक है, गौर दिखाओ। जी जी। सो आपने देखा है कि जो पेंक्रियाज है, you are seeing it actually rather than explaining it, it's easier to demonstrate by showing you just there, ठीक है। ये जो ये पेरीपेंक्रियाटिक फैट लेयर है जिसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मीजोसिग्मोइड या जो मीजोक्लोनिक लीजन है, ये लेयर है, वो ऐसे स्वीप करेगी पेंक्रियास के ऊपर, एंड देन इट गोज अपवर्ड। हम दोनों किससे लड़ रहे हैं, मूसा ही बन गए, आपस में लड़े जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि खुदा किधर है। जी जी। तो ये आपकी ये ट्रांसफर्स कोलॉन है, ये देखें इस जगह पे। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि वो इधर एंटर हो जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि पेंक्रियास ये पड़ा हुआ है, वो कहेंगे यहाँ आप एंटर हो जाए, ठीक है ना, डायरेक्टली दिस वुड बी। इसमें रिस्क ये है कि अगर इसकी नीचे रन कर रही है ना मार्जिनल, तो आई एम गोना नॉक इट। अब ये देखो काफी ज्यादा ऊपर फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा कोलॉन है इसके ऊपर। तो आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, अब ये देखो, ये कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाया, ठीक है ना, इसको ऐसे उठाया, बेटा इधर दिखाओ, इसके ऊपर से मुझे ना पेंक्रियास की लाइन दिखा दो। इसमें कोई वेसल नहीं है, ठीक है, वेन आपने ले ली हुई है ऊपर, आप इसको रिलीज कर दें, ठीक है, एंड देन दे हमदे गो। जी सारी सारी डायसेक्शन में आप यही बता रहे हो कि फॉलो द एयर, फॉलो द जी जी जी, एयर। बिल्कुल बिल्कुल, सारी क्लू आमिर भाई ये है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। So why फॉलो don't you द inject air into the lesser sac? ये अच्छा आइडिया है, हमने आज तक कभी सोचा नहीं है, लेकिन Yeah, ये दिस कुड बी समथिंग। I would use a varus needle here. आमिर भाई, आप ऐसा काम करवाएं जो ना पहले कभी किसी ने देखा हो, ना सुना हो। ये ऑपरेशन खत्म होने के करीब करीब है, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, इनको किसी और काम लगाते हैं। ये देखें, ये आ गया, ये लेयर आ गई, ये लेयर आ गई, और ये लेयर है पेंक्रियास के ऊपर जो लेसर सैक तक जाएगी। लेकिन इसमें आप देखें, इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इस पेशेंट में काफी लैक सी मीजो है, और इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। बाजू का आप दो बर्न करते हैं और आप लेसर सैक में होते हैं इस जगह पे। और मैं ये पहले पहले भी ये कह रहा था कि ये आईएमवी के लैटरल जाके ना आपको हमेशा बॉर्डर उसका नजर आएगा, आईएमवी लैंडमार्क है। इरफान कबीर का जो है ना पेल्पिटेशन हो रही है इस वक्त। हाँ नहीं नहीं, मैं वही कहने लगा था, इरफान किधर गया है वो, थोड़ी देर में आके कहेगा यार बस करो, हो गया है मोबिलाइज स्टेबलाइज। He's busy, Prof. Yes. अच्छा, वो कह रहे हैं he's in stress. He's at under this point. stress. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम थोड़ी देर में रुक रहे हैं जी, इरफान को कहें कि वो स्ट्रेस ना ले, हम रुक रहे हैं। ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर का एरिया है, ये प्लेन है, ठीक है, मतलब जॉन ऊपर रहना है, नीचे ना आना, ठीक है। वापस आओ बेटा, गॉज दिखाओ। सो ये गॉज अब मैं इधर रखूंगा ताकि ये दो काम करेगा, एक तो स्मॉल बॉल को इस तरफ रखेगा, और इसको होपफुली आइडिया देगा जब ये लैटरली खास कर आएगा तो पेंक्रियास का बॉर्डर किधर है, ठीक है। थोड़ा सा ना मुझे This गॉज is को, a very good approach to if you want to do left adrenalectomy. यस यस, You know, exactly the same approach, mediolateral, you lift the mesocolon, go under the pancreas, and you can deal with the left adrenals. छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, ठीक है, थैंक यू सो मच। लो इरफान में आ जाओ। आमिर भाई इजाजत है आपकी, अगर तो मैं डिस्क्राइब हो जाऊं। आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ क्या जी, आ जाए आ जाए। आ जाए हम, ताकि चाय पी लें, हमें पता चलेगा। इधर दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ। अब ये एरिया है यहाँ पे इरफान, अब ये चूंकि मोबिलाइज हो गया है सब कुछ, देखो अब आसान हो गया, ठीक है। ये एंगल है, इसकी शेप को फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया ऐसे, फिर ये ऐसे जेंटली ना, इधर नहीं जाना, ये स्प्लीन के पीछे ले जाएगा,
ये एंगल है यहाँ पे, हुक से बेशक सेपरेट कर लेना, लेकिन ये वाली लाइन है। और ये जब जस्ट एंगल रिलीज कर दो, काफी ज्यादा कोलॉन है, कोलॉन इसकी बहुत ज्यादा है। डोंट कम वेरी सेंट्रल ऑन टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, ठीक है, लाइक दिस। और ये किडनी है, ये किडनी है, ये वाइट लाइन है। और ये देखो, इसको मैं ऐसे यूज करता हूँ कि आपने नोज को ऐसे से किया, विगल विगल विगल, दिस, ठीक हो गया ये देखो अब ये लाइन है दोबारा। अब ये 1 2 एंड देन यू लिफ्ट इट ऑफ द फ्लोर। ये देखो गॉज ने आपको बताया हुआ है कि पैंक्रियाज के लेटरल बॉर्डर किधर होगा, ठीक है, विगल विगल विगल, लाइक दिस, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो बस सेफ जो तरीका होगा उससे ही करना, कोई ज्यादा वो नहीं है हमें, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बाउल अंडरनीथ इट, लेकिन हमें इसको नीचे लाना जरूरी है ताकि आपका एनास्टोमोसिस करते वक्त ये ना हो कि यार टेंशन में है ये एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये प्लेन हो गया। ये आपके पास हेल्प है ना इधर? ये इट्स ओके इफ आई गो, या मैं रुकूं? मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू शोड, वेरी वेरी नाइस। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये बिल्कुल ना बेटा, ये एक लेयर को दूसरे से सेपरेट करना है और रिम को फॉलो करना है। अभी देखो, जब भी आप कोई चीज नॉन एनाटॉमिकल करोगे तो वो ऊज करेगी, उसको उधर ही स्टॉप करो। ये शेप है, दिस इज द शेप ऑफ द कोलॉन व्हिच इज गोइंग अप एंड यू गोना फॉलो इट लाइक दिस, सी, लेयर बाय लेयर, फिर ऊपर गए पैरेलल। और ये किडनी है, ये लेटरल साइड ऑफ द किडनी है। यहाँ जाएंगे तो ये बहुत मतलब जो है ना कि आप गलत तरफ जा, बच्चों बच्चों वापस आओ सारा, इधर से ऐसे इसको ना उठाना है ऊपर। देखे क्या मेरे, ऐसे नहीं है, ऊपर, ठीक है ना, ऑफ द फ्लोर, सो ये ऑफ द रिस्क एरिया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, फिर करो, ये आप लोग ही करो, यू आर डूइंग इट बेटर देन मी। सारा इधर दिखाओ बेटा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आप दे डोंट दे, यू कैन, हमें उस वक्त बुला लेना जब एनास्टोमोसिस करना होगा। जो आपको लगता है, अगर लेंथ ठीक है तो साइड टू एंड कर दो, अगर बिल्कुल इतना है और इस स्पेस नहीं होगी एंड टू एंड कर देंगे। बाज़ औक़ात मेल में ना बहुत ज्यादा बल्कि ये मीजोकोलॉन हो ना, तो और साइड टू एंड करते वक्त जगह इतनी नहीं रहती, तो एंड टू एंड इज ओनली वे टू डू इट। लेकिन देख लेते हैं, फीमेल में मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं साइड टू एंड करूँ, क्योंकि उनमें स्फिंक्टर छोटा होता है। अमजद, देखो वो स्प्लीन है जी। जी आमिर भाई, इसमें इसमें अभी ये साइड वापस आओ स्प्लिट बेटा फ्रैक्चर डाउन करने के बाद जी। किस लेवल पे आप उसको, जी आईएमए के लेवल पे ट्रांजैक्ट करेंगे, जो डिवीजन ऑफ कन्वीनियंस है वो सो व्हाट जस्ट। अबाउट द वेन, डू यू हैव जी टू जी, डू इट रिपीट इट? अगेन, यस, ही वुड बी डूइंग इट अगेन। उसको वो दोबारा उस क्लिप करना जी पड़ेगा? जी, हाँ। उसके क्लिप करेगा दोबारा ताकि वो उसको निकाल, उसको डिवीजन ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं, एज वी नो। अच्छा अभी इधर आओ बेटा, ये आपका एंगल है इरफान, ठीक हो गया। ये परे जा रहा है, उस वो स्प्लीन है, उसको भी नजर रखना, सैली भी पास ही है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। ये देखें, और जब भी आप रिलीज करते हो ना एनाटॉमिकली, यू गेट अ रिलीज। अच्छा ये देखो, ये देख रहे हो, ये आओ बेटा, ये दिखाओ, पास आओ। ये कैप्सूल बाजू का ना अटैच होता है इसके ऊपर, और वह पुल करते हो तो रिप हो जाता है, लेकिन ये नहीं है, ये फ्री है। ठीक है, वापस आओ, जस्ट टू चेक दिस। ठीक हो गया इरफान? यू गुड, यू हैप्पी? ओके चलो जी, जान छोड़े। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you so much, Prof. नो नो We वरीज are एट ऑल। आप waiting हमें चाय downstairs पिला। for you. Ji, we are waiting here. The audience are eager to meet you here downstairs.